Good morning, Honorable Minister, policymakers, strategic thinkers, economists, public intellectuals, and our viewers joining us on stage here at the venue and across the NDTV network. Welcome to NDTV Ignite, the Future India Summit. हर देश के इतिहास में एक ऐसा पड़ाव आता है जहां आज के बड़े फैसले आने वाले कई पीढ़ियों का भविष्य तय करते हैं। आज जब हम मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने का सफ़र देख रहे हैं तो हम सिर्फ बीते एक दशक का हिसाब नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हम उस मजबूत बुनियाद को देख रहे हैं जो आने वाले 50 सालों के विकसित भारत की इमारत खड़ी कर रही है। पिछले 12 वर्षों की नीतिगत निरंतरता या पॉलिसी कंटिन्यूटी ने देश की सोच, रफ्तार और गवर्नेंस के मॉडल को बुनियादी तौर पर बदला है। इस समिट का मकसद ये समझना है कि कैसे सुशासन का ये नया ब्लूप्रिंट अगले आधी सदी के लिए भारत को एक आत्मनिर्भर महाशक्ति बनाने का रास्ता तैयार कर चुका है। Over the course of today, we're going to dive deep into high-impact conversations that map out this multi-decade trajectory across 3 core pillars. First, the architecture of delivery, where we examine the economic and bureaucratic mechanics under the hood, from grassroots marvels like Har Ghar Jal to our multi-trillion-dollar macroeconomic roadmaps. Second, the democratic and narrative shift, how our public discourse has fundamentally transformed, how the country's highest honors have evolved into the People's Padma, and how Nari Shakti is driving actual development. And third, brand India on the global stage, where we decode our expanding global footprint. आज के हमारे खास मेहमानों को मंच पर आमंत्रित करने से पहले मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने इस भव्य आयोजन को संभव बनाया है। NDTV Ignite, the Future India Summit is co-presented by FDC Electrol, co-powered by JK Tyre, Paramount Wires and Cables, Swasti India and CoinSwitch, state partners Government of Haryana, Government of Madhya Pradesh and Government of Uttarakhand, associate partner Gujarat Mineral Development Corporation Limited, impact partners Adani Green Energy Limited and Adani Ports and Logistics, special partners Jaipur International Airport and Guwahati International Airport. तो चलिए बिना किसी देरी के आज की चर्चाओं की शुरुआत करते हैं। हमारे पहले सेशन में हम बात करेंगे ब्रांड इंडिया के वैश्विक ताकत की, यानी सांस्कृतिक पूंजी। मंच पर पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को, और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा के लिए उनके साथ मौजूद है मेरे सहयोगी विकास भदौरिया। आप तो कहीं भी देखिए कैच कर तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सेशन की। एनडीटीवी इग्नाइट में आपका स्वागत है। हमारे साथ देश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। सवालों के सिलसिले को शुरू करेंगे। 12 साल रहे और ऐसी सूरत में पीछे झांक कर देखना ज़रूरी है कि पिछले एक दशक में हमने क्या पाया और क्या खोया। तो शुरुआत करते हैं गजेंद्र सिंह जी सवालों की। पहला सवाल, चूँकि आप संस्कृति मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, आज भारत के लोग जड़ों की तरफ लौट रहे हैं, अपने कल्चर को री इन्वेंट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लगातार लोग पुरानी व्यवस्था को अपना रहे हैं, न केवल खान पान में, रहन सहन में, बोलचाल में। हमने देखा कि लगातार लोगों के बीच अपने पुराने कल्चर को अडॉप्ट करने की हुक जो है वो बढ़ती जा रही है। इसमें आप एक चीज़ बताइए, ये बदलाव आ किस लिए रहा है, क्यों आ रहा है ये बदलाव, क्या स्टडी कहती है? धन्यवाद विकास जी, और धन्यवाद एनडीटीवी का कि मुझे अवसर प्रदान किया इस महत्वपूर्ण जंक्चर पर, जब हमारा देश उस मुकाम पर आकर के खड़ा हो गया है कि आज जो हम फैसले लेने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, जो काम कर रहे हैं, ये भविष्य के भारत की बुनियाद रखने वाले हैं। 2014 से लेकर के 2026 तक की 12 साल की ये यात्रा, 2014 में देश
उस समय की परिस्थितियां एक बार याद करिए। आतंकवादी घटनाएं, नक्सलवाद के दिन दुगने होते हुए प्रहार, रोज छपते हुए घोटालों के समाचार, भारत की कमजोर होती हुई अर्थव्यवस्था, फ्रेजाइल 5 में इंक्लूड हुई भारत की इकोनॉमी, इन सब के चलते हुए सामान्य मानवी जो है एक विकल्प की तलाश कर रहा था और उसको लगता था कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है इस पर विश्वास कहीं डगमगा रहा है। तब देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया, उन पर विश्वास किया, भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर भरोसा किया। आज 12 साल बाद में मैं गर्व से एक बात कह सकता हूं कि भारत पर, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जो लोगों का विश्वास डगमगा रहा था वो वापस पुनः स्थापित हुआ है। जब किसी देश में कहीं समृद्धि आती है, देश आगे बढ़ रहा होता है, देश के लोगों का भरोसा देश में होता है, तब देश के लोग देश की मान्यताओं को, देश की व्यवस्थाओं को, देश के इतिहास पर गर्व करना प्रारंभ करते हैं। मैं थोड़ा सा को पीछे ले जाना चाहता हूं। देखिए 2000 साल तक भारत पर आक्रमण हुए। हूण आए, कुषाण आए, खान आए, खलीफा आए, अरब आए, भारत पर आक्रमण करने के लिए गुलाम आए, लोधी आए, बाद में जो है अरब आए, उसके बाद में पठान आए और में मुगल आए, मुगलों के बाद में डच आए, फ्रांसीसी आए, ब्रिटिशर्स आए। दुनिया का इतिहास उठा करके देख लीजिए, इतने सारे इन्वेजन के बाद में कोई सभ्यता बची नहीं। ये भारत की सभ्यता अदम्य जिजीविषा के साथ में 10,000 से भी ज्यादा सालों से निरंतर प्रवाहमान रही। इतने आंकड़ों के बावजूद भी मिटाने की इतनी कोशिशें, तलवारों की ताकत पर, बंदूकों की ताकत पर, तोपों की ताकत पर और बाद में बौद्धिक प्रदूषण की ताकत पर, जो अंग्रेजों ने किया, लेकिन फिर भी खड़ी रही क्योंकि हमको अपनी संस्कृति पर गर्व था। बच्चों को पालने में सिखाया जाता था कि इस संस्कृति के और संस्कृति के मानदंडों के लिए, मैं तो राजस्थान से आता हूँ, हमारे यहाँ कहावत होती है, पूत इला न देनी आपनी हालरिए हुलराए, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। मतलब अपनी धरती और संस्कारों को नहीं देना, ये पूत को, बच्चे को पालने में झुलाती हुई माँ सिखाती थी कि इन सब के लिए मर मिट जाना श्रेष्ठ है। ये भारत की संस्कृति ऐसी संस्कृति थी कि 18 साल का बच्चा युद्ध में जब आक्रांताओं से लड़ते हुए काम आ जाता था, उसकी देह घर आती थी ना, तो माँ रोती नहीं थी, वो छोटे बेटे को दिखाती थी, तेरे को भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। ये गर्व का भाव जो भारत के प्रति था, भारत के इतिहास के प्रति, भारत की संस्कृति के प्रति था, वो धीरे 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 धूमिल हो गया, सुनियोजित धूमिल कर दिया गया और आजादी के बाद में भी उसको पुनर्स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं हुआ। आज जब भारत की बदलती हुई छवि, क्योंकि भारत का युवा, भारत का बच्चा जब ये देखता था हमारा देश गंदगी से हटा हुआ है, हमारा देश अस्वच्छ देश है, हमारे देश में 4 करोड़ लोगों के पास में घर नहीं है, घर लाखों हजारों लोगों के पास में, हजारों गांवों तक बिजली नहीं है, 4 करोड़ लोगों के पास में बिजली नहीं है, 12 करोड़ लोगों के पास में जो है शौचालय की सुविधा नहीं है, देश की 62% आबादी के पास में, 84% आबादी के पास पीने का पानी नहीं जाता। ऐसी परिस्थिति में देश को देखता था तो उसको ओन नहीं करता था, उसको कहीं दूसरी जगह आशा की किरण दुनिया के दूसरे देश में दिखाई देती थी, दूसरी संस्कृति में। आप लौटेंगे इस पर, आपके मंत्रालय के और सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं। इन 12 सालों में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मुताबिक 12 ऐसे फैसले केंद्र सरकार के जिसने आम आदमी के जीवन में बदलाव लाया। देखिए, सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने की जितनी योजनाएं थी, मैं उनकी बात करूंगा तो लंबा होगा। मैं एक विषय आपके सामने रखता हूं जो उन सारे इन 12 फैसलों की जड़ जो है। पहला, कि भारत में गवर्निंग मॉडल माननीय प्रधानमंत्री जी ने चेंज किया। देश में योजनाएं पहले भी बनती थी, लेकिन उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के समय में जो दृष्टि होती थी वो होती थी वोट बैंक की राजनीति। इस जगह से वोट मिला इसलिए यहां करना है। सेलेक्टिव डेवलपमेंट और इलेक्टिव डेवलपमेंट का काम होता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार इस देश में सैचुरेशन की बात की कि जो कोई भी योजना हाथ में लेंगे, चाहे गरीब का घर बनाना हो, चाहे शौचालय बनाना हो, चाहे गैस का चूल्हा देना हो, हर पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। न राजनीतिक के आधार पर भेदभाव, न वोटों की गिनती के आधार पर भेदभाव, पहुंचना चाहिए, उस पर काम हुआ। दूसरा,
जो भी कुछ फैसला लेंगे उस फैसले को माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं उसके केंद्र में गरीब को रख करके देखेंगे, तब हम देश का भला कर पाएंगे। ये एक परिवर्तनकारी हुआ। और तीसरा विषय कि राष्ट्र के हित के साथ में कभी कहीं समझौता नहीं करेंगे। और चौथा विषय कि हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में काम करेंगे। अब अगर पिछले 12 साल में जो कुछ भी हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाएं बनी, उनको धरातल पर उतारा, उनके चलते 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, इस मूल मंत्र के आधार पर देश के हित में, देश के हितों के साथ में समझौता किए बिना फैसला लेंगे, कड़े फैसले करेंगे, बड़े फैसले लेंगे, जीएसटी का कानून लेंगे, चाहे डिमोनेटाइजेशन करेंगे, उस दृष्टिकोण से उसको केंद्र में रखते हुए करेंगे। उसका प्रभाव आज पूरे देश में दिखाई देता है। देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए सभी तरह के फ्रंट्स पर एक साथ काम करेंगे। आज चाहे वो पीएलआई स्कीम से लेकर के देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने से लेकर के देश में स्वदेशी का भाव जागृत करने से लेकर के देश में जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का इंडिजिनाइजेशन करने से लेकर के उन सब पे काम करेंगे, उसका प्रभाव देश को दिखाई देता है। इसलिए इन सारे विषयों को लेकर के जिस तरह से काम हुआ, जो परिणाम आपको दिखता है उसका केंद्र अगर कहीं है तो इन 3 विषयों में। ठीक है, 3 दायरों में आपने बांट दिया। गरीब केंद्र है, देश की सुरक्षा केंद्र और अर्थव्यवस्था की मजबूती केंद्र है। आपसे एक सवाल लेते हैं, आपके पास पर्यटन मंत्रालय है। कोविड के बाद जो विदेशी टूरिस्ट थे, जो कि बड़ी विदेशी मुद्रा लेकर आते थे देश में, उनकी संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की गई थी। अभी क्या स्थिति है? क्या सरकार उस स्तर को हासिल कर पाई है? और उसके अगर नहीं कर पाई है तो फिर किस तरह से बढ़ावा मिलेगा? देखिए, टूरिज्म ऐसा सेक्टर है जो कोई भी तरह की विपरीत परिस्थिति आए, चाहे वो मानव जनित आपदा हो, चाहे युद्ध के कारण से हो, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा हो, पहली कैजुअलिटी टूरिज्म सेक्टर की होती है। सबसे बाद में सबसे लास्ट रिवाइवल होता है। स्वाभाविक था, उस समय पूरी दुनिया अपनी जान बचाने के लिए लगी थी, इसलिए टूरिज्म सेक्टर बुरी तरह से पूरी दुनिया में हिट हुआ। लेकिन भारत उन देशों में से एक है, गिने चुने देशों में से, जिसने सबसे तेजी से अर्थव्यवस्था का रिवाइवल किया। वी शेप रिकवरी हुई और टूरिज्म की रिकवरी भी सबसे तेजी से हुई। आज हमने प्री कोविड बेंचमार्क जो 2019 का जिसको मानते हैं, लगभग उसके पास में हम पहुंच गए। लेकिन अमेरिका ईरान का युद्ध भड़का तो क्या उसका असर भी टूरिज्म पर आया? मैं अपनी बात पूरी करूं, इसका भी उत्तर दूंगा। लेकिन क्योंकि पिछले 12 वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी के साथ में बढ़ी, हमारी अर्थव्यवस्था का साइज दुगना हो गया, पर कैपिटा इनकम बढ़ी, गरीब कल्याण की जिन योजनाओं का हमने जिक्र किया उसके कारण से 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल गए। सरकार ने टैक्स में जिस तरह से राहत दी, सरकार ने महंगाई को जिस तरह से 12 साल तक काबू करके रखा, उसके चलते हुए देश में मध्यम वर्ग के जेब में डिस्पेंसेबल इनकम बढ़ी। तो भारत जो है उसमें डोमेस्टिक ट्रैवल एक्सपोनेंशियली बढ़ा। पिछले 1 वर्ष में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या, डोमेस्टिक ट्रैवल ट्रिप्स, अगर ट्रैवल ट्रिप करता हूं तो आप में या हम कोई घर से बाहर निकलें किसी भी पर्पज़ के लिए, लीजर हो सकता है, सोशल हो सकता है, वेडिंग हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, कोई भी कारण के लिए हम घर से बाहर गए, 1 दिन तक घर से बाहर कहीं निवास किया, होटल में रुके और वापस लौटे। 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 3 दिन हो सकता है, बाहर लौटे। वो ट्रिप्स की संख्या जो है वो 300 करोड़ है। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि 300 करोड़ लोगों ने ट्रैवल किया, और इस 300 करोड़ में जो है वो कुंभ के 66 करोड़ सम्मिलित नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से भारत में ट्रैवल और टूरिज्म बहुत तेज गति के साथ में आगे बढ़ा है। आपने ईरान अमेरिका, ईरान इजराइल युद्ध की बात की। मैंने पहले भी कहा कि कोई भी युद्ध होता है उसका प्रभाव होता ही है। पूरी दुनिया के टूरिज्म पे ईरान और जो ये वेस्ट एशिया क्राइसिस है इसका प्रभाव भी होगा, रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है उसका प्रभाव भी होगा, एनर्जी क्राइसिस का प्रभाव भी होगा। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि भारत उन सौभाग्यशाली देशों में से एक है जिसकी डोमेस्टिक ट्रैवल एंड टूरिज्म की इतनी बड़ी ताकत है कि हमारी इंडस्ट्री पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मतलब विदेशी पर्यटक आए ना आए, देसी पर्यटक इतना बड़ी तादाद में ट्रैवल कर रहा है कि उसका असर आपकी इंडस्ट्री पे नहीं के बराबर है। बिल्कुल, मैं फिर कहूँगा आपको,
हमारी टोटल टूरिज्म की जो नंबर ऑफ टूरिस्ट ट्रैवल्स इन इंडिया, हालांकि आंकड़ों की जब बात करते हैं कोई कहता है कि थाईलैंड में ज़्यादा नंबर आते हैं, दुबई में ज़्यादा आते हैं। मैं उनको कहता हूं कि जो थाईलैंड में आते हैं वो थाईलैंड में दो रात रुकते हैं, 6 दिन निकल जाते हैं। दुबई में आते हैं वो वीकेंड ट्रैवलर होता है। भारत में जो ट्रैवलर विदेश से आता है वो कम से कम 10 दिन रुकता है, एवरेज स्टेज मिनिमम 10 डेज है। हमारे यहाँ आते 2 करोड़ लोग होंगे लेकिन 10 दिन रुकते हैं, 20 करोड़ नाइट्स हमको मिलती हैं। उनके यहाँ 4 करोड़ आते हैं, 3 दिन रुकते हैं, 12 करोड़ नाइट्स मिलती हैं। हम इसको और बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस 2 करोड़ के सामने भारत में 300 करोड़ भारतीय ट्रैवल कर रहे हैं। और कुछ हद तक मैं मानूंगा कि भारत के डोमेस्टिक ट्रैवल पोटेंशियल के इस गति के साथ में एक साथ उछाल आने के चलते हुए हमारा हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर दबाव में आ गया। हमारे पास नंबर ऑफ रूम्स जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम है। हालांकि उसके लिए भारत सरकार ने इंसेंटिव्स दिए हैं, राज्य सरकारों में इंसेंटिव देने की लगभग होड़ मची है, और बहुत तेज गति के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल के रूम्स, कन्वेंशन सेंटर्स, ये सब बन रहे हैं। लेकिन आज उसके कारण से जो दबाव है, उसकी कॉस्ट बढ़ी है, उसने कुछ हद तक बजट क्लास विदेशी टूरिस्ट के भारत में आने पर थोड़ा बाधा उत्पन्न की। मैंने देखा आपने स्काई डाइविंग की थी, एडवेंचर स्पोर्ट्स में आप काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, यह भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में है। क्या भारत में वो पोटेंशियल है कि वो वर्ल्ड हब बन जाए एडवेंचर स्पोर्ट्स का? देखिए, भारत में पहले पूर्ववर्ती काल में जो है, आपसे पहले, आज से अगर मैं 8-10 साल पहले की बात करूं, भारत में टूरिज्म का मतलब मनी टूरिज्म था। अभी क्योंकि कोविड के बाद में जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया पूरी दुनिया का बदल गया, भारतीयों का भी बदल गया। हम भी अपने अगर समाज में, परिवार में देखें, हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता जिस तरह से सोचते थे, हमारे बच्चे उस तरह से नहीं सोचते। पहले होता था पैसा बचाना है, जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लेना है, और जो है पैसा है तो भी कम खर्च करना है। अभी आजकल के बच्चों का, आजकल की जनरेशन का वो स्वभाव नहीं है। दे आर लुकिंग फॉर मोर एंड मोर एक्सपीरियंसेस, नए एक्सपीरियंस चाहिए। सो अब हमने एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रैवल कैसे बने। भारत पे उसमें सब की क्षमता है। बाहर जाए, स्कीइंग हो सकती है करके, पैराग्लाइडिंग से लेकर के और कयाकिंग तक सब तरह की सुविधा है। भारत में जंगल बेस्ड टूरिज्म, एग्रीकल्चर बेस्ड टूरिज्म, नेचर बेस्ड टूरिज्म, वाटर बेस्ड टूरिज्म, जो है कोस्टल टूरिज्म, और उसके अलावा कल्चर बेस्ड टूरिज्म, क्यूजीन बेस्ड एक्सपीरियंस टूरिज्म, ये सब भारत के में विविधता के साथ में, प्रचुरता के साथ में मौजूद है। इसलिए नए एक्सपीरियंस बेस्ड टूरिज्म के साथ साथ में इस तरह के एडवेंचर बेस्ड टूरिज्म पर भी हमने काम करना शुरू किया है। आपने देखा, जब 2 साल पहले हमने भारत में पहली बार स्काई डाइविंग फैसिलिटी नारनौल में शुरू किया, आज उज्जैन में हो रही है, गोवा पे उस पर काम हो रहा है, देश के अनेक स्थानों पे उस पर काम हो रहा है। इसके अतिरिक्त भी एडवेंचर बेस्ड टूरिज्म के डिफरेंट डेस्टिनेशन भारत में डेवलप हो रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से देश में 50 नए ग्लोबल स्टैंडर्ड के आइकॉनिक डेस्टिनेशंस बनाने की प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी। इतना हम विदेशों में देखते हैं कि उतना एग्रेसिव कैंपेन नहीं है भारत की इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन का। अभी भी जो छवि है भारत की, वो सांप सपेरों के देश की, गंदगी से भरपूर देश की है। इस एग्रेसिव कैंपेन चलाने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा विदेशी पर्यटक आए। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि भारत की छवि आज भी ऐसी है। मुझे क्योंकि पिछले 30 साल में भारत से बाहर दुनिया के बहुत सारे देशों में जाने का सौभाग्य मिला। इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने से पहले भी दुनिया के बहुत सारे देशों में काम करने का सौभाग्य मिला। पहले निश्चित रूप से ऐसी छवि थी, किसी आदमी को यदि आप यूरोप में, अमेरिका में चौराहे पे खड़े होकर के आपसे आप किसी से पूछें, या कोई जो है विदेशी आदमी किसी से पूछता था कि हुलिये को देख करके कि आप कौन से देश के हैं, तो भारतीय आदमी सामान्य थे, अपने आप को भारतीय बताने में संकोच करता था। ही यूज्ड टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज एन एशियन। फिर कोई दोबारा पूछ लेता था तो कहता था हाँ, आई एम एन इंडियन, लेकिन वो संकोच के साथ में बताता था। और अगर ऐसा उत्तर कोई देता था तो सामान्यतया सामने बैठा हुआ या पूछने वाला व्यक्ति उसको कहता था, ओ इंडिया, मिस्टर गांधी। भारत गांधी जी तक अटका हुआ था। लेकिन आज अगर कोई व्यक्ति दुनिया के किसी चौक पे, चौराहे पे खड़ा होकर के आपको पूछे, किसी भारतीय दिखने वाले व्यक्ति को पूछे कि आप कौन से देश से हैं, तो वो सम्मान के साथ में कहता है आई एम एन इंडियन। और जब वो इंडियन कहता है सब, तब सामने वाले के मुंह पे जो है मुस्कुराहट दिखती है, उसकी बत्ती सी दिखती है, और वो कहता है ओ मिस्टर मोदी, बिकॉज इंडिया की छवि बदली है, ट्रांसफॉर्मिंग।
जीवन की हर विधा में प्रगति करता हुआ दिखाई देता है। ऐसा देश भारत की ये दावा तो आप कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था डोल रही है, देश की अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमी है और युवा सड़कों पर उतरने वाला है। सरकार की पिछले 12 साल की नीतियों ने युवाओं को खाली हाथ कर दिया है, खाली जेब कर दिया है, रोजगार विहीन कर दिया। देखिए, राहुल गांधी कौन सी अर्थव्यवस्था की स्कूल में पढ़े मुझे पता नहीं। अभी जब पिछला डावोस हुआ था, डावोस पे जब समिट ऑफ इकोनॉमी हुई थी, उसमें पूरी दुनिया के इकोनॉमी के विशेषज्ञों ने चीख चीख कर कहा कि पूरी दुनिया जब ग्लोबल रिसेशन के दौर से गुजर रही है, उस समय कोई एक देश जो है वो लाइट हाउस की तरह अपनी उसकी इकोनॉमी है, वो भारत की है। दुनिया में इतने दबाव, इतने सारे युद्ध, इतने सारे सेंसर्स अमेरिका के लगाए जाने के बावजूद भी भारत एकमात्र ऐसा देश है जो पिछले 5 साल से दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। पिछले क्वार्टर में इन सारे चैलेंजर और एडवर्सिटीज के होते हुए भी हम अपनी ग्रोथ रेट को बनाए रखने में कामयाब हैं। शायद राहुल गांधी जी की इकोनॉमिक स्कूल में, उनकी किताब में नहीं आया होगा ये। हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ा है, हमारा एक्सपोर्ट पिछले क्वार्टर में बढ़ा है। पिछले क्वार्टर रेलेवेंट क्वार्टर के तुलना में जब वेस्ट एशिया क्राइसिस नहीं थी और अमेरिका के जो है वो सेंसर्स नहीं थे, उसके बावजूद भी। लेकिन राहुल गांधी पिछले 6 महीने से ज्यादा से सरकार को बार बार आगाह कर रहे हैं और पिछले महीने प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि भाई सोना मत खरीदो, विदेशी मुद्रा बचानी है, पेट्रोल कम खर्च करो क्योंकि विदेशी मुद्रा बचानी है। देखिए, राहुल गांधी जी ने 2024 के चुनाव से पहले एक शगुफा छेड़ा, एक फॉल्स नैरेटिव उन्होंने और उनके इकोसिस्टम ने मिलकर के बनाया था कि संविधान बदल जाएगा। उसका कुछ लाभ हो गया। मुझे लगता है कि एक बार किसी बच्चे को चॉकलेट मिल जाए, कुछ करने से, आंसू बहाने से या जो है अपना रोनी सूरत दिखाने से अगर मिल जाए या कुछ झूठ फैट बात करने से अगर मिल जाए, तो वो बार बार उसी तरह की कोशिश करता है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी वैसा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बच्चे कह रहे हैं हमें चॉकलेट नहीं चाहिए, लेकिन उससे आगे ऐसा एग्जाम दे दीजिए जिसका पेपर लीक ना हो। लेकिन उससे आगे की बात मैं करता हूं कि पिछले वर्षों में जिस तरह से रोजगार की क्षमता भारत में बढ़ी, नए रोजगारों का सृजन हुआ, भारत में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बढ़ी, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बढ़ी, भारत में जो है मुद्रा के तहत करोड़ों युवाओं ने स्वरोजगारी बनकर के काम करना शुरू किया, भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम नए सिरे से खड़ा हो गया, भारत में स्टैंड अप के तहत करोड़ों लोगों ने नया रोजगार प्राप्त कर लिया। शायद मुझे लगता है राहुल गांधी जी को दिखता नहीं। भारत सरकार की नौकरियों के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो भी भारत सरकार में जहां सामान्यतया 40 लाख पदों में से 12, 15, 13 लाख पद खाली रहते थे, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग हर महीने ड्राइव चला करके 60, 70, 80 हजार लोगों को नौकरी दी जा रही है। राहुल गांधी जी को दिखता नहीं है। लेकिन पेपर लीक हो रहे हैं, ये आपको नहीं दिख रहा है? जहां तक पेपर लीक का प्रश्न है, मैं मानता हूं कि कहीं कोई छोटी चूक किसी का तकनीकी कारण से रही, उसको दुरुस्त करने के लिए सरकार ने तेजी के साथ में उस पर निर्णय भी लिया, काम भी किया। लेकिन राहुल गांधी जी के पास में मॉरल राइट नहीं है, क्योंकि जब उनकी सरकार थी, राजस्थान के, मैं तो आता हूं वहां से बात करता हूं, 5 साल में 19 पेपर लीक हुए थे और उनके मुख्यमंत्री जो उनके प्रिय हैं राहुल गांधी जी के, वो ये कहते थे कि पेपर लीक की अगर कोई बात करता है तो वो राज्य का और राष्ट्र का विरोधी है। और बाद में अनेक लोग उसके बाद में जेल जाते हुए दिखे थे। इसलिए मैं ये कहूंगा कि केवल टिप्पणियां करना ऐसा नहीं है, सिस्टम में सुधार करना, कंटिन्यूअस इवॉल्व करना, उस पर सरकार सिस्टम में सुधार की बात कॉकरोच जनता पार्टी भी कर रही है। युवा सड़कों पर आने लगे हैं, जंतर मंतर पर उन्होंने प्रदर्शन किया, पुणे में प्रदर्शन किया, लखनऊ और जयपुर में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी एक आदमी जो है जर्मनी में बैठ करके, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए आदमी, अमेरिका में बैठे हुए आदमी को कहो कि ऑस्ट्रेलिया वाले से बात करो, हम मिलकर के तीनों जो है देश में किस तरह से युवाओं की बात कर सकते हैं, और उनके पीछे जो लोग खड़े होते हैं वो किस किस पृष्ठभूमि के होते हैं, वो खुद किस पृष्ठभूमि के होते हैं, एक बार पहले उसको देखना चाहिए। और देखती है राजा, देश की जनता और देश का युवा समझता है, देश के युवा का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भरोसा है, तब जंतर मंतर पे या जब इकट्ठे होते हैं तब उसका हश्र क्या होता है, कितने लोग और कितने विरोधाभास होते हैं, हम सब ने देखा है। इसलिए ये जो है, ये नैरेटिव खड़े करने की जिस तरह की कोशिशें हो रही है, ये इस ट्रांजिशन का, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, उसका हिस्सा है। आप कह रहे हैं ईमानदार प्रयास नहीं है, विदेशी फंडेड हैं ये प्रयास, और नैरेटिव
सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। 100% सरकार के खिलाफ नैरेटिव खड़े करने के लिए दूषित प्रदूषित मानसिकता से विदेशी ऐसी इंस्टीट्यूट्स के संसाधनों का उपयोग करके ऐसे छद्म भारत विरोधी देश, इस तरह के भारत विरोधी मानसिकता के लोग इस तरह के नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरीज की बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी का एक भाषण हुआ, सरकार की तमाम नाकामियां गिनवाई और ये सब गिनवाते हुए उन्होंने कहा कि मोदी ने देश को मरवा दिया। मुझे लगता है कि ये ऐसा विषय है जिस पर देश के 140 करोड़ लोगों से अगर बात की जाए तो देश के आम जनता, एक दिन मैं कहूंगा कि एनडीटीवी को एक सर्वे करना चाहिए, आम व्यक्ति को रोक करके पूछेंगे कि आप मनमोहन सिंह जी के या यूपीए के 10 साल बनाम एनडीए के 10 साल, दोनों की तुलना करेंगे, किसको कितने नंबर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब एनडीए का फ्रस्ट्रेशन, यूपीए का फ्रस्ट्रेशन, राहुल गांधी जी का फ्रस्ट्रेशन, चुनाव दर चुनाव, हार दर हार, सिमटते 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 अब जब हाशिए पे आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि अपने महामंत्रियों के साथ में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए की सरकार को कोसने के अलावा उनके पास बचा क्या? हार जीत तो चुनाव का हिस्सा है, लेकिन आप देश के विपक्ष के नेता को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते। उनको उनकी पार्टी गंभीरता से लेती है? कितने लोग उनकी पार्टी में गंभीरता से लेते हैं? प्रश्न मेरे सामने ये है। चलिए, अब आप सवाल पूछ रहे थे पश्चिम बंगाल से। आपकी बहुत बड़ी विजय हुई, पहली बार बीजेपी ने अपनी वहाँ सरकार बनाई। अब टीएमसी कह रही है कि आपने सरकार बना ली, आप पुलिस के दम पर, केंद्र सरकार के दम पर पार्टी तोड़ रहे हैं, टीएमसी के सांसदों को तोड़ रहे हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ आप साजिश रच रहे हैं। जिस पार्टी ने और जिस नेता ने 10 साल तक 15 साल तक केवल और केवल पुलिस और प्रशासन से भय, भूख और भ्रष्टाचार की राजनीति की हो, उसको मुझे लगता है इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपके दर्शकों करोड़ों लोग देख रहे होंगे, उन सबके सामने ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। जिस बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2/3 से ज्यादा बहुमत का आशीर्वाद देकर के नवाजा हो, उसको सामने वाली पार्टी को तोड़ने की और तुरंत तोड़ने की आवश्यकता क्या होगी? जो खुद ही टूट गए। देखिए, बंगाल का पॉलिटिकल हिस्ट्री उठा करके देखिए। जब बंगाल में सिद्धार्थ शंकर रे साहब की सरकार गई थी, उसके बाद में कम्युनिस्टों की सरकार आई थी, सीपीएम की सरकार जाने के बाद में कांग्रेस कहां बची थी? जब सीपीएम की सरकार आई गई 2011 पड़ रही है, 35 साल बाद में 2011 में सीपीएम की सरकार गई। आरक्षण बिल आपको फिर से पास कराना है ताकि जल्दी से जल्दी लागू हो जाए, परिसीमन लागू हो जाए। 2011 में जब सीपीएम की सरकार गई और ममता बनर्जी जी की सरकार आई, उसके बाद में सीपीएम कहां और कितनी बची थी? ये बंगाल का जो ट्रेंड है। अब जो लोग केवल उस सत्ता की ताकत के आधार पर उस पार्टी के साथ में जुड़े थे, जीते थे, खड़े हुए थे, और उस समय की पार्टी में जिस तरह की का आतंक का माहौल विद इन टीएमसी था, क्योंकि मैं तो 2015 से लगातार पश्चिम बंगाल में काम कर रहा था, हर चुनाव में भी गया, उसके अतिरिक्त भी अनेक बार जाकर के मुझे संगठन की बात करने का अवसर मिला, वहाँ के लोगों से बात करने का अवसर मिला, यहाँ संसद में भी उनके सांसदों से भी अनौपचारिक बातचीत करने का अवसर मिला, और मैं देखता भी था साइकोलॉजी पढ़ाई का स्टूडेंट होने के नाते, जिस तरह का आतंक का माहौल वहाँ भाईपों के आतंक के चलते हुए, उसके डोमिनेंस के चलते हुए था। अब वो उस आतंक से जब मुक्ति हुई है ना, तब लोग स्वर उठा रहे हैं, तब लोग बाग आजाद होकर के सांस ले रहे हैं, तब लोग बात कर रहे हैं, तब वो टूट करके भागना चाहते हैं। कर दिया है, सांसद उनके कोलकाता नहीं जा पा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो अंडे फेंके जा रहे हैं, पार्षदों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, तो बीजेपी अलग कैसे हुई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कर रहे हैं, यह आम जनता का प्रतिकार है। जिस तरह से कटमनी ली जाती थी, जिस तरह से लूटा जाता था, साहब आप अगर कलकत्ता शहर में रहते होंगे, आसनसोल में रहते होंगे, हावड़ा में रहते होंगे, आप अपने घर की पुताई नहीं करवा सकते थे, आपको टीएमसी के क्लब वाले को पैसा देना पड़ता था, तब जाके आप अपने घर को पुताई करा सकते। घर में पाइप लीक हो गया था तो आप वाशर ठीक नहीं करा सकते थे, आपको उसको पैसा देना पड़ता था। के शासनकाल में नहीं होगा, कमेटियां काम नहीं करेंगी, नहीं होगा। जनता ने इस दर्द को 15 साल तक भुगता, पिछले 10 साल तक उत्पीड़न को सहा। अब जब जनता उन सारे लोगों को जो पुलिस की ताकत के आधार पर उत्पीड़न करते थे, साहब आवाज उठाने वाले के घर पे गांजा 50 ग्राम गांजा रख करके जेल भेज दिया जाता था जी।
आवाज उठाने वाले की लड़की को उठा करके सरेआम गुंड दरिंदे उसके साथ में जो है बलात्कार करते थे, पुलिस केस रजिस्टर नहीं करती थी। मैं तो देखा है, मैं भारत सरकार का मंत्री होने के नाते भी थाने में जाने के बाद में थाने वाले सुनवाई नहीं करते थे, दरवाजा नहीं खोलते थे। चलिए, आपकी बातों पर हम भरोसा रखेंगे और भरोसा करिएगा और वहाँ की हकीकत को जानिएगा। आने वाले समय में किस तरह से पश्चिम बंगाल में बदलाव आता है। 12 साल मोदी सरकार के पूरे हुए हैं। गजेंद्र सिंह जी, आपने एनडीटीवी के लिए वक्त निकाला, एनडीटीवी इग्नाइट के लिए आपने वक्त निकाला। जो बातें आपने कही हैं उसको आने वाले समय में हम उसको जरूर टेस्ट करेंगे और जनता को हम बताएंगे कि जो गजेंद्र सिंह जी ने यहाँ पर वायदे किए हैं वो जमीन पर उतरे हैं कि नहीं उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं अंत में इतनी सी बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यह है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी का संकल्प यह है कि जो कहा है वो करेंगे, तय समय में करेंगे, समय से पहले करेंगे। ये संस्कृति भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र सिंह जी। अगला सेशन आप कहीं मत जाइएगा, एनडीटीवी इग्नाइट पर सीआर पाटिल होंगे, देश के जल शक्ति मंत्री। A round of applause, ladies and gentlemen, for Union Minister of Culture and Tourism, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, and to my colleague Vikas for that wonderful conversation. चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले सेशन की तरफ, जो सीधे तौर पर देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग से जुड़ा है। जब हम विकास के अगले 50 सालों की बात करते हैं तो पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत सबसे ऊपर आती है। हर घर जल अभियान को लेकर पिछले वर्षों में काफ़ी चर्चा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ज़मीनी स्तर पर ये काम अब तक कहाँ तक पहुँचा है और आने वाले दशकों में देश के हर कोने तक पानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे और कितना आगे जाना होगा। इसी पर बात करने के लिए मंच पर अब आमंत्रित हैं माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल जी, और उनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। तो आज जो यह खास कार्यक्रम हो रहा है, मोदी सरकार के 12 वर्ष पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल जी हैं। पाटिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर और इस मंच पर। अगर हम 2019 से पहले की बात करें पाटिल साहब, तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सुबह उठते समय सबसे पहले इस बात की चिंता सताती थी कि घर में पानी कहाँ से आएगा, घर में जल कहाँ से आएगा। सुबह उठते तलाश होती थी जल की, आसपास की कुएं, बावड़ी, हैंडपम्प, वहाँ जाना, वहाँ से दूरी तय करना, फिर वहाँ से सिर पर मटके में या किसी अन्य बर्तन में पानी घर पर लेकर के आना, और उसके बाद दिनचर्या शुरू होती थी। लेकिन 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा कि हर घर में जल लाया जाएगा। वो जो मिशन था, शुरू होने से पहले हम जानते हैं कि 17% घरों में ही पानी आता था। आज ये आंकड़ा बढ़कर के जब से ये हर घर जल शुरू हुआ है, करीब 80% से ऊपर आंकड़ा पहुंच गया है। लेकिन सिर्फ इसी की बात नहीं है, चाहे नमामि गंगे का कार्यक्रम हो, चाहे दूसरे हो, स्वच्छ भारत का कार्यक्रम हो, ऐसा लगता है कि जो जल क्षेत्र है वो प्रायोरिटी में आया है पिछले एक दशक में। ये एक बड़ा बदलाव है। किस तरह से इस बदलाव को आप लोगों ने मुमकिन किया है? नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प किया है, और अगर महिलाओं को पानी के लिए दूर दराज तक जाना पड़े तो विकसित भारत संभव ही नहीं है। और इसीलिए 2019 में जब ये नल से जल घर तक पहुंचाने की जो योजना बनी, उस टाइम करीब 3 करोड़ लोगों के घरों में पानी था, और वो भी अपने सोच से उन्होंने अपने खर्च से बनाया हुआ था। आज 16 करोड़ घरों में पानी पहुंचा है, 3 करोड़ घरों में और पानी देना है। दिसंबर 2028 तक ये काम भी पूरा करना है।
पहले के जो काम में भी अगर कुछ कमियां है, कोई सोर्स कम पड़ गया है तो वो काम भी पूरा करना है। और इसीलिए हमने हर गांव में सोर्स से लेकर पाइप, पाइप से लेकर टंकी, टंकी से लेकर घर तक जो पानी जाता है कहने उसका ऑब्जर्वेशन शुरू किया है। गांव में जल अर्पण के कार्यक्रम करते हैं। 15 दिन तक जब तक कॉन्ट्रैक्टर पानी वहाँ सप्लाई नहीं देगा तब तक उसको पेमेंट देते नहीं है। और इस तरह पूरा दबाव बनाते हुए क्वालिटी काम हो, क्वांटिटी में पानी मिले, अच्छी क्वालिटी का मिले, उसके लिए पूरा प्लानिंग माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के निर्देश से हो रहा है। और मुझे विश्वास है कि जो संकल्प पीएम साहब ने किया है कि हर घर में नल से जल होना चाहिए। जो महिला 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए दूर तक जाती थी, 5.5 करोड़ घंटे उनको पानी लेने जाने में लगते थे, आज उनका जो समय बचा है वो अपने बच्चों के लिए, अपने आर्थिक उपार्जन के लिए वो यूज़ कर सकती है। पानी की क्वालिटी अच्छे आने के कारण उनके घरों में जो बीमारियां होती थी वो भी बंद हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को जो विश्वास है अपनी योजनाओं पे, तो पानी दिया मगर ये पानी ठीक है नहीं उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए 25 लाख महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी है और उसको किट भी दिया है कि उनके घर में आने वाला पानी वो खुद चेक करें। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिनको जो मिलता था वो पानी लाते थे, उसको अच्छी क्वालिटी का पानी घर में मिल रहा है। तो जो हर घर जल योजना है या जल जीवन मिशन है, ये सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं कि घर तक पानी पहुंचे। हमने देखा है कि इसमें पानी की सफाई भी हो, पानी की उपलब्धता बढ़े, ये भी है। और इसी के साथ जो वर्षा जल है उसके संचयन के लिए भी आपका मंत्रालय एक बड़े पैमाने पर योजना उसने शुरू की। वो कहाँ तक पहुंची है जल संचयन की अगर हम बात करें तो? हमारे मंत्रालय में नमामि गंगे का जो कार्यक्रम है योजना के द्वारा, पहले तो गंगा सफाई का या बाकी नदियों का भी साफ करने का काम चल रहा है। 211 एसटीपी बनाकर नर्मदा गंगा में जो पानी है उसको स्वच्छ बनाने की कोशिश चल रही है। उसमें नया कचरा न डाला जाए उसके लिए गांव को भी जागृत करने की कोशिश, उसको भी एजुकेट करने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। मगर जो पानी है हमारे यहाँ देश में 4000 BCM बारिश होती है, हमारी आवश्यकता होती है 1120 BCM की। 2047 तक हमारी आवश्यकता होगी 1180 BCM की। आज हमारे पास जो जल संचय करने की जो कैपेसिटी है वो 6500 डैम होने के बावजूद नदी नाले सब मिलाकर 750 BCM की ही हमारी जल संचय की क्षमता है। और बाकी जो पानी हम दोहन करते हैं ज़मीन में से, हम चाइना और यूएस से जितना पानी हो वो लोग दोहन करते हैं, उससे भी डबल से ज़्यादा पानी हम ज़मीन में से निकाल लेते हैं। तो ऐसे समय में ज़मीन में पानी डालना चाहिए है। ये बात को लेकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जल संचय, जन भागीदारी को जन आंदोलन में परिवर्तित करने के लिए 6 सितंबर 2024 को आह्वान किया था। और उस आह्वान के कारण और उसके साथ में कहा था कि कर्मभूमि से मातृभूमि के लिए लोगों ने सहयोग करना चाहिए। आज मैं कह सकता हूं कि हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर का, हमने 27,50,000 स्ट्रक्चर बना पाए थे। दूसरा टारगेट लिया था हमने 1 करोड़ का, 31 मई 2026 तक हम 1,55,00,000 स्ट्रक्चर बना पाए हैं। इसकी विशेषता क्या है? इसकी पहली विशेषता है कि इसमें से सिर्फ 10 लाख स्ट्रक्चर सरकार के पैसे से मनरेगा में से बने हैं, बाकी सभी स्ट्रक्चर लोगों ने अपने पैसे से, CSR से या अपना पैसा लगाकर किए हैं। जो कर्मभूमि से मातृभूमि की बात की है तो राजस्थान के लोग जो सूरत में व्यापारी है उन्होंने 40,000 स्ट्रक्चर राजस्थान में बनाए, 35,000 स्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में बनाए और बिहार के 10 जिले में सब गांव में 4-4 स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो लोगों में जागृति आई है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के इस आह्वान को उन्होंने स्वीकारा है, उसके ऊपर काम किया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहले 27,50,000 स्ट्रक्चर जब बने थे वहाँ तक हमारा 2.4 BCM बारिश का पानी हम ज़मीन में उतार पाए थे। आज हम जब 1,55,00,000 पर पहुँचे हैं, 6 गुना, तो हमें लगता है कि इस बारिश के बाद हम करीब 12 BCM पानी इसके संग्रह करेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो जो बड़ी बड़ी नदियों पर डैम बनना था वो बन गया है। अगर हम डैम बनाते हैं तो उसको 25 साल लगते हैं और 25 करोड़ से ज़्यादा खर्च होता है। तो इतना समय है क्या हमारे पास? और इसीलिए जब डैम भी बनता है, कैनाल बनेगी तो जो अगल बगल में जो किसान होते हैं उनको फ़ायदा होता है। दूर दराज तक गांव में या किसानों को पानी नहीं मिलता है। ये जल संचय की योजना के कारण गांव में जो जल होता है, यानी बारिश का पानी निकलता है खड्डे में, खड्डे से नाले में, नाले से नदी में और नदी से दरिया में जाता है,
उसको खड्डे में ही बोर करके उसको ज़मीन में उतार देते हैं, तो जो कुएं या बोर उनके मौजूद हैं उसके अंदर पानी का लेवल ऊपर आ जाता है, पानी की क्वालिटी सुधर जाती है। खेतों में भी हम छोटी डिज़ाइन 4x4x6 का गड्ढा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं। 1 बीघा में एक स्ट्रक्चर बनाने से जिसकी कीमत होती है 5,000, वो बनाने से कम 4 से 5 लाख लीटर पानी बारिश में ज़मीन में उतर जाता है। अगर 5 एकड़ खेत है तो 5 स्ट्रक्चर बनाने चाहिए। गांव में जो स्ट्रक्चर बनाते हैं बोर करके उसमें करीब 25,000 का खर्च होता है, मगर लोग आगे आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि कच्छ में एक भूखी नदी है, उसमें पानी नहीं है। कच्छ के एक दामजी एंकर स्वीट जो बनाते हैं वो बॉम्बे भेजे अभी, उन्होंने आकर वहाँ पर 50 करोड़ रुपया लगाकर और नदी को पुनः जीवित करने की कोशिश शुरू की है और बहुत सा काम उन्होंने कर भी दिया है। तो एक व्यक्ति अपने वतन के लिए 50 करोड़ खुद खर्च कर रहा है अपने सोच से, ये अपने आप में बड़ी बात है। जीटो वालों ने जो जैन समाज का एक संस्था है उन्होंने 100 करोड़ रुपया खर्च करने का तय किया है, 25 करोड़ रुपया उन्होंने राजस्थान में खर्च भी कर दिया है। तो लोग जागरूक हो गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो हाकल है वो लोग मानने लगे कि आवश्यक है और उसके ऊपर बहुत बड़ा काम हो रहा है। जो जल जीवन मिशन है उसमें कई सारी बातें सामने आती हैं। आपने कहा कि 80% से अधिक घरों में जल पहुंच चुका है, लेकिन क्या सभी राज्यों में 100% का लक्ष्य पूरा होगा? कब तक हो पाएगा? कितने राज्यों ने लक्ष्य पूरा कर लिया है? और दूसरी बात ये भी कि जो कई राज्यों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें आई थी इस जल जीवन मिशन को लेकर के, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने खुद संज्ञान इस बात का लिया था, उसकी स्थिति क्या है? आपको लगता है कि ये इस कारण से इस मिशन की जो लक्ष्य था उस पर थोड़ा असर पड़ा है? जल जीवन मिशन के द्वारा जो हम गांव में या घर तक पानी पहुंचाने की कोशिश करते हैं उसका इम्प्लीमेंट वो स्टेट को करना होता है। पानी का सब्जेक्ट स्टेट का है। केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 70 साल से यानी 70 साल से जो अभी तक पानी नहीं गया था, इसके लिए इस योजना को आगे बढ़ाया। 50% पैसा केंद्र से दिया, 50% स्टेट ने दिया। उन्होंने DPR बनाया, उन्होंने टेंडरिंग किया, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और कंप्लेंट बहुत आई जब हमें लोकसभा में पूछा जाता था कि नल से जल है, नल है जल नहीं है, तो गाली जैसा लगता था। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इसको बहुत सीरियसली लिया। पूरे देश में अलग अलग टीम बना के उसका सर्वे करवाया, इंस्पेक्शन करवाया। 17,000 लोगों जो कंप्लेंट आई थी उसके ऊपर एक्शन लिया गया। करीब 400 अधिकारी उसके अंदर सस्पेंड किए गए या जेल में गए। एक कांग्रेस के मंत्री भी राजस्थान के, वो भी जेल में गए, अभी भी शायद वो जेल में ही हैं। तो इस तरह जिसने गड़बड़ की थी उन सबके ऊपर एक्शन लिया गया है। और हमने कहा ना कि जल अर्पण, घर तक पानी पहुंचेगा पूरे गांव में, गांव सर्टिफाइड करेगा वीडियो और फोटोग्राफ्स के साथ, वो सबमिट करेगा, उसके बाद ही उसको पेमेंट होगा। हमारे पास अभी भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 1.51 लाख करोड़ रुपया दिया है, 1.5 लाख करोड़ रुपया। उसमें से इस साल हमें 67,000 करोड़ रुपया यूज़ करना है। आपको आश्चर्य होगा कि अभी तक हम सिर्फ 2500 करोड़ रुपया ही खर्च कर पाए हैं, क्योंकि हमने इतनी सख्ताई बरती है जो माननीय मोदी साहब के जो निर्देश है उसके अनुसार कि पानी तो जाना ही चाहिए, उसी के लिए योजना है और हम उसके ऊपर पूरा चौकसाई करते हुए काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि पानी जरूर जाएगा, अच्छी क्वालिटी का जाएगा, पूरी क्वांटिटी का जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। पर कहीं ऐसा तो नहीं है पाटिल साहब की इतनी सख्ती हो जाए कि फिर फंड ही रिलीज ना हो, काम ही रुक जाए, जो लक्ष्य आपका है 2028 तक का वो पूरा ना हो पाए? देखिए, हमें खर्च भी करना है। हम परसों ही मीटिंग के अंदर हमने हमारे अधिकारियों को अलग अलग टीम बनाकर जहाँ पर काम रुका है वहाँ पर खुद वापस जाके कितना काम हुआ उसके बारे में सोचें। उनको अभी तक जो पैसा मिला है उन्होंने उतना काम कॉन्ट्रैक्टर ने किया कि नहीं वो भी वो सर्वे करेंगे। अगर नहीं किया है तो उसको ब्लैकलिस्ट करने की भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अगर वो पैसा लेके बैठ गया और काम नहीं कर रहा है तो वो तो नहीं होगा। और वो ब्लैकलिस्ट करेगा तो हम नए कॉन्ट्रैक्टर को भी काम देंगे, उसको भी काम आगे बढ़ा सकते हैं। काम समय के पहले पूरा करेंगे, क्वालिटी के साथ करेंगे। कुछ ऐसा तो नहीं कि जो विपक्ष के शासन वाले राज्य वहाँ पर गति धीमी हो? नहीं, हर जगह पे काम हो रहा है और जहाँ पर भी काम नहीं हो रहा है वहाँ उसको हम पुश कर रहे हैं। वहाँ कांग्रेस और भाजपा हम नहीं देखते हैं, हम तो हर घर में पानी जाना चाहिए उसके लिए योजनाओं को ऑब्जर्वेशन करके कर रहे हैं। सभी मुख्यमंत्री वो कांग्रेस के हो या भाजपा के हो, सबके साथ बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी जो हमने MOU की है माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के कैबिनेट में, हमने 19 मुद्दे के ऊपर एक MOU करके सभी CM के साथ हम 90 दिन में
हम उनके साथ एमओयू करेंगे, ऐसा कमिटमेंट किया था। परसों तक हमारे 34 में से 33 स्टेट में एमओयू हो गया। सिर्फ जम्मू कश्मीर के सीएम के साथ होना बाकी रह गया। बाकी सभी सीएम के साथ हमने एमओयू कर लिए। एमओयू की कंडीशन जो है वो सबने पढ़ ली है, क्योंकि वो सीएम के भी ध्यान में होने चाहिए, इसीलिए उनके वर्चुअल उपस्थिति के बिना भी हमने नहीं किया है। तो मुझे लगता है वो गंभीरता उनमें भी आ गई है। एक दूसरा मुद्दा है यमुना की सफाई का। विधानसभा चुनाव जब दिल्ली में हुए थे तब बीजेपी ने ये वादा किया था कि हम यमुना को स्वच्छ करेंगे। अभी क्या स्थिति है? क्या आपको लगता है कि यमुना का पानी इतना साफ हो जाएगा कि लोग नहाने के लिए, पीने के लिए इस्तेमाल कर सकें? ये भारतीय जनता पार्टी का तो प्रॉमिस ही है, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने दिल्ली वालों को ये प्रॉमिस किया हुआ है कि हम यमुना को साफ कर देंगे। और माननीय मोदी साहब भी इसके ऊपर पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब भी करीब हर 20 दिन 25 दिन में मीटिंग कर रहे हैं। उसके अंदर काम बांटा गया है, हमारे मंत्रालय का है, मुख्यमंत्री दिल्ली और उनकी सरकार, और हरियाणा के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार, उनके द्वारा क्या क्या काम करना है। हमारे पास भी उसमें से 45 काम थे हमारे जिम्मे में। हमने 43 कामों के ऊपर काम शुरू कर दिया है। हम भी समय के पहले वो काम कर देंगे। और माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब ने तो सभी को निर्देश दिए हुए हैं कि 2028 जनवरी तक में ये काम पूरा करना है। तो जिस तरह से दबाव बना है, जिस तरह से काम में गति पाई है, टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, तो मुझे लगता है कि हम वो काम पूरा कर लेंगे। नहीं, नदी का पानी नहाने जैसा, नहा के पीने जैसा जरूर हो जाएगा। कब तक? कहा ना 2028 जनवरी तक करने का पूरा टारगेट लेके चल रहे हैं। जनवरी 2028 तक नहाने लायक, और पीने लायक कब तक हो जाएगा? नहीं, पीने लायक भी कुछ ही दिनों में हो जाएगा। उसके साथ साथ एक दूसरा मुद्दा है पाटिल साहब, जब पहलगाम हमला हुआ था तो भारत ने सिंधु जल संधि उसको अबेंस में रखा। उसके बाद ये कोशिश की जा रही कि जो पानी बहकर पाकिस्तान जाता था उसका उपयोग भारत में, भारत के नागरिकों के लिए हो पाए। इस काम में कहाँ तक अभी हमें सफलता मिली है? और जो रिपोर्ट्स लगातार बार बार आती हैं, पाकिस्तान कहता है कि ये अगर आप पानी रोकेंगे तो ये इंसानियत के खिलाफ है, वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाने की बात कहते हैं, तो इसको भारत कैसे डील करेगा? मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है उस टाइम में जिसने जो किया होगा, कि जो ट्वीट हुई थी वही ट्वीट मुझे लगता है कि गलत तरीके से ट्वीटी हुई थी। हमारे गुजरात में एक कहावत है कि बच्चे भूखे हैं, मैं हिंदी में उसको कन्वर्ट करता हूँ, तो बच्चे भूखे हैं और कोई साधु आता है मांगने के लिए, उसको आटा देते हैं, यानी उपाध्याय को आटा। तो बच्चों को भूखा रख के कोई किसी को आटा देता है क्या? तो हमारे देश में कई राज्यों में पानी की किल्लत है और हम पड़ोसी को पानी दे देंगे और हमारे यहाँ ये प्यासे रह जाएंगे, तो बनेगा नहीं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो निर्णय किया है कि जो टीटी को उन्होंने एवेंस में रख दिया है, बहुत सही निर्णय है। और उसका जो पानी है उसको पहले हमने डिसल्टिंग करते हुए पानी को जो रोकने की क्षमता बढ़ाने की कोशिश की है। पानी को शिफ्ट करके जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, ये सबको उसमें से पानी मिलेगा। उसमें से यमुना में भी पानी आएगा, जो पानी शुद्ध करने में भी उसकी बहुत आवश्यकता है। और मैं आपको इससे ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, मगर ज़रूर कहूँगा कि उसके ऊपर भी हम पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब भी पूरा उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उनके निर्देश आते रहते हैं। और श्री अमित भाई शाह साहब के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है वो भी इसके ऊपर अच्छे से काम कर रहे हैं। जल्दी से उसका काम आगे बढ़े और पानी मिले, उसका काम हो रहा है। तो जो पाकिस्तान की दलील है वो ये कहता है कि ये तो इंसानियत के खिलाफ है और वो ऐसा नहीं होने देंगे, पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी तो हथियार के तौर पे इसका उपयोग किया ही नहीं है। ये तो हमारा पानी हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए वो पहली प्रायोरिटी है। हमारे पास सरप्लस होगा तो ही हम और किसी को दे सकते हैं। और यहाँ तो हमारे यहाँ प्यास है, जब तक हम प्यास हमारी पूरी नहीं होगी, जब तक तो हम पानी किसी को देंगे नहीं। हमें इंसानियत ना सिखा है पाकिस्तान। पहलगाम का इंसिडेंट्स उनको याद करना चाहिए, उनके आतंकवादी प्रवृत्ति को उनको याद करना चाहिए। आज का वो विषय नहीं है, मगर मैं इतना जरूर कहूँगा कि इंसानियत की बात उनके मुंह में शोभा नहीं देती है। अभी जो मानसून है उसकी क्या स्थिति है पाटिल साहब? क्या आपके मंत्रालय के लिए ये चुनौती रहेगी कि जिस तरह की भविष्यवाणियाँ की जा रही कि इस बार बारिश पर असर पड़ सकता है, खासतौर से अल नीनो के चलते, उसके लिए क्या तैयारियाँ हैं?
देखिए, हमारे मंत्रालय में तो पानी कम हो या ज़्यादा, दोनों में हमारी तो समस्या होती है उसको हल करना। और अल नीनो के कारण जो भी व्यवस्था करनी चाहिए उसके लिए भी गृह मंत्रालय में माननीय श्री अमित भाई शाह साहब पूरा उसके ऊपर ऑब्जर्व करें, क्योंकि उनके विषय का भी आ रहे हैं, तो वो भी काम कर रहे हैं, हम भी हमारे जिम्मे जो काम है उसको ऊपर काम ध्यान दे रहे हैं। पहला तो ये आ रहा है कि बारिश कम होने की संभावना है, तो पानी की कमी कहाँ होगी, उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी परिस्थिति आएगी उसको संभालने की पूरी कोशिश हो रही है, और मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि माननीय मोदी साहब के अध्यक्षता में और श्री अमित भाई शाह साहब के मार्गदर्शन में वो जो अभी उसको हेड कर रहे हैं, तो ज़रूर उसके ऊपर अच्छा काम होगा। अगर ये आफत आएगी भी तो भी हम उसमें से बिल्कुल देश को सही सलामत निकाल पाएंगे। कुछ प्रश्न आपसे मोदी जी के बारे में कर लेते हैं। आप उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो बहुत लंबे समय से उनके साथ काम करते हुए आए हैं, काफ़ी लंबे सफ़र आपने उनको देखा है, तमाम तरह के उतार चढ़ाव में आप उनके साथ रहे हैं। अब जबकि वो देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं, इस साल अक्टूबर में उनको 25 वर्ष हो जाएंगे जन सेवा करते हुए, किसी पद पर रहते हुए, तो ऐसे में आप क्या देखते हैं, उनकी इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे और उससे क्या क्या आप लोगों ने सीखा है? संगठन में वो माहिर है और इसी का उपयोग करते हुए वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आपने कहा कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, नेहरू जी का, उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़ते आए हैं। मनमोहन जी का रिकॉर्ड तोड़ा, इंदिरा जी का तोड़ा, फिर नेहरू जी का तोड़ा, और ये जो रिकॉर्ड बनाएंगे वो उसके बाद कभी कोई नहीं तोड़ेगा, ये भी मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ। अच्छा, दूसरी बात जो उसकी विशेषता है आपको देखना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह जी या जो भी प्रधानमंत्री बने उनको किसी ने बनाया है। वो ये पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने डंके की चोट पर कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, और पार्टी बना नहीं सकती थी क्योंकि पार्टी के पास तो सिर्फ 115 मेंबर्स थे। उनको जब जवाबदारी दिया तो उन्होंने पूरे देश में घूमकर पार्टी के नाम पर अपनी योग्यता के ऊपर गुजरात मॉडल को आके करते हुए जो प्रवास किया, तो पूरे देश के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब पर विश्वास किया और वो पार्टी के साथ सब लोग जुड़े, और उसके कारण पहले 115 से सब सीधे हम 283 पर पहुंचे। तो ये पहले प्रधानमंत्री भी है कि जिन्होंने डंके की चोट पर कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं और बने। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्या सीखा आप लोगों ने उनसे? हमने सीखा है कि कोई भी काम समय पे करना चाहिए, क्वालिटी के साथ करना चाहिए, लोगों के साथ जुट के रहना चाहिए, ज़मीन पर रहो, लोगों की चिंता करो, लोगों की छोटी छोटी जो तकलीफ है उसको प्रायोरिटी देते हुए उसके ऊपर काम करना चाहिए, उनके साथ संपर्क रखना चाहिए, जिससे पता चले कि वो क्या चाहते हैं। और कई बार ऐसा कहते हैं कि आप लोगों को अगर किसी को कुछ चाहिए, उसको खाना चाहिए या उसको मिठाई खानी है, और आप उसको कोई दूसरी चीज़ दे दोगे जो वो भी अच्छी चीज़ है, या मिठाई में कोई एक चीज़ खाना है उसको और आप दूसरी मिठाई दे दोगे तो भी वो खा लेगा, वो संतोष नहीं होगा। संतोष जब ही होगा जब उसको जो चाहिए वो आप उसको दोगे, और इसीलिए वो कहते हैं कि जो लोगों को जो चाहिए वो देने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे जो आपने एक विशेषता, मैं तो 25 साल में उनकी विशेषता ही देखता हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड तो बनते रहेंगे और भी बनने वाले हैं, मगर 25 साल जो पहले मुख्यमंत्री रहे गुजरात में और अभी प्रधानमंत्री रहे, दोनों समय में उनके समय में न पानी, रोड, लाइट, गटर, किसी के भी लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ। देश में भी हमें चाहिए उसके लिए कोई आंदोलन करना पड़े ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं हुआ। तो ये पहले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है कि जिनके समय में उन्होंने लोगों की जो अपेक्षा है उसको पहले ही पूरी कर दी, तो एक भी आंदोलन नहीं हुआ। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात उनके कार्य समय में हुई है, और हम उसको देखते हैं, उनके पास से समझने की कोशिश करके उसके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। एक आखिरी प्रश्न पाटिल साहब, क्या 2029 में भी आप उनकी अगुवाई में काम करेंगे, फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब
2029 में भी इलेक्शन लड़ेंगे, फिर से सरकार बनाएंगे और जो देश के आवश्यकता के काम, जो महत्वपूर्ण काम बाकी है, जो हो गए, वो उसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। और जो बाकी है, जो उनके संकल्प है, वो जरूर सब पूरा कर देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पाटिल साहब इस चर्चा के लिए। थैंक यू। शुक्रिया माननीय मंत्री जी और अखिलेश इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। A round of applause, ladies and gentlemen, for Minister of Jal Shakti, Shri C.R. Patil, who is now leaving our summit. Okay. पानी और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों से आगे बढ़ते हुए, it is time for our first political debate of the day. When we audit the 12-year trajectory of the Modi government, the transformation hasn't just been about physical infrastructure or economic balance sheets. There has been a profound shift in our public discourse in the very vocabulary, priorities, and boundaries of Indian politics. So has this past decade successfully locked in a definitive, non-negotiable development agenda for the next 50 years? Or has the nature of our public discourse fragmented away from the real indicators of progress? To debate this, I'd like to invite on stage Amitabh Dubey, spokesperson for the Congress Party, and Shehzad Poonawala, spokesperson for the BJP. They will be in conversation with my colleague Vasudha Venugopal. A round of applause, ladies and gentlemen. I'm just taking the table, not him. Well, 12 years ago, when Prime Minister Modi took charge as the head of the country, he promised a transformed India. In fact, a lot has changed in this country, but has performance matched the promise that was made? That's what we are here to discuss. Amitabh Dubey of the Congress Party, Shehzad Poonawala of the BJP. I'll start with you, Amitabh. You know, I saw the press conference that the Congress Party did. In fact, he was one of those people who brought out that 75-page pamphlet, and you said, this is propaganda versus hisab. But, you know, when the UPA was nearing its term, the end of its term, you know, we heard voices like hubris and policy paralysis. There were people out in the streets protesting. Nothing of that sort is happening right now. So how is the Congress Party looking at 12 years of Modi Sarkar? Well, firstly, I would correct you. I think there are lots of protests going on. There have been lots of protests going on. Most recently with the issue of education. The NSUI and the Youth Congress have been on the streets across the country protesting the alleged corruption that went into the CBSE allocation of the on-screen marking. We've had paper leak after paper leak, 89 paper leaks under this government. 49 exams had to be taken again. And you know what this means for the future of the youth is well understood by everyone. So I think it would be incorrect to say that there has not been widespread protest. We saw the farmers' agitation, which forced the farm laws to be taken back. This has been the case repeatedly. I think the basic fact is that there is some momentum. A country like India with 1.4 billion people will have its own intrinsic momentum across successive governments. So you will have an underlying economic growth, demographic shift. The question is, what do the decisions made by this government produce? And as Warren Buffett said, when the tide goes out, we see who's been swimming naked. And you just look at the economic situation right now. The rupee is in free fall. We have 2.1 lakh crore have left the country, both FDI and investment. India's business community is now all shifted to Dubai, London, Singapore. Their money is now going with them. So this is the reality that we have to deal with, that the government, despite all of its claims, cannot explain how this macro situation has reached here. So this is unfortunately the reality. We have a lot of promise, but whether it's education, whether it's the economy and other areas we can talk about, there is huge disappointment.
Shahzad, Narendra Modi is the most consequential Indian politician that we know so far, and we can say that the Congress party probably has not been able to come up as the only alternative, but what he's saying is also right, and especially on the issue of CBSE, every household has been affected because, every household has a child. It's also aspirational. So you have either the CUET exam leak happening or the NEET UG leak happening, or for that matter, the CBSE entire re-evaluation mess that's underway. So is the government not getting its basics right? First of all, thank you, Vasudha, thank you, NDTV, for having the two of us. Usually, these sessions are organized in the morning so that if the coffee doesn't do the trick, then two fighting spokespersons will. But let me start off by paying a compliment to my worthy opponent. He has been extremely dignified on television, unlike his other co-panelists in his party. And I love to watch him, so I'm glad I'm on this panel with him. Firstly, let me start by saying that thank you. Amitabh, thank you. Because by saying that protests are taking place, he's actually cancelled Rahul Gandhi's democracy is dead jibe. So I guess democracy is not dead. Democracy is alive and kicking. People do protest. The touchstone in a democracy, however, of public sentiment are elections. And unfortunately there, Amitabh, except for Kerala, I think you've been found wanting, because people of this country, right from the Gen Z to millennials to the boomers, all of them support Prime Minister Modi's vision. And while Prime Minister completes a record of being the longest serving elected Prime Minister in this country, let me congratulate Rahul ji for being the longest serving unelected, unelectable leader of opposition in this country. I think he deserves a round of applause for that. Okay, let me... But having said that, now let me come to the brass tacks of some of the points. Let's talk about FDI, because he comes from the research wing. Let's talk about specifics. 2004 to 14, Manmohan Singh, $300 billion of FDI attracted. 2014 to 26, under Chaiwala OBC Prime Minister Narendra Modi, $700 billion of FDI attracted. PLI scheme started, more than 2 lakh crores of investment have come in that. He talks about economy and the macroeconomic situation. Today we've been the fastest growing large economy in the world for a substantial period of time. Just now we've recorded 7.7% growth and 7.8% in the last quarter. By the way, this is at a time that 3 world crisis and our inflation average has been about 4.5%, whereas their time the inflation was about 10 to 12%. The foreign exchange reserves at that time was $200 billion. Today it's at a comfortable $690 billion. The current account deficit was 4%. Today it's at the range of 1%. So even on the economic platform, for the first time, public sector banks have recorded a profit of 1 lakh crore. These are hard facts. You can't deny them. And what has changed in the last 12 years? Let's get to the larger point. There has been a fundamental shift that I call as Ram and Gita. Now, before secularists get offended, let me tell you. Our template of working has changed. Ram and Gita means what? R for Rashtriya Suraksha. First, Pakistan did terror strikes after terror strikes. We used to give them most favored nation. Today, we have a Rashtriya Suraksha paranormal which says, Ghar mein ghus ke marenge. A for Arthvyavastha. Today, our economy is growing at the fastest rate, bigger than any other large economy. We are fastest. M for Mahila Suraksha and Mahila Sashaktikaran. Right from women's reservation, which we are trying for, to Beti Bachao, all of these things, toilets in houses, tap water connections, all of them have improved women's situation. Then we go for Gita, G, Garib Kalyan, 25 crore people pulled out of poverty. I for infrastructure, doubling the rates of highways, expressways, 5 metros in 5 cities, today it's in 20 cities, airports doubled. And T for technology. Coming to infrastructure, 10 seconds more. Technology, this is the biggest game changer. I remember Chidambaram ji mocking us that we could never make UPI and digital payments possible. Today we are doing the maximum digital transactions in the world. More than all the countries put together, India records more digital transactions, and we've even used digital platforms to deliver public services like COVID app, like COVID vaccine. 200 crore doses were delivered without any kind of failure. And A for Atmanirbharta, defense exports. We used to import our defense goods, scams used to take place. Today we have exported defense goods worth 38,000 crores. Have you ever thought of this? Amitabh, in the Congress's criticism, I found one thing interesting. When we Narendra Modi becoming the longest serving Indian Prime Minister, Congress, and also uninterrupted regime and elected. The Congress pamphlet also said, Dil behlane ko galib ye khayal acha hai. That's what, we wanted to say that this is all propaganda. When it comes to infrastructure, that is something we can see and not unsee, because that's something that's making, a difference in everybody's life. What do you have to say on that? So first, let me address what Shahzad said, is that, X number of things are being built more than the previous. Now, in any naturally growing economy,
the number of everything will go up, whether it's digital transactions, whether it's number of roads, there is a natural momentum. So just like after the Vajpayee government, the UPA built more, then the Modi government built more, and the next government is going to build even more. So just to add up numbers at random doesn't tell you anything very much. The question is, who is this growth benefiting? It's well understood now that billionaire Raj today is more unequal than the British Raj. The top 1% own 40% of the assets. They earn 20% plus of the income. Right? The real wages of both salaried workers and self-employed is lower today after inflation than it was in 2017-18. The real wages of agricultural laborers have been declining over this period. So this is what you can have very fancy growth numbers and you can have a very good arithmetic sort of set of facts you present, but who is it benefiting? This is the first thing. The second is on technology. But the government is saying that the welfare net, the safety net is also increased, the right? The fact is that we are forced and ordinary to people are benefiting is what they're saying. Maybe we are not too ordinary to understand that. Is that something that But ordinary we should think people of? obviously aren't benefiting if their real wages are going down over a decade. Now, about technology. The UPA, the digital public infrastructure, let's take that as an example. The UPA created Aadhaar. The UPA created the National Payment Corporation of India, immediate payment system, on top of which UPI was built. This foundation laid the grounds for the digital public infrastructure revolution that happened. Now we come to the next stage. We are now in the age of AI. Where is India in the age of AI? What is the infrastructure that the government of India has invested in? We were supposed to be a software superpower. The number of jobs is obviously under severe pressure. What has this government done to take us there? Why is it that TSMC, which is the largest company in Taiwan, has a higher market valuation than the entire Indian stock market? Let me address Let me just finish. Let him finish. No, let me finish my point. So, just as this government built on the work of the last government, what is the next government going to build on? We are now playing catch-up. One reason our money is exiting this market is because all the AI investment opportunities are outside. So this is a very serious problem. So we can rest on our laurels, but what are we doing for the future? If things were going to happen as due course or as a fait accompli, we had 2 mobile phone manufacturing assembling units in this country in 2014. We imported most of our mobile phones for domestic consumption, because of which we were paying high foreign exchanges for importing electronics. Imagine a country like India. Today we have 300 manufacturing assembling units. The biggest Samsung plant is here. We are manufacturing all American iPhones here, and we are exporting mobile phones worth $10 billion after satisfying our domestic demand. And therefore our valuable foreign exchange is not leaving the country. Why didn't you do it? We had 400 startups. Today we had 2 lakh startups. We had 4 unicorns. Today we have 25 unicorns. These are not your Ambani and Adani. Those 400 startups to 2 lakh startups are people who come from small towns, small villages, making it big in life. The problem is that how do you measure the difference between haves and have-nots? The Gini coefficient is the only big proper way to do it. The Gini coefficient over the last 12 years has bettered. It has come closer to 0, which is the issue of how it is becoming more equal. Are we a completely equal society? Not. But Congress party is suggesting as if first people used to be completely equal and 40-50% of the resources were not in the hands of 10%. The Congress created this system. In fact, today, 12 crore people have toilets. 4.5 crore people have pakka houses. 12 crore people have tap water connection. You have a situation where LPG coverage is now 100%. You are now living in a society which has more equality than we had 12 years ago. This is the fact, but 10 seconds more. He spoke about what we are doing for AI. We had an AI summit. Now we don't have summits because we don't know who will go naked there. They removed their t-shirt and they started protesting, call themselves Mahatma Gandhi. And finally, I'm saying that they just last second, yeah, he spoke quite long. Okay. Amitabh says we laid the foundation of everything. I agree, sir, you laid the foundation for everything. You laid the foundation for UPI, yet Chidambaram came and abused it and ditched it. You laid the foundation for GST, yet you all call it Gabbar Singh tax. Let me ask Mr. Amitabh Dubey. We rolled out GST. We got all states on board. The best model of cooperative federalism. And not only did we do that, GST 2.2 has ensured that the average taxes the people of this country pay has reduced. Now couple that with 2 more things.
Reduction of income tax. First you used to pay income tax at 2 lakhs. Today you pay it at 12 lakhs. Reduction of EMIs. Reduction of the money you spend on, say, medicines or on internet costs. 300 rupees per GB. Today you pay 10 rupees per GB. All of this has improved the life of the middle class, which you will never understand. That's why you lose election. Coming to the AI point, the criticism here is maybe the government doesn't understand the language, but it's not the opposition that's understanding or speaking the language of Gen Z, which is why young people are looking at other options. No, that's absolutely not correct. Firstly, again, he rattled off a number of facts of things that have expanded, but does the middle class feel that their lives have improved? Do the numbers show that their lives have improved? Have the real salaries gone up? No, they have gone down. So this is the reality. We can talk about Gini coefficients, but I think the average person knows where they stand. About Gen Z, the BJP seems to have decided that Gen Z is a bunch of anti-nationals, right? Judging from what they talk about. They insult the youth of this country, they throw all sorts of accusations at them. And the fact is that it is the Congress and Rahul Gandhi, you see his communications, sometimes it's embarrassing for me as a Congress person, but there's a bit of a craze in Gen Z, a section of Gen Z for Rahul Gandhi. They consume the content he's produced, the messaging that he has about where this country has to go. It's very clear, it's there for everyone to see. And to demonize a segment is completely wrong in my opinion. But the fact is Rahul Gandhi not able to focus on that one issue which can unify the country? You know, when the CBSE protests were happening, we probably thought he would be sort of leading those protests. He is. He's absolutely been front and center of this issue. He was in Andamans, right? So, I mean, he was doing, that's also equally important. But there is a sense that the opposition is not able to optimize on, you know, the discontent that prevails in certain sections. So this is a sense that is created by people who think that just because you cover issue A doesn't mean you can't cover equally important issue B. Let me give you the underlying reality. In 2014, we had an election between the UPA and Mr. Modi and the BJP. It was a free and fair election, right? The outcome was accepted by everyone. Since then, has there been any free and fair election in this country? In 2024... You just won Kerala. Congress has won Kerala. Congress is in fact part of the government in Tamil Nadu now. In 2024, just before the election, Rahul Gandhi was disqualified, our bank accounts were closed, there was a Pran Pratishtha that became a personal branding exercise, never mind that Ayodhya was lost. Shehzad, let me just finish very briefly. Then we had Maharashtra and Haryana, which were miraculously won right after defeat through vote chori. Then we had SIR, where lakhs of voters in Bihar and Bengal are cut out, including 27 lakh voters who were entitled to vote in Bengal, who were not allowed to vote. And finally, we now have seat chori, where Meenakshi Natarajan is fraudulently denied the opportunity to win her seat. Now, in this situation, how are we expected to compete on an equal basis with the richest party in Indian history? One important point that he makes is, does the government have the stomach for, criticism? Is the government even listening enough to criticism, feedback, especially constructive criticism? Because this anti-national bit is true. You know, students have been called anti-national, not by the government guys, but people close to the government. I have written 5 points and it's merging with the points you're making. So let me answer each one specifically. I do that only. We have never called anyone anti-national in terms of Gen Z, etc. In fact, you must have seen Dipke and Cockroach Party protested, and he's given a statement that when I landed, I thought I will be arrested, but immediately, because he must have had experience during Congress time, but he said that immediately I was sent there, we were given protest permission till 5 o'clock, we left at 3 o'clock. Now, having said that, you know who has insulted the Gen Z? Alok Sharma of the Congress. 100 प्रोटेस्टर, उसमें से 75 आपिया, उसमें से 3 मोदी के चमचे, उसमें 50 यूट्यूबर, 100 कैमरामैन, 500 पुलिस वाले. ये अन्ना की आईएसी आरएसएस संघी के साथ थी, ये इनके पास तो ये भी नहीं है. This is the official spokesperson. I'm not quoting some random Manishankar Iyer who's no longer in the party. Official spokesperson, boss. We have not said that. Show me one statement officially. Secondly, who votes in Bengal? Gen Z does not vote. Who votes in Jadavpur elections? Who votes in Hyderabad Central University, where nobody expected ABVP to win? We have won. Who voted in Punjab University, Chandigarh University, Dusu? Who's winning those elections? If Gen Z loves Rahul Ji's abs so much, they should vote for him. See, I agree. Rahul Gandhi is Kartik Aaryan of Indian politics. सबको पसंद है, अच्छा दिखता है, स्वीट दिखता है, बॉडी है, सब है. Kartik Aaryan's movies don't work, and Rahul Gandhi's politics don't work. Now let me go to the next point. And Ranbir कौन है आप सब जानते हैं. धुरंधर कौन है Indian politics का. You know who it is. Anyways, point number 3. You'll have to wrap up because I have No, because he spoke so much. Free and fair election. Now, Meenakshi Natarajan के साथ तेलंगाना कांग्रेस 10 खेला,
Digvijay Singh and Kamal Naidoo khela and I am being blamed for it and he says free and fair election nahi hota. To Kerala it is free and fair. SIR was perfect there. And Bengal it is not perfect. This is called chainatmak commitment towards constitution. In the Meenakshi Natarajan case, because that's something that all of us feel about, isn't the Congress party to be blamed for lack of management? And this is something we hear often. Why is the Congress party not being crafty and astute? Because that is expected of the main opposition party in the country. In the Meenakshi Natarajan case, it's very clear that the RO, the officer involved, is violating the law of the land by insisting on... Which law did he violate? Quote the law. Representation of People Act. Quote the section. Yes. Quote the section. You quote it, I don't... You the have fact to is, quote it. no, If no, he's the fact violated, is, quote it. let me finish my point. Come on. We're not on TV, we can have a relaxed discussion Rather, here. because I am getting less time than you Listen, comparatively. she asked me a question. Yes, The I'll come answer to is that. that only a crime where the punishability is more than 2 years and cognizance has been taken has to be reported. Neither applies in this case. So this is an entirely made up rule to deny her right to be elected. Shehzad, capture of institutions, the biggest allegation that comes from the Congress First party. of all, you rescue one institution called Congress from the परिवार of Gandhis. वो खुद कैप्चर करके बैठे हैं. Secondly, I am saying that if all of these things are not happening, then Supreme Court में faith है या Supreme Court भी नहीं है faith. And when Kerala same SIR is done, their MLA Matthew. West Bengal was completely now, sir, different. Now we are not on TV. Okay. Just use your own advice. SIR is praised by MLA Matthew from Congress in Kerala, saying very good. The left fake voters have been cut. In Bengal, SIR becomes bad. In Kerala, election commission is good. In Bengal, it becomes bad. And Meenakshi Natarajan case, why did she not disclose it? The court has sent someone, and who told us? Telangana Congress. Okay, that's Telangana a different Congress story. is I our have to Hamza wrap Mazari. now. Thank you so much, both of you. This is a political milestone, 12 years of Modi, but clearly, Shehzad, you'll agree this is an unfinished story. More has to come. Yes, we are going on till 47. Okay, So thank it you is so unfinished till 47. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you. My God, time flies. Huh? But 2 minutes were there. You stole our 2 minutes. Time to. Okay, that debate certainly livened up proceedings here at the NDTV Ignite the Future India Summit. So let's give Amitabh Dubey and Shehzad Poonawalla another round of applause, please. Thank you so much for being on our panel, and thank you so much, Vasudha, for that. Okay. From the political arena, we move straight into the economic cockpit of the nation. If we're talking about building a foundation that can sustain momentum for the next 50 years, then everything ultimately anchors on economic velocity. The past decade has been marked by massive structural resets, from GST to India's global positioning during its G20 presidency. So, to understand how these internal reforms are translating into India's global rise, please welcome on stage someone who's been at the absolute center of India's economic policy planning, former CEO of the Niti Aayog and India's ex-G20 Sherpa, Shri Amitabh Kant. He will be in conversation with my colleague Vishnu Shom. Well, good afternoon, everybody, and thank you very much for being with us. I've had the opportunity of speaking to Amitabh Kant on several occasions over the years. He's somebody who has really driven the India story. He's been passionate about the India story. He has helmed affairs at the Niti Aayog. He's been involved with government at many levels. But India's growth comes at a time which is particularly challenging. What I'd like to do is talk with Amitabh about the prospects for India, what has been achieved over the last couple of decade plus, and what are some of the challenges. And I think my first question to you now is that we find ourselves in a situation where there is a great deal of volatility in West Asia. The Indian economy is dependent on energy.
we have a partner, the United States, which is creating problems for us, some would suggest. Not our problem, but it's been imposed on us. To what extent does this potentially impact the India growth story? So India's growth in the first quarter of this year has been fairly resilient at 7.7%. Last 2 years we've had growth which is been about in the region of about 7.6 to 7.7%. But energy is going to have a major implication on India if the war continues for a longer period in the next couple of quarters. And this is critical because India imports around 180 billion to 200 billion worth of fossil fuel, and very critical for India to move from energy dependency to energy independence, and to move from fossil fuel to cleaner forms of energy, because you are dependent on fossil fuel, but India is climatically blessed. India's ability to do renewable energy has been proved by the fact that it has done over 270 gigawatt of renewable energy. The target is 500 gigawatt, but India, to my mind, should really push for 1500 gigawatt of renewable energy, should really push for battery storage in a very big way. We've already passed the Shanti bill, so we should push for nuclear as the base load in a very, very substantial manner. And therefore, India should push for a post-industrial society which is driven by cleaner forms of energy, and really push for green hydrogen. Use renewable energy to crack water and produce green hydrogen, and push for green hydrogen in the manufacturing process also. India has massive opportunity on that. Let the rest of the world be dependent on fossil fuel, but India's ability to drive clean energy is enormous because it is climatically blessed. Let's talk about green hydrogen, the big concern, because I think a lot of the safety concerns have been addressed by and large from a technology standpoint. The concern is cost. Will we bring green hydrogen down to a cost which works for the common consumer? The cost used to be $4.50 per kilogram. Recent tenders have demonstrated that the cost has come down to about $3 per kilogram. It's been driven by our oil companies. You need to bring green hydrogen into steel manufacturing, into fertilizer, many other areas. Those tenders should come out. I'm absolutely confident that India has the capacity to bring down the cost of green hydrogen down to $1 per kilogram by 2030. If anyone can do it in this world, it is India which has the capacity to do it, because the cost of renewable is the cheapest in India right now. No other country has the potential. India has the potential to be the cheapest manufacturer of green hydrogen, the lowest cost exporter of green hydrogen, and be the lowest, biggest producer of electrolyzers for the world. The Prime Minister just visited the L&T electrolyzer factory, the massive potential for electrolyzer manufacturing. The transition to EVs, it's picking up, but some would suggest it's not picking up at the pace that we need to meet our clean energy transition. We are still dependent on Chinese technology, certainly battery technology as well. To what extent is this dependence a challenge for our own ambitions in terms of the transition to clean energy? No, you were very right, Vishnu. We should accelerate the pace, and we should really say that the top 15 cities of India will only be driven by electric two-wheelers, three-wheelers in the next 3 years. We should also say that by 2030, all vehicles will go electric, and we should push for e-trucks in a very big way, and say that actually in the next 5 years, all trucks and buses should go electric. And this should be driven by the new CAFE norms, which are held up for over three and a half years by the Department of Energy, by the Ministry of Power. So we should mandate that we'll go electric in a very big way. Did you just say 2030? For the four-wheelers. Four-wheelers. So in 4 years from now, a full transition across India. My view is that in the next 3 years, all two-wheelers, three-wheelers, India has the capacity to do this. And if you don't do this,
lose. You are one of the biggest exporters of automobiles. If you don't do this, the entire global market will be captured by Chinese technology. So you need to do this in the next 3 years for two-wheelers, 3 years, three-wheelers. You need to do it for trucks and buses in the next 5 years by consolidating demand and floating large tenders. And you need to do it by 2030 for car manufacturing. If we do not do this, through both mandating and for cleaning up your cities and improving the quality of air for our citizens of India, you will lose global markets. You will never be able to technologically leapfrog. And India has the potential to leapfrog in this technology. If we are to have a massive jump to the utilization of electric vehicles, we must also have a huge jump in semiconductor availability. And it's not just for the EV space, it's for every space. There are a few fabs which are coming up in India, but there is a problem about critical earths and their availability. We will ultimately still need to depend on China to a certain extent. In terms of Indian semiconductor manufacture, where are we and where do we need to be? I'll come down to semiconductor, but I forgot to answer a little bit on this battery manufacturing, because I wanted to tell you that there are 6 Indian companies which have got into battery manufacturing. They will, over a period of the next 3 to 4 years, make India totally independent of the Chinese supply chain in battery manufacturing. From Tata's to Reliance to Excite to many 6 companies have got into battery manufacturing in India. Second thing is, it's very important. You know, if you look around the world, countries which grow and prosper, and only 3 countries in the world have been able to grow at rapid pace post-World War II. It was Japan post-World War II, later Korea, and in recent times China. They could grow and expand because they got into cutting-edge areas of growth. And when you get into cutting-edge areas of growth, you start exporting new technologies. And therefore, the future of the world will be driven by the chips and semiconductors. And I'm really delighted. No, but where is it happening in India at the pace? So you have 12 different companies who have got into semiconductor manufacturing. India is a center for design manufacturing, but 12 different companies which have got into semiconductor chip manufacturing in India. You'll see the results coming out in the next 2 to 3 years. A huge work has been done by the semiconductor mission. There are 2 things which I think must be appreciated, that this government has pushed for semiconductors, this government has pushed for the AI mission, and this government has pushed for the green, to my mind, the green hydrogen mission. But they must ensure that the electric vehicle movement must spread very rapidly, otherwise we lose the global markets. Our demographic dividend, we've spoken about this in the past, is perhaps our biggest boon. Many would say we aren't doing enough. To make use of our young population means that we need to reskill and upskill them. Are we doing that fast enough? So before I come down to skills, I want to say that there are 3 things which India needs to do. First of all, to my mind, we are getting into a new era with these new free trade agreements. It's very important for all your viewers to understand this, that if you're going to sign 12 FTAs, including with Europe and UK, you are going to see investments coming in from their companies into India. And that's why, makes it absolutely imperative for Indian companies to become globally competitive and to drive exports. And you need to drive exports both on manufacturing and on services side. And Indian companies must have the ambition to penetrate global markets. That ambition must be brought in. If you do not do this, FTAs will ensure that our businesses will lose out, others will get in. And therefore, Indian companies must focus on penetrating global markets. Don't be stuck by domestic market. And I'm saying this is the most important thing which Indian businesses must do. Get a global mindset, not merely in manufacturing, but also in services. And that means that sectors like tourism, we need to really market India to bring, if you're buying 2,000 planes, if you are not able to market India externally and you're going to say that I'm only going to drive domestic tourism, that's not possible.
2,000 plane means you will ensure that India will only be doing outbound tourism and not inbound tourism. So you need to market India abroad to get external tourists. Is the fastest way to create jobs, is the fastest way to earn foreign exchange. That's But my question on upskilling and reskilling. I'm coming to that. Tell me about that. So my view on that is that the world has gone through a major reset with AI and with quantum computing coming in, and it's a general purpose technology which will impact every single sector of the economy. And my view is that every single university, every single college, every single school must undergo a change of curriculum for the world of tomorrow. And that would mean that India would require more data scientists, more machine learners, more AI engineers. You need to be ready for this huge, it'll be a bigger revolution than we saw through electricity or we saw through computers. This will be the biggest of all revolutions. So you are seeing in the world conflicts, you are seeing breakdown in supply chains, but we are also living at a point of time when the world is going to see the biggest rise in productivity because of AI. And therefore, every single Indian has to get used to it, and that will happen if schools, colleges, universities all change their curriculum, because new jobs will get created only through this. What about the quality of jobs? The biggest concern is that the moment we embrace AI, and it's inevitable, I agree completely, base level lawyers, chartered accountants, coders, any number of jobs, linguists, translators, I could go on, they will disappear overnight. That is lakhs and lakhs of jobs. In the absence of these jobs, what do people with degrees, for example, in computer science do? So no onset of new technology has never led to loss of jobs. Vishnu, let me tell you this. The same fear, the same pessimism which you are raising right now was raised when electricity came in, when the Industrial Revolution came in, when computers came in. Same pessimism. When AI comes in, you will have new jobs getting created. These will be new variety of jobs. You will need more and more data scientists. You will need more product engineers. You will need more and more of machine learners. India should prepare itself for that revolution. Don't create fear. Don't create pessimism. Prepare yourself for the world of tomorrow. That's critical. What about India's own AI stack? Are we doing enough? There has been this back and forth debate on whether India needs to get into large language models. Some suggest that it is inevitable. We've got a couple of companies trying to do that. Are we falling behind the curve when we look at what's there around the world? So, three things on this, that India, on this AI revolution that is sweeping the world. First of all, let me tell you that no country is totally independent. In United States, you have computing power through NVIDIA. You have chips manufactured through TSMC, which is in Taiwan. You have lithography machine in Netherlands. And you have helium gas coming in from Qatar. And you have glass manufacturers from Germany. So there's interdependence. But AI models are all being driven by data. 20% of the global data comes from India, and if you read the latest Stanford AI index, you will realize that for the first time in India, the last 9 years of Stanford AI index, you have reverse flow of talent coming into India. And this is coming in because of startups and because of global capability centers. Also because they can't work anymore in America that easily. Yeah, probably, but 2,717 global capability centers. So you have data, you have you have talent coming back, you have a digital public infrastructure which is very advanced in India. And let me also compliment the government, because you have the most progressive policy as far as data is concerned. It's not like Europe's policy. We have a forward-looking policy. So if you combine all this together, India needs to specialize in some areas. AI is going to get commoditized tomorrow,
And it's very important that India is able to use its data, its talent, its progressive policy, and its digital public infrastructure to excel in AI in some areas. And what you see through Sarvam and many other, as that they're doing multilingual. AI will not be fit for purpose if it is not multilingual. AI will not be fit for purpose if it is not low bandwidth. AI will not be fit for purpose if we are not able to do applications which will transform learning outcomes, health outcomes, nutritional standards. So to my mind, India has a huge potential on the application side. An area of the economy which interests me a great deal is space. Now, there is boundless potential for India in the space program. But some would say that the frugal engineering that we highlight constantly in ISRO is basically a problem at one level, because there is only so much that frugal engineering can do. If you compare Elon Musk and his venture, SpaceX, with what we are doing in India, there is a definite risk aversion in India. Elon Musk develops technology on the basis that, or through a prism of there will be losses, there will be rockets which explode, but we will keep testing, trying, paying, and then achieving. In India, we don't quite have that mindset of being risk averse. Is this something which impacts our space program and other areas? No, it's not a question of risk aversion. It's your ability to spend risk capital. What happens in the United States is at the university level, when you do innovation, a lot of risk capital is made available. I mean, unending amount of risk capital. What you've seen you've seen about close to 1 trillion getting into AI models. I mean, Anthropic and OpenAI have been able to attract over 1 trillion. Look at this SpaceX IPO. I mean, suddenly you find that the wealth of Elon Musk has gone to 1.1 trillion, which is more than the GDP of Taiwan, because of the risk capital that is available. Nowhere else in the world so much of risk capital is available. And that risk capital is available at the university level for young students who then collaborate with their teachers, and the teachers take equity into their business model. So what India needs to do is to provide a long-term risk capital to its deep tech in a very big way. I mean, you have some very phenomenal startups in the space sector in India. I mean, you have Skyroot, and you have Dhruva, and you have Pixel. You have many path-breaking young startups. They need much more of risk capital available, and their valuation will then shoot up. You know, the DRDO chief said some time back that unless we step up R&D investment in India, and he was talking about his sector, but I would suggest that this applies to sectors across the board, we are in deep trouble. There needs to be profound science and investment in engineering in other areas. Otherwise, this is all talk at one level. So, you know, we do about 0.6% of our GDP on R&D. Korea does about 5%, US does about 4.8%, Japan does about 5%. So you need more resources to flow into. The private sector must also get oriented into doing more and more R&D. I mean, 3 years back, India reduced the corporate tax level. They gave away 1,50,000 crores. So the corporate balance sheet is booming. I mean, that money should go into more and more of R&D. So why isn't it? Huh? Why isn't it? We all know it's common sense. You have to get Yeah, so R&D. NDTV needs to push for more and more of new innovation, push more and more corporates into a greater amount of global penetration. You can't penetrate global economies without doing more and more R&D. You need new products. You need to move from generic to specialized pharma and so on. That needs to be done by the private sector of India. They need to be far more, research oriented. In fact, private sector is my last question to you. Private sector investment in, for example, Indian infrastructure. All our new shiny highways are primarily driven by government investments, and which is important and great. But why is private sector in India not investing anywhere close to what we would like them to? Vishnu, two things, and I want to make this point that since private sector is risk averse sometimes, but you've seen a lot of fresh investments also taking place from, the Tatas have done some remarkable work in electronics and digital. L&T has spent a huge amount into new areas of growth. I would say that
Reliance, Adani, Jindal, all these have done it. But you need to spread this momentum of investments to the next 250 odd companies into a very, very big way of movement for investments. The second point I would like to say is that greenfield investment in India sometimes becomes complex because it takes time. So you need to put out a lot of more brownfield investments out. You need to do more of asset monetization, and to raise productivity levels in India over a long period of time, we need to push for privatization of our public enterprises. The government 2 years back in its budget had announced that it will remain in only 4 strategic areas. It will sell out banks, it will sell out 2 banks, 1 insurance companies. We need to bring that table, that reform agenda back again center stage. All right, bring the reform agenda back center stage. Amitabh Kant, wonderful speaking to you. There are so many areas, so many challenges, but the prospects are huge. Thank you very much indeed for joining us at NDTV Ignite. Thank you. Thank you. Let's give both Mr. Amitabh Kant and Vishnu a round of applause for that wonderful conversation, ladies and gentlemen, at the NDTV Ignite the Future India Summit. Right. Now, while policy blueprints are drafted at the highest levels, their survival over a 50-year horizon depends entirely on execution. The ultimate bridge between political vision and grassroots reality is India's civil service. So, to truly understand how the state has modernized its delivery mechanisms over the last 12 years and how the civil service itself must evolve to handle the complexities of the next half century, we need to hear from the people who have run the machinery from the inside. So for our next session, please welcome our distinguished panel of administrative leaders on stage, Dr. Arun Kumar Mehta, former Chief Secretary of Jammu and Kashmir and noted author, Preeti Sudan, former Chairperson of the UPSC and Senior Fellow at CSEP and former advisor to the Prime Minister, Amarjeet Sinha, and to conduct this conversation, NDTV's very own Gauri Dwivedi. After that very invigorating session where a lot of focus was on areas where India needs to really now prioritize in terms of its growth agenda, I think it's also important to now focus on, when you talk about India's governance model, how is it that you actually get there? The last mile connectivity, that connection from outlay to outcome, how does that happen? And that happens through India's massive bureaucratic setup, the bureaucracy that actually ensures that from the vision, from the roadmap, to actual delivery, how that actually happens. In fact, this panel actually has some very, very renowned bureaucrats, those who've actually done work across the delivery of welfare schemes, some very important administrative decisions, to really help us understand that when you talk about the future, when you talk about what is it that India now needs to focus on going forward, what should be the role of bureaucracy? What should a future bureaucrat in 2050 really have as a skill that can empower her to ensure that the roadmap, the vision that we talk about right now gets fulfilled? Thank you so much, all of you, for joining in this very wonderful session. Let me start first by asking that all of you have actually done work specifically, whether it's in the field of health, whether it's rural development, very important administrative changes that India saw when it comes to Jammu Kashmir. Your thoughts on how it happened,
the X factor, and most importantly, the lessons and learnings that Indian bureaucracy needs to keep in mind. Dr. Mehta, let me start with you, sir. Am I audible? Is it working? Yes, sir. Okay, thank you very much. Very interesting question. So the question was that what happens at the last mile and how programs get implemented. As far as I am concerned, let me begin by saying that during the last 12 years or so, a lot of prophetic changes have come about, and that needs to be recognized. One is the digital public infrastructure. It has changed India. For example, the very fact that we have things like Aadhaar, so you can identify every person. You have DBT, direct benefit transfer. You have UPI. And UPI is great, but not many advanced countries also have that kind of facility where every person is enabled to do transaction digitally. So digital public infrastructure has changed India to a very large extent. And that is one of the things that has been carried out well. And in case of Jammu and Kashmir, let me say this, that J&K was not known for digital infrastructure, right? And 2021 we started, and by 2023 we were #1 in the country. So this can be done, and this is NESDA assessment, not our own assessment. So J&K within 2 years had become #1 in the country. And in January of 2023, we had said that all interaction with the public will happen through digital means. That was first thing that has happened, which has changed India. The second point, financial inclusion. Now, if you look at what has happened in the last 12 years, Jan Dhan Yojana, PMJSBY, PMJJBY, all those programs have come in, and people at the grassroots level got included in the financial architecture of India. And this has helped. The third point was that in terms of basic infrastructure, a lot of changes came about. Saubhagya got implemented. Every village had electricity. Then Jal Jeevan Mission. Then we had PM Gram Sadak Yojana, so on and so forth. So infrastructure, the basic work has been completed, and it's gone down to the last level. The point you were asking, that there are so many things, I'm not going to count all of them, but one transformation, apart from digital, that I was associated with, was how J&K was managed post 370 abrogation. And that is a story in itself. I am very happy to tell you that you would have not heard a single instance of stone throwing post abrogation of Article 370, right? When not a single day of bandh, no hartals, nothing. How does this happen? This happens because there is a clarity at the political level, at the top level, and the bureaucracy. When the aims are clear, things happen. And mark my word, when the motive is clear, and when the direction is clear, then bureaucracy is pretty capable of delivering on that. I'll give you one more instance, Namami Gange. How many of us would have thought that Ganga would actually get cleaner than earlier? But today, Ganga polluted stretches have come down from 355 something. It has now come down to 296. So Ganga is cleaner than earlier, right? It may not be perfect, but it's definitely cleaner. So when it comes to delivery, I think when the direction is very clear, it does happen. The distinction of the sets of decisions that you pointed out is important, because when you talk about Jammu Kashmir, abrogation of Article 370, what followed, the massive political, constitutional, administrative changes, is a very large part of how bureaucracy handled a delicate time. And then, of course, is the delivery of schemes, particular flagship programs like Namami Gange. An example of when there is clarity in terms of how deliverables need to be achieved, it actually gets done. Very important point. Mr. Sinha, I want to bring you in on, I think, the biggest piece in the puzzle, which is around our rural development, something that you understand so well, sir. India, if you want to understand India, you've just got to understand the sheer scale at which we operate. And I think nothing tells that better than rural development. Your thoughts, sir? Thank you, Gauri. I had the privilege to be at the leadership position for the pro-poor public welfare programs between 2014 and 2021. I'll limit my comments to that period and to say the scale was astounding. And the scale was achieved not only because of technology, because technology is only a means. It's not an end in itself. And that recognition is important. If I were to share numbers, women under the Rural Livelihood Mission in self-help groups
2014, we had 25 million women who were part of this, mostly from the southern Indian states, Bihar and a couple of other states. 2026, we have over 100 million women who are a part of this movement, the Lakpati Didis that you hear about. I had the privilege to lead the entire process for a long time as Secretary Rural Development and later as advisor to the Prime Minister. Clearly, it did make a dent. The second thing is the housing program. The scale is unimaginable. When we were designing the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin, it was the best of minds of professors of schools of planning and architecture, IIT, other places, looking at local resources, designing building structures, and thereafter choosing to implement. So you raised the issue of the last mile. I have covered most of this in the Routledge book that I published in 2023, which is called The Last Mile, Turning Public Policy Upside Down. To the scale of 30 million homes over a period is again astounding. The third, the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana began at the turn of the century, but it was going on and on and on. But the mandate to us was very, very clear. We must connect all habitations as per the plan and definition well in time. So clearly the pace that comes as a consequence of it. The fourth and the last one, 2018, suddenly one day we were summoned to a meeting that 7 benefits have to reach the poorest villages of the country under the Gram Swaraj Abhiyan. To identify the poorest villages, we said we'll go by the deprivation data or the data with regard to the scheduled caste, scheduled tribe households in different parts of the country. Total of 63,974 villages were selected, and I was given a time of about 6 months and 2 phases of a Gram Swaraj Abhiyan to be able to ensure that these deprived habitations, every eligible person gets a gas connection, gets LED bulbs, gets the electricity connection under Saubhagya, gets an accident insurance, gets a life insurance, gets immunization coverage, and a bank account for every woman under Jandhan. Now 7 tasks to be achieved within 2 mission mode campaigns over a period of 6 months to cover every eligible in the most remote parts of the country. That's why along with technology, the connect at the last mile, the panchayats, the leaders of the 31 lakh panchayat representatives, of whom 43% were women, the 100 million, 10 crore women in the self-help groups, Right. the foot soldiers as also the frontline workers, all governments, all states coming together, central government officials, state government officials together trying to ensure that it actually happened by the end of it. I So think that's a very important point that you've raised. And now that I want to get in Preeti also, which is the other side of how the backbone of Indian delivery system functions, which is in a crisis, which is in an unprecedented situation. We spoke about administrative changes, we spoke about welfare schemes. Let's also now speak about adversities that nobody, no government, no politician can ever plan for, which was the pandemic. And you were at the helm of it, ma'am, to really decide how best we can chart out our trajectory around that time, ensure that India comes out as little infected as it was. Tell us about the role that Indian bureaucracy played during those toughest times, which was around the COVID pandemic. So, thank you for asking this question. First and foremost, I want to put it on record that it was whole of government approach. It was not only whole of government approach, it was whole of society approach. And incidentally, it's very, very heartening, I would say, that India stands as one whenever a disaster strikes us. We've seen it time and again, whether it is Operation Sindoor, whether it is any flood, cyclone, and of course pandemic, because we just didn't know what has struck us, where it has come from. We had no, I would say, confirmed news on what's going to happen. So what did we do?
Actually, I would say that we had a proactive, graded, and collaborative, approach. No state or even center could have done it alone. We were all together. And I retired in July 2020. I was to retire in April, but I retired in July 2020. I attended some 10, meetings of Honorable PM with the Honorable Chief Ministers. And it was most gratifying that all of us were on one page. If you recall, it's not to make a comment, but just to highlight how we were all one together, is that, if you remember in US, the response in California was different, the response in New York was different. So it was all states were doing what they wanted to do, but we were together. States were asking each other masks and were not being given. It was that bad. Yes. Yeah, but here, states, whoever needed masks were given as per the cases. And of course, I think as highlighted by Mr. Mehta, my colleague, that digital actually innovations made lot of difference. And we had this e-learning platform of eSanjeevani, where medical colleges used to actually talk to each other periodically. And within 15 days, CDAC Mohali converted into a telemedicine software, eSanjeevani. Yeah. So you see, all of us were talking. AIIMS Delhi had a toll-free number 24 hours a day. Yes. And there was a lot of skepticism that, well, Indians, they are not educated. Will they wear masks? Will they? Because we have this habit of hugging. We have habit of, holding hands and all that. No. How beautifully all of us followed all the directions. Yes. So that is India. And I think the distinction that you pointed out is extremely significant. When you made that distinction about America, it's so important because that time states in America, in fact, Donald Trump himself was asking for masks and PPE kits from California and other states, and they had flatly refused the president that time. It is unbelievable, but yes, that's how it was. It's important that we highlighted specific areas and experiences to really understand the different layers at which the Indian bureaucracy functions, the layers at which decision making actually gets done. Let me now talk about, we've had DBT and digitization have a huge role to play both in terms of targeting of schemes and also bringing in a lot of trust. Trust and transparency is a function of the digitization that has happened. But let's now look ahead. Let's now talk about what next can be done. When you talk about the next 10 years, the next 15 years, the rapid pace at which technology is coming in, that's really set to transform delivery for goods and services, and also expectations. What the government should now be doing for the people of this country, the young people of this country, and how much can tech be an enabler? Your thoughts there, sir. Dr. Mehta. Okay, thanks a lot for asking this question. And I think it's very, very important. If I look at what India is to do and hasn't done yet, then the first thing I would like to point out in so far as technology is concerned, we have a technology deficit, innovation deficit, which we need to admit and address that. If I look at AI, we probably are not even the first 10. If you look at the space power, we are definitely not top tier. If you just look at the numbers of satellites, USA has more than 10,000 easily. China has more than 1,000. We have less than 100, maybe around 50. It's just so asymmetrical in terms of technology that we need to understand that without technology, we are not going to compete. A nation of 1.4 billion, it cannot be second to anybody. It's an existential issue. It's a security issue. I can't overemphasize it. Whether it look at oceans, if you look at ocean technology, we are nowhere near there, nowhere near USA or China. If you look at space, same problem. India needs to lead now, and India needs to take into account that a country that could do so well in many areas, we should bank upon ourselves to ensure that we create disruptive technologies, if possible,
fuel costs. If not, then we need to invest. Okay. Being a technology laggard is not an option for India, and I'm very clear about that. Otherwise, what will happen, and I would like to take this opportunity to say this, you can face an AI colonialism, you can face a data colonialism. It's time to get worried about that. And what you have seen in Iran versus USA and Israel war, their systems were taken over by Starlink, and they could broadcast whatever they liked, right? Now that can happen to somebody else as well, some other country as well. So in terms of technology, I think it's time to take into account that we can't be a laggard. We have to be in the top. It's not good enough to say that we are in the middle tier or just below the top tier. We need to get into the top tier. And for that, whatever investment is required, and it is being addressed, I agree. But I think we need to more focus on that. Was that your question? Broadly, but let's get in, Mr. Sinha, also on how do you scale up the engine? The engine is working. We've got experiences, real life experiences of all of you telling how that engine is working. How do we scale that up is the point, and future-proof it. No, the scaling of a minimum level of living based on all the interventions did lead to changes in the chronic poverty picture for the country. But obviously that is not enough. Now when you wish to move beyond this, and that's where from a Lakpati Didi, we'll have to move towards a 5 Lakpati Didi. You know, the earnings, incomes have to rise much more. For that, human development is the key challenge. When we look at China and India, leaving aside every other difference, the biggest difference is on the scale on education especially and skills and what it means for the entire systems of economic governance as also for investments. So clearly human development, urban challenges, the quality of lives in urban areas for the working class, it needs top attention. It needs attention because otherwise it can compromise the pace at which we urbanize, thereby compromising the rates at which GDPs grow, because surely urban areas report much higher rates of growth. But putting all this together is the important need to accept collaborative governance as the way forward, where we take non-state actors very much as part of the consensual decision-making process. If I look at some of the indicators, we've set up schools, but quality of learning is not happening. We've set up health facilities, but there are challenges on quality services. These wicked problems need collaborative governance, a governance where citizens have a consensual decision-making role, not just a membership of a committee. So clearly for the India of the future, given the mobilization that we've done, can we now move towards devolution and decentralization on scale? Because if you look at the states which devolve have higher monthly per capita consumption expenditures. The same Kerala, Sikkim, Goa, Himachal, Tamil Nadu figure at the top. The same states report a lower level of multidimensional poverty, and the same states also report on incomes a better profile. Clearly, the linkages of devolution, decentralization, incomes is a direct one, human development, education levels, 10 years of schooling, and you do a profile of all the districts. You get the real picture of where we need to do what and on what scale. So we need the scale for human development, for rising incomes, for more skills, and most importantly, quality of lives in the urban governance systems as well, so that we are able to meet the needs better. Thank you. Okay. Preeti ji, I want to bring you in on the one fact I think which is most important, which is around what kind of a bureaucrat India needs now, as against what kind of bureaucrats that served us in the last 10, 15, 30, 40 years. Has that requirement changed? Should that change? And if so, is the UPSC that you were a former chair of keeping pace with that requirement? I think that's most important. So I would like to say that it's very heartening when I read the topic of this session. It is machinery of change, not the steel frame. Okay? So that is the main point. So bureaucracy is machinery of change. Yes, we are the steel frame, but that's not enough. We have to be the machinery of change.
So first and foremost requirement is that we must, as a bureaucrat, we need to be adaptable. Adaptable means to, as you said, asked me in the beginning that, unforeseen situations may arise. So what to do? Do you have the resilience? And then if, you have to make sure that you are looking into diversity and equity while implementing schemes. Do you have the honesty and the integrity to do so? You are going to dealing with, digital media, social media. Do you have the ability to, not make it personal, but institutional? So, you see, these are the new qualities in bureaucrats that is required. Is that being tested adequately in the mechanism that exists right now? Yes. Now, I would like to say with some amount of satisfaction that the training modules, even in, wherever we are trained, is actually getting... Selection. What about selection, ma'am? So, I recently attended, presided over one workshop in Administrative Staff College, where this is exactly what was asked. Bhai, jab aap interview kar rahe ho, what is it that you're looking for? Are these people have prepared from institutions? Are they just sitting, like robots and answering? What is it that you need to ask so that you get to know the ethical level, the morality, the resilience, the innovative approach, and most important, empathy of the person you are selecting. So these are now being looked into, and as you know that we have a paper on ethics also in UPSC now. So lots of churning is going on, and I'm sure this is a process which is continuous. It's not as if we are done with it. I think there are a lot of people who've actually voiced their opinions about what kind of an examination system, selection system should India actually now have, given the way we are now envisaging the future of India. A 2050 bureaucrat, how should he or she be selected given the present mechanisms, the kind of courses that are important, the kind of languages in which the examination can be held. Those are lots of questions, and I think they need to be addressed at some point of time in an appropriate manner. Given the paucity of time, the final question I want to ask all three of you is that if one reform was to be done, undertaken for specifically with regard to bureaucracy, with regard to the machinery that's actually hopefully going to bring the kind of change that we all aspire for, what is that one reform that India must undertake? Okay, let me say that we can't have a 20th century bureaucracy in 21st century. Now, the routine functions that were carried out by bureaucracy for a long time, which was basically examination of application, seeing that the application is right and then approving it, those things can be done by AI and robotics. We don't need bureaucrats for that purpose. Will there not be resistance from these same bureaucratic levers if AI starts getting implemented? Just a minute. So, we need to reinvent bureaucracy. And from routine examination to problem solving, handling crisis. Suppose someday some digital infrastructure fails, then that is the point of time they will be called upon to perform those functions. So completely reimagining bureaucracy, because in the modern world, information is a power. And those people who, basically I would say that, who is sovereign in India is people, right? Who is being served? People are being served. Whose dignity are we talking about? People's dignity we are talking about. It's all about dignity. Not today, I don't think that we are treating people with that dignity which they deserve. So dignified bureaucracy, dignified service delivery, is that what we look at. And that is possible today because the technology enables you to do so. So I think that I would like to see a 21st century bureaucracy which is tech-enabled, problem-solving, not file-centered, but citizen-centered, and treating citizens with dignity, and that is fundamental, and it can be done. It can be done. Okay, that's the most important word. Yes, sir. No, I think the slowest movement is always on civil service reforms. If there is one change and transformation, both of mindsets and ways of working,
It is to wholeheartedly and organically accept the concept of collaborative governance where citizens are equal partners in the service provisions. It's important also to realize, as a part of the civil service reforms, one, the institutions that you create in a collaborative governance framework, along with the challenges of gender empowerment and inclusive development. The NFHS 6 data has just come out, and when you do the analysis, you see that picture very clearly. States which tackled the gender empowerment more effectively has better indicators. If these are the messages, civil service reforms ought to be about development, because we transitioned from being a regulatory civil service in colonial times. We perhaps took up development responsibilities but didn't reform enough in our ways of working. And Okay, that's an these important changes- point. yeah. Very quickly, Preeti ji, time is I'd literally like to done. say quickly, not repeat what they've said, but when we talk about collaboration, it is actually also means that making people, ordinary people, part of decision making. I want to just relate an example. Amarjeet spoke about gender also. When I was collector Mehboob Nagar, we did an exercise. We gave a canvas to men and women groups separately. So what do you want? It was a district where there was no water available and people used to go out, Palamur labor, earth workers. The men made roads, right? So that they can reach the areas where they could find employment. Women made tanks. They wanted water in their villages so that people stay there. You see, they have employment in their village, the children go to school. So when a woman is involved in decision making, she thinks about the entire family. So what I'm saying is there are many models in which you can actually make ordinary people part of decision making. What do they want? We need to ask. That's true collaboration. I think India is a sum of whole when it comes to all of these stories, and the challenge is to really bring all of it together. And how that happens in the India of, let's say, 2050, 2047 is, I think, going to be the real challenge. I'm going to leave it there. Thank you so much, all of you, for joining us in this session. A round of applause for our panelists, because I'm sure you'll all agree it was a fascinating conversation full of some wonderful anecdotes and examples of experience from the ground. So thank you so much, Gauri. A big thank you to all our panel for showing us how real impact is indeed created at the grassroots level. Now, moving forward, it is time to pivot our focus from domestic governance to the global arena. India's 50-year developmental journey cannot be achieved in isolation. Today, as the old global order undergoes a massive shift, the defining question for this generation is how is India cementing its strategic autonomy and amplifying its influence on the world stage? To unpack this, please welcome on stage renowned author, strategic thinker, and president of the India Foundation, Dr. Ram Madhav, who will be in conversation with my colleague Vishnu Shom. And a round of applause. Well, hello and welcome everybody to what I promise you is going to be an absolutely fascinating conversation with someone who is one of India's finest thinkers. He straddles several spheres in his studies, in his work, in his writings, in what he talks about. He talks about India's civilization. He talks about India's presence. He talks about India's strategic interests and India's interests and our independence, I should say. It is wonderful to have Ram Madhav with us today. Dr. Ram Madhav, we met a few months back in Mauritius when we were talking about Indian Ocean security. It's an area which is critically important, and I would suggest that as a peninsular nation, we need to be thinking a lot more about our nations. I ask you this question because the oceans are now central to India's energy security, and there's a huge crisis taking place in West Asia. It's a crisis where we now see Indian sailors being hit by American attacks. We also want
to engage the Americans. Our Prime Minister may be meeting Donald Trump in a few days from now in France at the G7 summit. How do we balance the relationship with America versus these attacks on Indian sailors? Oh, firstly, these attacks are very unfortunate, and we should strongly condemn these attacks. The straits should be free and open for passage of the ships of all the nations, and that when we say that they should be free and open, it applies as much to the US as to Iran. Every country, whichever country is trying to do certain activity there, must allow free passage of ships and all. It's very unfortunate that although ships do not belong to India, the sailors or the crew who lost their lives, 3 of them happen to be our citizens, and it is highly unfortunate and reprehensible. But remember, India took that very principled standard from the beginning, that what the way forward should be is 3 Ds: de-escalation, diplomacy, and dialogue. India wants the situation in Iran and in the Strait of Hormuz to be addressed through only these 3 ways. Today, things are not happening along these 3 lines. They are happening through coercive measures. Those coercive measures are leading to such unfortunate incidents like that, the one that not one, in fact, 3 of our vessels have been attacked in which Indian sailors were there. This has to stop and this has to change. How do we therefore look at our strategic equation with the United States? Because on the one hand, you've got this particular scenario. On the other hand, there is a massive technology investment which is taking place between India and America, a massive defense cooperation between India and America. But over the last 1 year, there have been so many differences when it comes to sanctions, when it comes to delays in the trade deal, which is eventually going through. So it's opportunities and yet challenges is how I would look at it. How would you look at it? No, Government of India has conveyed its you call it anger or its disapproval in strongest terms to the CDA of the Through US. The démarche. I mean, démarche was issued by a very high senior official of our ministry. So these incidents and India's disapproval has been conveyed to our friends in the US. So they must take note of India's unhappiness and anger over these things. Yes, at the same time, there is a broader engagement between our 2 countries. We have to also ensure that that relationship continues. This is a kind of balance that countries have to always maintain. Ramadhavji, the flip side, of course, is that India has so many partners. And I think that is really the benchmark of Indian foreign policy is our independence. In as much as America is important and in as much as we face challenges presently, could you tell us about the significance of India's relations with Russia, for starters? We follow what is called the plurilateral alignment policy, multi-alignment policy, you can call it. Within that framework, for example, Prime Minister is later this week he's traveling to Europe to attend G7 summit. G7 is an important partner for us. But G7, most of the countries in G7 do not see eye to eye with Russia today. But for us, G7 is important, but so is Russia, so is Iran, so are many other countries in the world. So we follow that plurilateral principle. We want to uphold strategic autonomy to pursue that plurilateral approach. In that, our relationship with countries like Russia plays a very significant role. Now, since we were talking about the Middle East crisis has put so much pressure on energy supply lines, not just of India, of many countries, but India also has been at the receiving end because we used to import a lot of CNG, natural gas from Qatar. We used to import from Iraq, and from, of course, Iran and other countries. That has stopped.
So for some time we faced some pressure, but luckily, number one, we had reserves of 90 days. We were able to absorb some shocks, but within that 90 days period, we turned to countries like Russia. Today, we import almost 40% of our crude imports happen from Russia. Takes slightly longer time. They take about 35 to 40 days to reach India. Nevertheless, today we have the country supporting us at the time of impending shortage of fuels. Remember, trade is like water. If one channel is closed, the water will find another way to reach. So it is now coming from Russia. It was supposed to come from probably Egypt. It's coming from Russia. In that sense, Russia has been a trusted friend, reliable friend. And we have been able to maintain that relationship as far as energy at least is concerned, and also defense relationship is concerned. Ram Madhavji, the other, this is interesting because this entire crisis has thrown up certain opportunities as well. As you know, the United Arab Emirates is out of OPEC right now. Our Prime Minister was there some time back, a few weeks back, where India has managed to secure a deal with the United Arab Emirates, which will ensure that India's strategic reserves of oil will be almost doubled. It could be even more than doubled. Again, reaching out to countries in the Persian Gulf region, the GCC nations, has been something this government has worked at very importantly. This particular deal with the UAE will help secure us, I would suggest, if there is ever another crisis like this. How important is that? No, definitely very important. And as you rightly said, in the last decade or so, Prime Minister Modi invested heavily in strengthening our ties with the countries in the Middle Eastern region. Especially countries like UAE, countries like Saudi Arabia, even countries like Qatar have become good friends of India, partly because India was ready to stand up and take that position of strategic autonomy on issues. So they saw in India a country which has courage to stand up for what it believes to be right for it and for the larger world. So they have enormous respect for India. That's the reason why today we have been able to clinch important deals with many countries. And the UAE deal you talked about, which allows us to have more reserve capacity rather, is an important deal for us. Today, our strategic reserves have now got enhanced by another at least 10%. So, as I said, I have today, if I have 90 days of strategic reserves in India, UAE is ready to support me for another 10 to 20 days. So, which is an important agreement that Prime Minister has been able to get from UAE. So, that is because of the investment that we made in the relationships on a very strategically autonomous basis. Ram Madhavji, China, glass half empty or glass half full? Yeah, both are the same. You call it half empty or half full, it is same. But with China, it's a dynamic situation. Please remember, our relationship with China has always been blow hot, blow cold. We have had very difficult phases. We have had relative years of bonhomie. We have had relative years of calmness. So we had a difficult phase between 2020 and 2024. But in 2024, one very important agreement has been reached wherein the Chinese side has agreed to vacate most of the 8 points of stalemate between our two countries along the Indo-Tibetan border in Ladakh. After that, steadily, there is a little improvement in our relationship. Today, there is hope that we will be able to maintain peace along the border. We will respect each other's sentiments, each other's feelings, and understand each other's position on various issues. So today, I would say the situation is slightly in an improved situation than what it was probably a couple of years ago. I hope that this kind of a steady and balanced relationship continues for years to come.
Rabadji, I must disagree with you slightly over there. I believe that China is a monumental threat. Take, for example, what is happening in Bhutan, territorial incursions in one of our closest allies by China. The fact some would suggest that all of the 8 zones or 9 zones in Ladakh, the demilitarized zones which have been created, are demilitarized zones which lie partly on our territory. In other words, that we've had to move away from areas which we believe is ours. Every now and again, there are these statements made about Arunachal Pradesh, which is 120% Indian by the Chinese. So the boundary issue, it just seems to be something which is always on the boil. How can we pursue a relationship unless this is resolved? We must not forget that boundary issue is not something that we have faced in 2020 or 2025. This is one issue we have been facing for last almost more than 6 decades. We have had a live border dispute with China. It cannot be denied. In that sense, that poses a strategic challenge to India. We have to be always guarded when dealing with China, especially on the border question. But remember also that pending the border issue, India and China have such big trade relationship, which is amounting to $140 billion. You know, if you exclude services sector, US is no longer the first trade partner of India, it is China. Yeah. The largest trade partner, minus services sector, will be China. It's another matter. Even that is not a very happy scenario for India, because what is happening is out of 140 billion, almost 120 billion is what we import. That means the trade deficit is close to, beyond $100 billion is the trade deficit between our 2 countries, which is not a very happy scenario. We should be able to invest or export more and all that. But they developed a strong trade relationship between our 2 countries. Because of that, we have certain amount of engagement between our 2 countries. That's what I was referring to when I said a little stabilization has happened. Because what happened was during that 4-year period after Galwan, 2020, we completely shunned any kind of engagement for 4 years. Trade still continued, but all other engagements were almost frozen. That has now been relaxed a little bit. Our trade and other engagements are slowly improving. But I totally take your point. On the issue of border, on the larger issue of India's strategic interests, China remains the singular challenge for India in this region at least. Ram Madhavji, Pakistan is another challenge, of course, and that challenge comes in the form primarily of terrorism. Op Sindoor, as you know, has not ended officially. That's because India has drawn red lines and has said that if there is another terror attack, then India retains the option. Of course, there was the Red Fort terror attack, which took place as well. How does Pakistan, in a sense, and the tap that it has on terrorism, are military solutions the only way of dealing with Pakistan? There are absolutely no other ways to deal with Pakistan at the point. Please be clear about it. And when we talk about Pakistan, we must remember that Pakistan is unofficially the 3rd autonomous region of China after Hong Kong and Macau. Practically run by the dictates of China. So, you know, we have seen how much handshake happens between the 2 countries during Operation Sindoor last year. Yes. And even otherwise, they have such strong bilateral ties between the 2 countries. So dealing with Pakistan will remain a big challenge. And nowadays it is the latest lover boy of President Trump also. So we have to see how that relationship shapes up in the years to come. But nevertheless, right now, we have to be tough with Pakistan because Pakistan has not given up on its dirty tricks at all. Even in spite of its, other posturing with US and other countries. As far as India is concerned,
that dirty tricks department of Pakistan is intact today. So I would say, as of today, there is no other option than to be militarily and strategically totally alert to the challenge of Pakistan. Ram Madhavji, should it really matter to us in the way that it is playing out on social media that Pakistan is trying to get peace in West Asia? Whoever brings peace, I would argue, that is good for the entire world. Is this a weakness of Indian foreign policy that Pakistan seems to be negotiating with Iran and others? No, Pakistan tried to negotiate in Iran, and very soon both Iran and America realized that this is not a country to be trusted fully. Let me tell you, today, the negotiators between Iran and the US are no longer Pakistan, it is Qatar. That's true. Qataris are doing the midwifing of between the two countries. So Pakistan tried to play that role, it's over. If anybody has any illusions that Pakistan is a peace-loving country, at least as far as India is concerned, one should remember this, Field Marshal, this quote-unquote, Asim Munir, said something in one of his speeches in USA earlier this year, that next time, whenever they have to target India, they will target from the east. What does he mean by east? Does it mean that he will use Bangladesh, or he has bigger plans to use some other country in the east to attack India from the... So, as far as India is concerned, the agenda is clear, the program is clear, use terrorism, use other tactics to harass India, that old policy of 1,000 cuts that remains intact in Pakistan's strategy towards India. So let there be no illusions on social media or any other media. He also spoke about nuking India while speaking from American soil. Be that as it may, if you're talking about the East, we must talk about Bangladesh. There's a profound reset in the relationship with Bangladesh. I had the fortune of interviewing the Bangladeshi foreign minister in Mauritius, where I met you the last time. And there is optimism. No one is doubting that there are challenges. River water sharing is a constant concern. But do you believe it is time to turn the leaf on Dhaka-Delhi relations? Oh yes, I certainly agree that we should come out of that whole nostalgia of 1970s. Yes, we played an important role in the creation of that great country of Bangladesh, but don't keep on harping only on that. We are in 2020s. We have to redefine the relationship. There is a new government. We have to deal with that government on the present day sentiments and present day requirements. So that kind of a reset is what Government of India is attempting. And the foreign minister was in India before, as you rightly said, before he came to Mauritius for that important Indian Ocean conference. He was in India, he had a bilateral discussion with our foreign minister, and between them they decided to re-evaluate the relationship and take measures to ensure that it remains smooth. And I am quite confident, but Bangladesh, irrespective of the regime changes and all that, will never do anything to the detriment of India. That's my hope. And I'm sure that those in Bangladesh share this sentiment that I expressed, that they won't allow Bangladesh ever to be doing anything that is detrimental to interests of India. Ram Madhavji, in 2001, I was among the first journalists to be on the outskirts of Kabul when the Al-Qaeda and the Taliban were defeated in Kabul. And there seems so much hope, the rights of women, democracy, a new parliament, a voting system which India actually, the Election Commission of India assisted Afghanistan in. And then it all toppled and the Taliban are back in power now. India has a foreign policy where we are now engaging with the Taliban. What are the pros and cons of doing that? Are we giving up some of our values for our strategic needs? Are you okay with that? Diplomacy is about interests, not just about values alone. I'm not dismissing values. Values are important, but for students of diplomacy, that very important lesson is taught, that there are no permanent friends or permanent enemies in diplomacy. There are only permanent interests. So interests are permanent. You have to deal with the different types of leaders. You remember, we dealt with starred generals in our neighborhood. We dealt with Musharraf.
You remember we called him to Agra. That time also this discussion happened. Should we call him? He was the guy, who was responsible for Kargil and all that. But once he became the president, you have to engage with him. So when regimes come in neighborhood or in countries, we have to engage with them. The present regime in Afghanistan, yes, it is a Taliban regime, but there appears to be some change in the attitude as far as relations with other countries is concerned. I'm not commenting on their domestic politics. There can be any number of commentaries about what they are doing within their country. But as far as relations with countries like India are concerned, the current leadership of Afghanistan appears to be wanting to have good relations with India, and India is responding accordingly. And remember, we still don't have full-fledged mission there. No, we don't. Perhaps we will soon. Ram Madhavji, you've written about the civilizational links of India, and that we need to be looking at India's foreign policy through the prism of history and civilization. How does this actually play out in effect in the Indian Ocean region? Oh, very important as far as Indian Ocean region is concerned. Remember, Indian Ocean region is a natural region. When I say this, because I'm saying it in the context of other regions, like when you talk about Indo-Pacific, or nowadays the new phrase is Indo-Mediterranean. These are strategic constructs. We are constructing a particular proposition that suits our strategic interest. Whereas Indian Ocean is not just a strategic region, it's a natural region. In the Indian Ocean, with almost all the countries, India has had very long civilizational relationship. That relationship is something that today we should be able to leverage as a tool of diplomacy, and that is one of the pillars of Indian diplomacy ever since Modi reframed the diplomatic architecture of this country. Modi introduced a 5-pillar foreign policy. Out of those 5 pillars, last pillar is Samskruti, meaning the cultural and civilizational relationships that India had with many countries should be diplomatically also leveraged. In that sense, Indian Ocean is naturally an ally of India. Any country you take in Indian Ocean. Prime Minister went to Indonesia a few years ago. It was, of course, not recently, in 2016. Joko Widodo was the president of Indonesia. Together, they unveiled a statue in the main square of Jakarta. That statue was of Gitopadesha. It was in Indonesia. It was in Jakarta. And both leaders were there. So cultural relationship, civilizational relationship is also a strong bond. It naturally creates an affinity between the countries that needs to be certainly used. But remember, no one pillar will help you. You have to work on all the pillars. I said 5 pillars, all 5 have to be operational. In that, civilizational relationship makes Indian Ocean region a natural playground for India. India should focus on that region with that kind of an approach. One final question. Nepal, obviously there are historic, civilizational, religious grounds of unity between India and Nepal, and yet there is Gen Z. And you look very closely at Nepal. They have a rapper prime minister. He represents a new set of values. Does the traditional association between India and Nepal change given the young people in charge in the country? Again, what I said in the context of Bangladesh also applies to Nepal. We should not just be confined to our nostalgic, old relationship of religion, culture alone. They are important. They make our relationship smooth because of our shared civilizational cultural values. But remember, they are sovereign nations, whether it is Bangladesh or it is Nepal. Sovereign equality is a principle that we must uphold. It doesn't matter whether that country is small or big, either that is dependent or independent. Sovereign, equality as the principle, we are engaging with countries in our neighborhood, that includes Nepal. Nepal has a new leadership today, a youth-driven leadership, young leadership, and really ambitious about building a new Nepal.
India should happily welcome it, certainly welcome it. Decision is by the people of that country. So let us respect the decision. I know when those Janji agitations were happening, there were commentaries in India that whether it was engineered by CIA, something else. I used to say that please respect. People, if in that given country have a grievance about their government and they are fighting back, you can't sit in Delhi and say that it is a CIA conspiracy, ISI conspiracy, this and that. First of all, respect the sentiments of the people there. Those sentiments have thrown up a new government. Respect that government. Deal with it as a sovereign equal. That is precisely what we are doing. The senior most minister, the president of their ruling party came to India. We extended all the good, courtesies to him. We treated him well here, and their foreign minister came. He got all the required protocol and all the required respect here. That's how we engage with our neighbors, and Nepal is an important neighbor, our Himalayan neighbor. It's kind of a buffer state between us and China. So we attach a lot of importance to that country. But again, even out of for the fear of repeating also, I'm repeating, treat it as a sovereign equal and come out of nostalgia, deal with it on contemporary geopolitical, from the geopolitical lens and prism. No big brother, right? Neither for Bangladesh nor for Nepal. That's their constant refrain. Absolutely. India treats us like they are big brother. They don't like that. India, I would say that we have never behaved like a big brother. India should never think on the lines of playing the role of a big brother. If necessary, play the role of the elder brother, not the big brother. Ram Madhavji, wonderful speaking to you. As always, I said this would be a fascinating session. He is a wonderful thinker of India in the broader strategic process, in the broader strategic terms. These are dynamic and difficult moments for Indian foreign policy. The world is in churn. India has to navigate waters which work best for us. Ram Madhavji, thank you very much for being at NDTV Ignite. Thank you so much, Shri Ram Madhav, for joining us at the NDTV Ignite, the Future India Summit. A round of applause once again, ladies and gentlemen, for Shri Ram Madhav and that fascinating conversation with Vishnu Shom. Ladies and gentlemen, that brings us to the end of our morning sessions here at NDTV Ignite. We've mapped out the architecture of delivery, audited the political public square, dissected the economic decade, and analyzed our global footprints. We now take a short break for lunch, but please join us back here in the main hall at 2 p.m. sharp. We have a phenomenal afternoon lineup for you, starting with the deeply inspiring stories behind the People's Padma. Enjoy your lunch. It is being served to the right of me, and we will see you back here at 2 in the afternoon. Thank you. Paramount, India's only wire with 20-year warranty. Since 1955, delivering reliable cabling solutions. Paramount, आपके भरोसे की वाया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सेवा, सुशासन और विकास को समर्पित 12 वर्षों की राष्ट्र निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा ने उत्तराखंड को नई गति, नई दिशा और नया विश्वास दिया है। उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है, जो इस देवभूमि की गरिमा को भी बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार आज विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के संकल्प को तेजी से साकार कर रही है। आज उत्तराखंड में केंद्र सरकार की 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। डिजिटल इंडिया अभियान ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को विस्तार प्रदान किया है। भारत नेट परियोजना के तहत गाँव-गाँव में इंटरनेट पहुँचाया जा रहा है।
है। साथ ही स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और मुद्रा योजना जैसे अभियानों के माध्यम से उत्तराखंड का युवा गढ़ रहा है आत्मनिर्भर और स्वर्णिम भविष्य। वहीं 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की स्वीकृति, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 11 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, उड़ान योजना के तहत हवाई सेवाओं का विस्तार और पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित होता रोपवे नेटवर्क उत्तराखंड में कनेक्टिविटी, पर्यटन और विकास को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम पुनर्विकास, मानसखंड मंदिर माला मिशन और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा उत्तराखंड को वर्ष भर आध्यात्मिक और पर्यटन विकास की नई पहचान दे रहे हैं। वहीं वेड इन उत्तराखंड, होम स्टे, आयुष्मान भारत, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं, औद्योगिक विकास और वाइब्रेंट विलेज जैसी योजनाएं प्रदेश में रोजगार, स्वास्थ्य और सीमांत विकास को नई मजबूती प्रदान कर रही हैं। जन कल्याण से जन विश्वास तक डबल इंजन सरकार के साथ उत्तराखंड रच रहा है प्रगति का नया अध्याय।
Check, 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 check. Check, 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 check. Check, check, check. Ladies and gentlemen, may I please request you all to take your seats. The NDTV Ignite the Future India Summit is going to restart after lunch in just a short while. Come back into the audience and take your seats. The sooner you do that, the sooner we'll be able to start. We already have our guests for the next session here, as well as our anchor. And we've got quite an afternoon session lined up for you. Some fantastic stories from the ground from our People's Padma heroes, as well as conversations on Nari Shakti, and a very special guest who will be coming towards the end of the sessions in the evening. All I can tell you is that he's a sports star and a Khel Ratna awardee, and someone you definitely want to stick around for. Once again, if there are
Members of the audience who are in the lunch area, could I request you all to please come into the audience and take your seats so that we can start the afternoon session of Ignite India, the Future India Summit. Once again, if I may request our audience members who may be in the lunch area to please come and join us in the audience so that we can start NDTV Ignite, the Future India Summit. A fantastic afternoon session, lots of conversations, and a surprise sports superstar right at the end to make the wait worth it. I hope you all have enjoyed lunch. There's complete deafening silence, which either means that you haven't enjoyed lunch or you haven't had lunch. I hope you all enjoyed lunch. Oh, great, that's much better. Okay. I thought maybe the food had put you into a food coma or something. No, that's good. Okay. All right, ladies and gentlemen, welcome back to NDTV Ignite, the Future India Summit. As we kick off our afternoon block, we turn to a session that represents a narrative shift in how our nation honors its icons. Over the last decade, we've witnessed a transformation of the highest civilian honors into the People's Padma, moving the spotlight away from the corridors of power and shining it on the unsung heroes working selflessly at the absolute grassroots. To listen to the accounts of some very inspiring work and to explore what this shift means for the fabric of our nation, please welcome our phenomenal panel of Padma Shri awardees on the stage. Shri Nilesh Mandlewala, founder and president of Donate Life, Padma Shri Awardee 2026. Shri Gurvinder Singh, founder president of the Bhai Kanhaiya Manav Seva Trust, Padma Shri Awardee 2024, and acclaimed musician and Padma Shri Awardee 2016, Dr. Soma Ghosh. And to chat with them, my colleague, Manogya Loiwal. A round of applause, ladies and gentlemen, for all of them. कहते हैं इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसले की ज़रूरत होती है, और वो हौसला तब जब आपके अंदर ताकत हो अकेले चलने की। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीने, साल दर साल, दशक दर दशक। लेकिन मेरे साथ आज 3 वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतिहास सिर्फ इसलिए नहीं रचा है क्योंकि उन्होंने वो कदम तय किए हैं, बल्कि शुरुआत अकेले की थी और आज एक काफिला तैयार कर लिया है। शुरुआत करते हैं उनसे जिन्होंने सामान्य व्यक्ति के तौर पर शुरू किया था, लेकिन काम असामान्य किए हैं। साधारण जिंदगी जी है, लेकिन काम असाधारण किए हैं। और पीपल्स पद्मा में उनका नाम अब इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गया है। उसका कारण ये है कि उन्होंने तब वो कर दिखाया जब लोग कहते थे क्या ही होगा, जब लोग ये पूछते थे कौन आएगा, जब लोग ये पूछते थे तुम कर पाओगे, न रुके, न थके, न अटके।
अगर हुआ तो सिर्फ डटे रहे। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर सोमा घोष से, इनकी आवाज़ पहचान है और उससे ज़्यादा इन्होंने अपनी पहचान में जिस तरह से अपने आप को ढाला है। सोमा दी, एक ही सवाल, जिंदगी कैसे बदल गई पद्मश्री लेकर? अद्भुत बदल गई। मुझे पहले नहीं मालूम था कि इस अवार्ड की इतनी वैल्यू है। लोगों की देखने की नज़रिया ही बदल जाती है पद्म अवार्ड मिलने से। मैंने मिलने के बाद बहुत काम किया, निरंतर, और करती जा रही। सोमा दी, आपसे तो मैं सुर के अलावा, स्वर के अलावा किसी और भाषा में बात ही नहीं करना चाहती हूँ। बिल्कुल, मैं बनारस से हूँ और हमारे बनारस की लाडला सांसद माननीय मोदी जी के लिए 2 लाइन पेश करना चाहूँगी। माँ भारती का लाल इरादा अखंड, 56 का सीना है हौसला बुलंद, छूटे ख्वाब न दिखाए, जो कहे उससे वो करके दिखाए, चाँद पे जाके तिरंगा लहराए, अपना मोदी जी। थैंक यू सो मच। आप भी बोलिए हमारे साथ, अपना मोदी जी, अपना मोदी जी, अपना मोदी जी। अच्छा, आपके सांसद हैं इसलिए तो प्रशंसा नहीं कर रही हैं, वाराणसी से आती हैं, ठीक है अपने सांसद की बात कर ले। नेचुरली मैं जन्मी पली हूँ बनारस में, और बनारस को लोग जानते थे इतनी गंदगी है, वहाँ पर गोबर पड़ा रहता है तो वहाँ पर लोग पान खा के वहाँ पर फेंक देते हैं। कभी बनारस में स्वच्छता होगी ये तो हमने कल्पना ही नहीं किया था। आज हम जब देखते हैं बनारस में अगर एक कचरा गिरा रहता है तो लोग उसको उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये परिवर्तन हमारे सोच, क्योंकि भारत अगर स्वच्छ है ना, उससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम स्वच्छ है तो हम स्वस्थ भी है। बहुत बड़ी बात कह रही है, लेकिन जब स्वस्थ या स्वास्थ्य की बात आती है तो नीलेश मंडलेवाला जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि हम जब सेहत की बात करते हैं, दशकों पहले जब आपने शुरू किया था अपने पिता की हालत को देखकर डोनेट करना होगा अपना ऑर्गन, कैसे शुरू हुआ था और पद्मश्री से कैसे बदल गई जिंदगी? मेरे पिता की पीड़ा मुझे पद्मश्री की सफ़र तक ले गई। 97 में जब मेरे पिता की किडनी खराब हुई और 2004 में मेरे पिता का डायलिसिस शुरू हुआ, हमने भी हमारी एक किडनी हमारे पिताजी को देने का कहा कि जिससे उसका ट्रांसप्लांट हो सके। उन्होंने मना किया। उनका डायलिसिस शुरू हुआ तो मैं डायलिसिस करवाने के लिए जाता था तो मैं देखता था कि बहुत कम उम्र के लोग भी डायलिसिस करवा रहे थे, और डायलिसिस की पीड़ा तो हमने भी महसूस कर रहे थे, क्योंकि उसको लाइफ मिलती है लेकिन वो क्वांटिटी लाइफ होती है, क्वालिटी लाइफ नहीं होती है। और यदि परिवार में से कोई किडनी का दान नहीं कर सकता है तो क्या ऐसे मरीज को लाइफ टाइम डायलिसिस से अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा? ये थॉट मुझे 2004 में वो डायलिसिस के वेटिंग रूम में आया, और 2005 में हमने सूरत से अंगदान जीवनदान की मूवमेंट की शुरुआत की। लेकिन पद्मश्री के बाद जिंदगी कैसे बदली? वड़ा प्रधान ने बहुत बड़ा काम कर दिया। ये सम्मान तो मिला, लेकिन ये सम्मान से हमारी जिम्मेवारी और बड़ी है, क्योंकि आज हमारे देश में हर साल लाखों लोगों की मौत समय सरंग न मिलने की वजह से हो रही है। मैं मानता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी वड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई ने जो 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना हमें देशवासियों को दिखाई है, उसके अंदर हमारी संस्था डोनेट लाइफ भी अपना योगदान देना चाहती है। जब 2047 में हमारा देश शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तभी हमारे देश में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अंग न मिलने की वजह से नहीं होगी। ये मिशन लेके हम लोग चल रहे हैं, और उसीलिए हम लोग यूथ को तैयार कर रहे हैं कि ये मिशन को यूथ आगे लेके चले, क्योंकि यूथ इज़ अ पावर। यूथ की पावर तो आज हम लोग देख भी रहे हैं ना, इंस्टाग्राम से लेकर हर एक जगह पर। लेकिन डॉक्टर गुरविंदर सिंह जी, बाबा जी आपको प्यार से सब कहते हैं, तो ये मुझे बताइए कि जब हम युवाओं की बात कर रहे हैं और जब आपकी पीढ़ी की बात कर रहे हैं, इन दोनों में सामंजस्य बैठाना और पद्मश्री से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? लगभग 20 साल से
जो सेवा को हमारा सिर्फ सिरसा जिला देख रहा था, पद्मश्री से एक उसको पहचान मिली। जैसे मैं भी वही बात कहने लगा था जो सर ने कही भी, पद्मश्री एक सम्मान है, उसके साथ साथ यह एक जिम्मेवारी भी है आपकी। जैसे मैं मेरे संस्था की बात करूं, भाई कन्हैया आश्रम है, स्कूल है, जिसमें 400 लोग मंदबुद्धि बच्चे बुजुर्ग सभी रह रहे हैं। पहले पद्मश्री से पहले ये होता था कि चल कोई बात नहीं, जैसा है ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत अगर कमी है तो कोई बात नहीं। लेकिन पद्मश्री के बाद जिम्मेवारी इतनी बढ़ जाती है भी, आपको एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। 400 बच्चे हैं, हमारा एक स्कूल है, उसमें टोटली फ्री पढ़ रहे हैं। एक एक बच्चे पे हमें निगाह रखनी पड़ती है। आप एक ब्रांड बन जाते हैं, आप एक ISI जैसे कंपनी बन गई, प्रोडक्ट बन गया, तो पद्मश्री मिलने से आपकी जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हाँ, जो एक पहचान है, आज मैं अगर 50 साल भी सेवा करता रहता या परमात्मा मेरे से सेवा लेता तो मैं यहाँ नहीं होता। अगर मैं यहाँ हूँ और यहाँ कहीं भी ऐसे प्रोग्राम में जाता हूँ, उसके लिए तो एक पद्मश्री ही है जिसने एक पहचान दी। गुरविंदर सिंह जी, दुनिया में युवा हो, हर उम्र का आदमी परेशान बहुत है, बहुत ही परेशान है। उनकी परेशानियों के लिए आप क्या कहेंगे? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है जो ये ना कहे कि मेरी जिंदगी में दुख नहीं है। सबको लगता है दुख का पहाड़ उन्हीं के सर पर है। उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं गुरविंदर जी, अगर सच्चाई बताऊं, हम अपने दुखों से परेशान नहीं हैं, हम दूसरों के सुखों से परेशान हैं। एक हमारे देश में कंपटीशन लगा हुआ है भी, भाई उसके पास मर्सिडीज आ गई तो मेरे पास क्यों नहीं आई। लेकिन ये एक मजाक की बात है। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को कहना चाहूँगा, मैं दावा करता हूँ भी आप एक महीने में एक दिन के लिए अपने परिवार के साथ किसी भी ऐसे आश्रम में 2 घंटे 4 घंटे लगा के आएं, मैं गारंटी करता हूँ आपको कोई दुख नहीं होगा। आपको पता लगेगा भी परमात्मा ने, भगवान ने आपको क्या दिया है। एक स्वस्थ शरीर, और जिनके पास वो शरीर ही नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई बेड पे ही है, उनको जब हम महीने में एक बार भी देखेंगे ना, तो हमें ये एक संतुष्टि मिलेगी भी हम बहुत बेटर हैं, हम बहुत बढ़िया हैं। तो अपने आप आपको कोई दुख भी नहीं होगा, कोई परेशानी भी नहीं होगी। हमें लगता है यहाँ बैठे हर एक आदमी को सिर्फ इस बात के लिए ताली बजानी चाहिए कि उन्होंने यहाँ पर इस मंच पर बैठकर ये साफ कर दिया है कि कम से कम इतिहास लिखने के लिए किसी भी कलम की ज़रूरत नहीं है, वो खुद इतिहास बन चुके हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों की जब सुमधि बात करते हैं तो आप क्योंकि बनारस घराना से आती हैं, ऐसा शहर जहाँ पर बाबा विश्वनाथ को ही लोग जाके आशीर्वाद देते हैं, सुखी रहा बाबा, लोग आशीर्वाद लेने जाते हैं और काशी के लोग उन्हें ही आशीर्वाद दे जाते हैं। आप बिस्मिल्लाह खान के साथ उनकी पुत्री के तौर पर रही हैं, हमेशा उनसे इतना कुछ सीखा है, भगवान शिव के तो दर्शन भी किए हैं उन्होंने। लेकिन आपको भगवान किस में दिखता है और क्यों? मुझे सुर में भगवान दिखता है। सुर महाराज है। हम लोग जानते नहीं कि संगीत क्या है। आप देखिए, जिन्होंने संगीत में रहे उन्हें ईश्वर दर्शन हुआ है। मीराबाई, कबीर, सूरदास, पूरा हरिदास, तानसेन, ये पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिनको गाना नहीं आता है वो भी खाली सा में ओंकार करे, सांस को भर के नाभि के नीचे तक ले और फिर धीरे धीरे उसको ओंकार के ले, तो आप देखेंगे कि उसकी क्या ताकत है। आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी और सुर की साधना से ईश्वर दर्शन अनिवार्य है। क्योंकि बाबा भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब को तो पता ही नहीं था शिव क्या है। वो गंगा जी नहाकर बालाजी के मंदिर में सवेरे 4 बजे जाते थे, शहनाई बजाते थे। ये उन्होंने खुद कहा है मुझे। तो खुशबू आई अचानक, और वो उस दिन गए थे कि कल से वो नहीं आएंगे क्योंकि घर में सब लोग दाने दाने के लिए मोहताज है, खाना नहीं मिल रहा है। तो फिर उन्होंने आँख बंद कर शहनाई बजाने लगे। फिर उन्होंने एक गुलाबी चरण देखा,
फिर वो डर गए, फिर वो आँख बंद करके फिर बजाने लगे। फिर उन्होंने देखा कि हाथ में कमंडल और बाघ छाल लेके कोई खड़ा है, उनके पास हाथ में त्रिशूल भी है। ये उनकी कहने की बात मैं कह रही हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि कल से मत आना और कभी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। ये है सुर की ताकत। मैं जितने भी, आपने भी प्रश्न किया था ना कि लोग इतने दुखी है, इतने परेशान, आज के जो यंग जनरेशन है ना, जिसमें आप देखिए 80% बच्चे परेशान है, डिप्रेशन, एज ऑफ 37-35, शुगर, किडनी फेल, हार्ट अटैक हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे भारत जाना जाता है संगीत के लिए, क्योंकि सब पूरा क्रिएशन से पहले ओंकार था। इसको थोड़ा अगर लोग समझ लेना, ये मेरी बात नहीं, ये इतिहास बता के गया है। आपको लगता है संगीत का फॉर्म बदल रहा है? आप बताना चाहेंगी या किसी से यहाँ पे ओम उच्चारण करके सिखाना चाहेंगी अभी हमें? हाँ, मैं एक ओंकार बताऊंगी कि ओंकार का क्या प्रोसेस है। सांस भर के लीजिए और नाभि के नीचे तक लीजिए, जहाँ पर मूलाधार चक्र है। हो, और अ नहीं, हा, हल्का हा बोलिएगा। ये अगर आप 21 बार सवेरे कीजिए, आप देखिए आपका कोई अल्जाइमा, ब्रेन का कोई रोग होगा ही नहीं। दिस इज माई एक्सपीरियंस। एक बात तुरंत याद हो जाएगी। ये करके देखिए और अपने बच्चों को भी कहिए, जहाँ भी हो इस ओंकार की साधना करने के लिए बोलिए। और गाना सुनने के लिए, जो अच्छे गाना, जो पहले लोग अच्छे डिफाइन अच्छा इन बुरा गाना और नॉट सो अच्छा गाना। बुरा गाना और अच्छा गाना के गाना जो हृदय को टच करे वो अच्छा गाना है, कोई डेफिनेशन नहीं है। जो आपके दिल को छूले, हाँ ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत। डॉक्टर सोमा घोष पहली वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संसद में भी गाना गाया है। कौन सा गाना गाया था और क्या सबसे अच्छा फीडबैक आया था? मैंने तो वहां पर रागों को गाया था। हाँ। और कजरी गाई थी। मिर्जापुर कैले गुलजार हो, कचौड़ी गली सोन कैले बलमो। मिर्जापुर कैले गुलजार हो, कचौड़ी गली सोन कैले बलमो। ये जो धुन है ना, ये है बाबा की प्रिय कजरी था। ये डा 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 ना डा 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 डा। इसको हम लोग गाए बजाए थे दोनों मिलके। लेकिन नीलेश जी, हम लोग गाने बजाने की बात तो कर लेते हैं, लेकिन हम ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर किसी का ऑर्गन फेलियर हो रहा है, अगर कोई तकलीफ आ रही है, तो करें क्या, जाएं कहाँ? और जो लोग डोनेट करना चाहते हैं अपना ऑर्गन, वो क्या करें? जिसको भी ऑर्गन की ज़रूरत होती है, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत जिसको होती है, उनको जो अस्पताल में देश में ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, वो अस्पताल में जाके उसके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करनी होती है। किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े, इंटेस्टाइन, हैंड्स, जो भी ऑर्गन्स है, डॉक्टर्स उनके इवेल्यूट करेंगे, अलग अलग रिपोर्ट कराएंगे और फिर उनका नाम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होगी और वो अस्पताल उनका नाम सोटो, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, और नोटो, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड करवाएगा। सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ किस बात की आती? क्योंकि मैं बंगाल और बाकी सारे इलाकों में देखती हूँ, किडनी पेशेंट को लेकर जाते हैं अंदर, किडनी चोरी हो जाती है और फिर पेशेंट परेशान बाहर आते हैं, पता भी नहीं लगता उनको कि उनकी किडनी चोरी हो गई है। डोनेशन और ऑर्गन चोरी दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं ना? ये दोनों विषय अलग है। जो कैडेवरिक ऑर्गन डोनेशन जितना भी बढ़ेगा, क्योंकि आज ऑर्गन की रिक्वायरमेंट इसीलिए ज़्यादा होती है कि डिमांड और सप्लाई में गैप बहुत कम है। हमारे देश में ऑर्गन डोनेशंस के बारे में लोगों को अंगदान के प्रति अज्ञानता है, डर है, धार्मिक गैर मान्यता है।
उसके लिए लोग आगे नहीं आते हैं। हम लोग यही विषय को आगे लेके चल रहे हैं कि जिसकी वजह से देश में ऑर्गन डोनेशंस के प्रति जागरूकता हो, और जब भी कोई व्यक्ति ब्रेन डेड हो तो उनके परिवारजन उनके ऑर्गन्स के डोनेशंस करवा के हमारे देश में जो हर साल लाखों लोगों की मौत समय सरंग न मिलने की वजह से हो रही है, उनको नया जीवन देने के लिए आगे आए। और हमारे देश के यशस्वी वड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई भी बार बार मन की बात कार्यक्रम में भी देशवासियों को अंगदान का महत्व समझा रहे हैं। इसका अंतर आता है, अंतर पड़ता है इससे? जरूर पड़ता है, क्योंकि जब ये देश के वड़ा प्रधान ये विषय को लेके बात करते हैं तो लोगों की मानसिकता भी बदलती है। देश में संतगण भी इसके बारे में बात करें तो लोगों की मानसिकता बदलती है। हर एक क्षेत्र के लोग जो सामाजिक में आगे है, स्पोर्ट्स में आगे है, वो लोग भी अंगदान जीवनदान का संदेश फैलाएंगे तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और आने वाले सालों में हमारा देश जो वसुदेव कुटुंबकम की भावना वाला जो हमारा देश है, जैसे नरेंद्र भाई ने कोरोना के समय में पूरे विश्व को वैक्सीन दी थी, उसी तरह से 2047 तक हमारा देश से हमारे देश के लोगों को तो फायदा रहेगा, लेकिन विदेश के लोगों को भी ऑर्गन मिल पाएगा। बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन गुरविंदर सिंह जी, जब हम बात कर रहे हैं भाई कन्हैया मानव सेवा की, इसका नाम ये क्यों पड़ा, किस तरह से कार्यरत हैं और किस तरह से स्पेशल बच्चों की जिंदगी सुधार रहे हैं? चुनौतियां क्या हैं आपकी सबसे बड़ी, ये भी बताइएगा। चुनौतियां क्या हैं सबसे बड़ी, ये भी बताइएगा। 97 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी और बाजू टांग काफ़ी फ्रैक्चर थे। तो मेरे को सिरसा से लुधियाना डीएमसी में एक जीप के अंदर ले जाया गया। तो वहाँ जाके डॉक्टर्स का ये कहना था भी ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट है, इसको आप जीप में लेके आई हैं तो उल्टा नुकसान हुआ है इसका। लेकिन वहाँ मैं 4 महीने रहा तो एक एनजीओ था वहाँ पे, आज भी है, उसका नाम है दूध सेवा समिति। वो सारे मेडिकल कॉलेज में बेड टू बेड दूध, दातुन और ब्रेड ये वो सर्विस देते हैं बेड टू बेड। जब 4 महीने वहाँ रहा मुझे लगा भी असली सेवा यह है जो ज़रूरतमंद को मिल रही है। वैसे हमारे मतलब सड़क के ऊपर लंगर लगा लेते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसी से प्रेरणा मिली और एक रास्ता बना, परमात्मा ने एक नया रास्ता दिखाया। और 1 जनवरी 2005 को मेरे कुछ दोस्तों को मैंने अपनी उसी घटना के बारे में बताया, तो सिरसा सिविल हॉस्पिटल में दूध सिर्फ पेशेंट को देने से ही इस संस्था की शुरुआत हुई। और इसके बाद जब 3-4 महीने 6 महीने निकल गए तो ऐसा लगा भी अब हमें रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। तो जो आपने पूछा भी भाई कन्हैया नाम क्यों, ये जब भी पंजाब में या अनंतपुर साहिब में जब गुरु गोबिंद सिंह और मुग़ल फौज इनकी आपस में जब लड़ाई चल रही थी, तो जैसे आज वॉलंटियर होते हैं उसी तरह उस वक़्त अपनी अपनी फौज के वॉलंटियर होते थे, उनके पास सफ़ेद झंडा होता था और वो पानी पिलाते थे सिर्फ जो भी घायल है या कोई भी है। तो भाई कन्हैया जी सिख फौज के एक वॉलंटियर थे और उनको जब वो पानी पिला रहे थे तो उनके आगे मुग़ल सैनिक भी आ गए, तो उनको भी उन्होंने पानी पिलाया। जब उनको पानी पिलाया तो सैनिक जो थे गुरु साहिब की तरफ से जो लड़ रही थी सिख फौज, उन्होंने कंप्लेंट की भी गुरुजी हम तो उनको मारते हैं और ये हमारा ही बंदा है, ये उनको पानी पिला रहा है। तो गुरुजी ने भी बुलाया भी बताओ भी ये आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है, शिकायत है। तो भाई कन्हैया जी ने जवाब दिया, ना को बैरी नहीं बगाना सगल संग हमको बने आई। मेरे लिए कोई बेगाना नहीं है, जो भी इंसान है उसमें मुझे आपका ही रूप दिखता है और मैं उसको कहीं भी उसको मिस नहीं कर सकता। तो गुरु साहिब ने भी उसको फिर एक उसके जवाब पे एक मल्लम पट्टी दी और उनको ये आदेश दिया भी आज के बाद पानी भी पिलाओ और कोई छोटा मोटा किसी के घाव है
तो उसके ऊपर वो अब ड्रेसिंग भी कर सकते हैं, पट्टी भी आप कर दिया करो। तो उसके बाद उन्होंने सारी ज़िंदगी, लड़ाई तो ख़त्म हो गई, सारी ज़िंदगी अपनी सेवा में ही गुजारी। तो जब संस्था का एक नाम रखने का टाइम आया तो हमारे में से एक चाचा जी थे जिनको हम प्यार से बोलते थे, हरबंस लाल जिंदल जी, उन्होंने कहा भी अगर मानवता की सेवा का रोल मॉडल अगर हमने देखना है तो इससे बड़ा कोई रोल मॉडल नहीं है, हमें उन्हीं के नाम पे ही इस संस्था का नाम रखना चाहिए। जी डॉक्टर सोमा घोष, मेरा आपसे ये सवाल कि एक वाराणसी यानी बनारस घराना को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, और क्या आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई तो क्या बात हुई? बिल्कुल, मुझे 2015 में वो बुलाए थे प्रधानमंत्री हाउस में, और मैंने पहली बार एक ऐसा शख्सियत देखा कि जो लोगों को सुनते हैं। मैं तो उस समय पद्मश्री भी नहीं थी, और उन्होंने 40 मिनट तक मुझे सुनते रहे, क्योंकि मैंने हमारे देश के जो लुप्त होते हुए वाद्य है ना, एंडेंजर्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडिया, जैसे आपका तबला तरंग, जल तरंग, रुद्र वीणा, विचित्र वीणा, ये सब बजाने वाले अभी तरबूज खरबूज बेच रहे हैं। तो मैंने 2000, सच बता रही हूँ आपको कि ये हाल है। तो आई टुक फर्स्ट इनिशिएटिव टू सेव द एंडेंजर्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडिया थ्रू माई NGO मधुमोर्चना। तो उसमें मैंने कलाम साहब को खाली एक टेलीफोन किया था कि आप आएंगे, बोले मैं आ गया। वो आए थे एज अ चीफ गेस्ट मेरे प्रोग्राम में। तो इससे पूरा अवगत थे मोदी जी। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए ना कैसे आप इन सबको कैसे कहाँ कैसे पहुँचते। सब सुने, लेकिन लोग बोलना चाहते हैं, कोई सुनना नहीं चाहते। मैंने पहले किसी को देखा कि वो मानी 5 मिनट का इंटरव्यू 40 मिनट चला गया, मैंने मीटिंग। तो वो सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा आपको पता है जब मैं अहमदाबाद में था, जब मैं चीफ मिनिस्टर था, तो वहाँ पर मेरे पड़ोस में एक आदमी थे जो कि टूटे हुए इंस्ट्रूमेंट्स को ऐसे जोड़ते थे, एकदम नया बना देते थे। और जब मैं प्रधानमंत्री बना तो मैं उनको खोजने गया कि उन्हें हम पद्मश्री देंगे, लेकिन वो तब तक गुजर गए थे। मैंने मुझे इतना टच किया। फिर उन्होंने जब जा रही थी ना, तब उन्होंने पूछा आपको पद्मश्री मिला क्या? तो मैंने कहा क्योंकि देखिए जब क्लासिकल सिंगरों को, आर्टिस्ट को ना बुढ़ापे में 90 साल में 70 साल में मिलता है, क्या करेंगे? अब आपका ये प्रश्न था ना कि पद्मश्री मिलके क्या महसूस हुआ, कि शरीर की ताकत डबल हो जाती है, इतनी जिम्मेदारी महसूस होती है कि देश हमारा है, हम देश के लिए क्या करें, ये फीलिंग आती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। तो बुढ़ापे में सबको, स्पोर्ट्समैन, फिल्म सिंगर, सबको बहुत जवानी में मिलता है, खाली शास्त्रीय कलाकार को। ये मेरे अंदर बहुत दुख था कि हमने संसद में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब की, दैट वाज माय इनिशिएटिव कि मैं उन्होंने कहा था कि मुझे संसद लेके चलो, तो मैं लेके गई थी, हमें क्यों नहीं मिलेगा? तो उन्होंने पूछा आपको पद्मश्री मिला है क्या? तो मैंने कहा मिला नहीं और मैं चाहती भी नहीं हूँ अभी। तो उन्होंने हंस के कहा इस साल आपको न्याय होगा। तो 2016 में मुझे मिल गया पद्मश्री। तो इट्स वेरी टचिंग उनका जो ये, जैसा कि हमने कहा था कि शुरुआत में कि ये साधारण लोगों की असाधारण कहानियां हैं, लेकिन अब वो एक अलग पद और कद पर हैं। वो कहते हैं ना कि माना कि सादगी का दौर नहीं है, पर सादगी से अच्छा कुछ और नहीं है। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। A round of applause, ladies and gentlemen, for our incredible Padma awardees who are reminding us today of the raw power of grassroots transformation. What amazing stories. Thank you, all three of you, for joining us, and thank you, Manogya, for that conversation. Right. Moving forward, our next session bridges the gap between where India comes from and where it is headed. A nation cannot truly innovate or rise on a global scale if it remains unanchored from its own history. To explore this convergence of identity and advancement, please put your hands together for our next panelists. Member of the Prime Minister's Economic Advisory Council, Sanjeev Sanyal, and one of India's most celebrated authors, Amish Tripathi. And anchoring this fascinating conversation is my colleague, Shiva Roor.
who are just walking in as we speak. There they are. A round of applause, please, for our next panelists, Sanjeev Sanyal, Amish Tripathi, who are in conversation with Shivarur. Is there a specific place we are supposed to sit? No, sit wherever. विरासत से विकास तक 12 years of the Modi government, and one aspect of what we've seen is how much more of India's civilization is there in our daily life. And today I have the privilege of moderating two men who I've had the privilege of moderating before. They're friends of mine as well, who've probably done more than most to make Indians look backwards in order to think forwards. And this is very important. One is an economist who you all recognize, who somehow spends as much time talking about ancient ports, sailing in boats across the seas, lost rivers, forgotten empires, as he does about GDP and public policy. The other is a banker turned author, one of India's best, who convinced millions of Indians that Shiva wasn't just a god in a temple, but a living civilizational idea. Now, between them, they've helped popularize the notion, apart from their main jobs, that India's future may actually be easier to understand if we understand India's past, and why it's so critical never to forget what came before us. So it's my pleasure to welcome Sanjeev Sanyal and Amish Tripathi on stage here at the Ignite Future India Summit. I'm going to start off, first of all, because these are two very busy men who have incredibly interesting side projects, which I'm going to get into in just a bit. But my first question, and Sanjeev, I'll kick it off with you. What, in your view, is the most visible sign in the last 12 years of India's civilizational identity being present in our public life, in what we see around us? So the important thing is that I think that has changed in the last 12 years under the Honorable Prime Minister Modi's leadership is the fact that we have begun to view our history in a fundamentally different way to inform our present. So somehow in the past, we thought of our history as something to be fearful of. It was basically a series of conquests and, okay, we survived, but then the world was something to fear. And that, by the way, filtered through to the way our foreign policy was, the way we, for example, dealt with the world in terms of import substitution and so on. So what happens as a result of this is that it is a very defensive view of the world. The switch, on the other hand, to this other view of history is that, no, we were a much more adventurous, expansionist people. We explored the world. We went to far-off places. We explored. We were adventurous. We took risks. This is a world where our ancient temples were financing these great voyages. They were financing industrial expansion. And so this is a very different worldview. So this is a worldview of risk-taking. And that then filters through, there's a direct link between that and, for example, helping startups. The idea of creative destruction, which is there in the Insolvency and Bankruptcy Code. Directly through to thinking of Make in India, but not in the old import substitution way, but in terms of taking on the world. So it's a fundamentally different sort of switch in our head that Prime Minister Modi has been able to turn on. Sanjeev knows a thing or two about risk-taking because he built an entire ancient boat from scratch and then actually sailed it across the Arabian Sea to Oman. So he practices what he preaches. Amish, same question to you. 12 years, this is a world you live in. It's already something that is familiar to you. You're seeing a lot more of it now, in daily life, in public policy, in normal public conversations as well. What would you say is the most important reflection of that civilizational kind of awareness and awakening in our public life that has changed in the last decade?
I think in some ways it's become so obvious that you don't even need to speak about it. I wrote my first book in 2010. Yeah. And the first time I was invited to a Lit Fest, I think it was 2011, 2012, I'd gone up on stage and I'd said, I'm a very proud Hindu. And yes, the people on stage with me and the audience, just they almost kind of froze up. And this was in a land that has been Hindu for thousands of years. That doesn't mean that we are against any other religion or any other way of life. Of course not. We've always been welcoming. But the fact that that was the state of at least the elite conversations in India for that long is something that tells us how far we had gone from our roots. I agree with Sanjeev when he says that we just survived. We weren't thriving. And that was because actually we weren't connected to our roots. A tree, if the roots start drying, it may look like the tree is still alive, but over time, the nutrition dies out. What's happening now is that the roots are getting stronger. And over time, that just becomes more and more and more obvious. It informs us in most of the conversations that we're having. The fact that we're talking about what kind of urban governance we should have, how the monsoon system should be managed, how our trading should be, the fact that we are much more Indian Ocean focused than quote-unquote Northwest invader focused. We're just getting more and more rooted, and that is a very good thing. I'm not saying we need to swing to the other extreme and not allow noble thoughts to come from all parts of the world. Our ancestors never had that attitude, yeah? Ano Bhadra, Kruto, Yattu, Vishwata. Let all noble thoughts come from all corners of the world. But we must be rooted in our own traditions, in our own land first. That's most critical. Sanjeev, you said something that struck me about looking back at the risk-taking impulses of our ancestors. And that's a very interesting thing that you've said. Are you suggesting that India as we know it now has over the centuries and decades perhaps kind of lost that appetite for risk, and that's what this civilizational awakening is about? Being outgoing, going out there. Absolutely. In fact, this was deliberately inculcated into us. So we were told that from ancient times, Indians were scared of crossing the oceans. Absolutely not true. We were the greatest explorers of the ancient world. I mean, it's not for nothing that the largest Hindu temple in the world is in Cambodia, not in India. How did it get there? Somebody must have gone there. How did he get there? Only by sailing. So there is a huge amount of evidence of this expansionary kind of civilizational zest that we have once had. And instead we were sort of put into us that, yes, Indians did some spiritual thing, maybe they were doing meditation throughout those thousands of years, and basically, we had no agency. People would come, invade, provide us with, new recipes for biryani or built a few nice buildings, but basically we had no agency in this whole thing, and we were passively accepting all of this. And so systematically our history was changed in order to insert this idea. And we imbibed it to such an extent that we ourselves, even those, by the way, who may agree with me otherwise, have imbibed it to such an extent, they find it quite difficult when I tell people that, in fact, Indians were quite expansionist, culturally expansionist, even militarily expansionist. I mean, there's lots of evidence of Indian naval activity in other parts of the world. There were Indian mercenaries everywhere in the world, particularly in the Middle East, and so on and so forth. So, this idea of this country and people who somehow have no agency and sitting around waiting for some foreigner to invade us and give us civilization. And this was done so systematically. That is what is interesting. It's not like we ended up here by chance. The British even told us basically that, look, even the little bit of civilization you're proud of, guess what? They are these white people from Central Asia who came and told you them this, and they are called the Aryans. And all we are doing by invading and taking over is giving you a software update. Why are you complaining? So this has been done very systematically to us. Now, of course, every colonizing power did this to whoever they colonized.
Our problem was that for 70 odd years after independence, we ourselves perpetuated it. So much so that it's only very recently that it's been finally peeled out of our NCERT books, out of our national conversations and so on. And in fact, I continuously have to push back against these kinds of ideas that, that we were somehow naturally a pacifist and sort of defensive people. How did it happen? How did we get to this point in your view in that case, Amish? You know, from being this very risk-taking, like Sanjeev says, an expansionist civilization, not a pacifist, sort of defensive, sitting around and waiting for things to happen as he described it. In your view, because you know, you've looked at how things have changed over the centuries, written about it in books as well. How do you think we got here? I think this needs deeper analysis by scholars, but I have a theory. Look, there was this phase of history over the last 1500, 2000 years. The invaders who came here, the Turks, Turco-Mongols, Europeans, and the Turks were essentially from the steppelands of Asia, right? Which went from Eastern Europe all the way to Manchuria in Eastern China, whatever, 8,000, 10,000 miles. They went to every other corner of the world. Everywhere where they went, practically every ancient culture died out. Some of them fought for 100 years, some for 200 years, max maybe 400, 500. They were all dead, right? We're the only ones who are still here after them having ruled us, the foreign invaders. And it must be made clear, they were foreigners. What we call the Delhi Sultans and Mughals, they weren't Indian Muslims. They were foreigners, they were Turks. Indian Muslims were as oppressed as Indian Hindus. Ranveer Singh is a great actor, but trust me, Alauddin Khilji didn't look like Ranveer Singh. To us, he would have looked, you know, he had more like Mongoloid Deng features. Xiaoping. Yeah, exactly. Now I'm a diplomat, so I won't take a name, but yeah, you get the idea. Yeah. The point is, we suffered this violence for what, 1300 years, right? Most other cultures are dead. We're still around. Now, what happens when a culture dies out? The computer just gets reformatted, right? The memory is reformatted. You just start from scratch. You know that if we go to, like for example, I'd gone to Greece. I'd seen a destroyed temple of Athena. I'm not Hellenic. It's the ancient pagan Greek culture. I felt sad out there. The local Greeks who came out there didn't feel sad. I'd gone to Parthenon, which was in Rome, which was actually an ancient pagan Roman temple. I felt a sense of connect, but the local Italians didn't, right? Because they've been reformatted. We haven't been reformatted. So the memories of the violence, oppression, invasions of 1300 years are still there, right? And if you go through our history, we almost had a reconquista 3 times actually. You know, once at the end of the initial Arab thing before the main Turkic invasion of the Ghoris came. Then by the end of the Delhi Sultanate, before the Mughals came, parts of India had been reconquered already, right? Not just Vijayanagar, various other parts. Then again the Mughals came and we lost once again. Then the Marathas had reconquered almost completely. Then the British came. So we had done a reconquista 3 times. We'd come close to becoming free and then we lost once again. The formatting happens. And we did not get formatted. The memory of that loss is with us. So then after 1947, when we became free once again, was it that we'd become too, the trauma was still there, right? It's possible. That's one theory. That maybe the trauma just made us risk averse. But now it's been 75 years of peace. Countries have tried to attack us. Countries have tried to divide us. Nothing like that has happened. In fact, we've divided those countries that attacked us. Yeah. We are strong once again. Let's revive our ancient, robust, strong, outgoing culture that we used to have. Is there absolutely. Is there an era, Sanjeev, in your view? And you look at such a large sweep of India's history. Is there an era, a period, a character from history that you believe is unfairly neglected
and deserves our attention. And I know this is a tough question for someone like you because there must be so many. There are lots. Yeah, but name a few of them and why we need to know more about them. So of course everybody knows about the likes of Shivaji. Yeah. Heroic character, fights against oppression. But why not Samudragupta, for example? Samudragupta is an extraordinary character. He comes to the throne at a very difficult time when you have all these Sakas and Huns attacking from the west. And he, of course, he goes all the way down to South India, make sure that the peninsular India is well in his control. And then he basically takes on these Sakas. And then for the following 4 generations, the Guptas really push back the Huns and the Sakas. Not a trivial thing to do. And so that is an extraordinary period in history. And yet we only hear about him in passing. Hardly. Yeah. And look at again, going back to the colonial way in which he is kind of boxed in. If you read even textbooks today, you'll hear he was the Napoleon of India. So who named him Napoleon of India? It turns out that the European historians of the 19th century named him Napoleon of India, and Indians took it as some sort of high praise. See, one of our kings has been called Napoleon. But in fact, the British were very, very clever. What they were doing is saying that, look, here is one of your greatest generals, and he was as good as Napoleon, but do remember, we defeated him. Yeah. That is the real messaging. So this continuous subliminal and that just stuck. And that just stuck. So even today you'll read, he was the Napoleon of India, not realizing we are actually being mocked. True. Or Chanakya was the... And it's in our textbooks even now, Yeah, like you It's rightly even in said. our textbooks. Yeah. Or that Chanakya was the Machiavelli of India. Machiavelli managed a state. Chanakya managed 1/5 of humanity. Okay, actually it's just one city that Machiavelli managed. What the hell is the comparison? There's no comparison. No, but this is very important. I want you to expand on this, Amish. The Chanakya-Machiavelli comparison. Expand on that a little bit because most people will go out and say the Machiavelli of politics, etc. to, you know... Not at all, because... To politicians here. Just the scale of Machiavelli, tiny, just a city, right? Whereas Acharya Chanakya managed all of India. The Mauryan Empire... He created that empire, by the way. He created that empire. And the Mauryan Empire was the greatest, the biggest empire in the Indian subcontinent ever, right? And unlike, I've read Machiavelli's works, The Prince, and of course, I've read the Arthashastra as well. Unlike Machiavelli, who, well, you'd think he understands power, but really has no sense of ethics or morality. That's a sense that you get from reading his books. I haven't read any biography of his or something. Reading from his books. But if you read Acharya Chanakya, he will do things which you can say is of doubtful integrity, but the ends are always positive. It's always about what is in the interest, the long-term interest of the people, of the state. It was never selfish about the king gaining more power just for the heck of gaining more power. There was always a purpose to it. And that is a very, very, very big difference. That power is not something you accumulate for selfishness. Power is a responsibility for the good of the people. And it's in terms of, people who are ignored. It's not just in terms of politics or military. There are so many who are ignored. Lalitaditya Muktabira, Lachit Borphukan, so many, Lachit Borphukan. But even in other areas, like in the sciences or the spaces of intellect, Bodhayana is ignored, Pythagoras will be remembered, Shushruta and Charak are ignored, Hippocrates will be remembered. Same in business. We assume that the earliest multinationals, were European, British or Dutch. It'll shock you to know that the earliest multinationals were actually Indian. If there are any Kannadigas here, you should applaud for yourself. At least the earliest multinational I'm aware of is the 500, right? Yeah. From Aihole. 1400, 1500 years ago. We are not taught about this at all. Manigramam from Tamil Nadu. Exactly. No, but we're all brought up to In think all that these areas, we had achievers. that the best case examples of anything you can think of are basically from outside India. They're not from within India. And you've just said that the first multinational was from here in India. Yeah. Multinational guilds. Yeah. Not only that, they were being financed by these temples, which were banks. And we have examples of these contracts between the
temple and the merchant guilds, and the merchant guilds with the artisan guilds. So that you're going to export to Indonesia or some such place, that here is a loan, that loan is to be used to produce whatever, cloth or whatever, then will be exported. And there are clear clauses what happens if the ships sink and all of these kinds of things. Yeah, you know, see, and these would all be recorded in copper plates. You know, like the nonsense we were taught, our ancestors were oral, they didn't write anything. Our ancestors wrote a hell of a lot. It's just we are the unworthy descendants who haven't read what they wrote. You know, this session is feeling like a civilizational fact check that transcends continents and transcends centuries. So I can imagine how long it's going to take to actually reset some of this erroneous software. If I could, you know, extend the metaphor that you use. But Sanjeev, since this is more free flowing, may I just add one minor point? Yeah. Don't be so anti-West that you don't learn the good things about them. I agree. There are many good things from them. We should learn that too. Our ancestors believe that Goddess Saraswati can bless anyone. Learn from whoever she has blessed. Yeah. Sanjeev, the civilizational awakening awareness is very palpable for you know, many of us. In the media we see it. You of course see it in your travels. I'm sure Amish sees it in the thousands of people he interacts with every day here in the country. Is there a case for civilizational, you know, this heritage being in our public policy as a, you know, as something that we need for our economy to grow? Absolutely, because you have to remember that economics and politics is ultimately downstream of culture. If you disturb the overall culture, the economics you learn and or do, and the politics you do will be of that kind, because it's the overall architecture of your mind is set up actually by culture. So this is very, very important thing to remember, because that's why, for example, the same Europeans were there during Roman times. Then for 1,000 years they had the Dark Ages. Then they came back in the Renaissance. What happened? It's the same people. It is the cultural context that changed. The same thing is true of us. For a long, long time, we were the dominant economy in the world, the dominant cultural force in the world. Then we fell apart. And then, after becoming free also, we remained this rather fearful kind of country. It is very recently that we have begun to feel the confidence back. And by the way, we will also grapple with it in the dark to some extent as we begin to find a new equilibrium and a proper confidence. So at some point it may even go too far, become too arrogant as well. So we'll have to find that balance. But the point is, this is an important part of how we think about the world, is derived by cultural and civilizational frameworks. Now, for example, as I just told you, this whole idea of risk-taking. This is until you have a culture that celebrates failure, going out there and doing various things, you won't get great sportsmen. Being a sportsman is an extremely risky profession to choose. You won't get this idea. Very recently you go to an IIT and ask people in the audience, how many of you want to do a startup? Now a lot of them will raise their hands. The cool kids in university campuses today are people who want to do startups. But there is still the old framework, because only good thing to do is to either become a trade union leader or UPSC exams. So, you know, that's a fundamental shift in the way you think about the world, a UPSC exam framework of thinking of the world. And let's go and do a startup or become a writer or do something, break out in some fashion. So that is a civilizational shift. And that is also true again of the way we think about, for example, the huge debate that we now having in the business world about startups. Who should be the titans of industry? We question people if they don't have large R&D budgets. Earlier on, we used to question them if they didn't have large CSR budgets. It's a switch. Yeah. So that is a very different way of thinking about the world, and it shows through into policy. It shows through into the way we respond to the same set of circumstances. And I'll give you the flip side of it, on the other side. Europe, after now 500 odd years of the Renaissance, and the West in general, after 500 years of Renaissance, during that Renaissance, they did amazing things, you know, explored the world. You have to grant it to them. They explored the world. They did all these scientific changes and so on. Now, 100 years ago, they were doing, you know, they were exploring let's say the biology scientists of the West were creating a taxonomy for different kinds of species and so on.
Today, this biology students are trying to do a taxonomy of the different kinds of genders you have. Completely non-serious. And you can see how the tipping point on the other side after 500 years of Renaissance is happening, as their own minds are closing and going into the form but not the essence of expansion of knowledge and risk-taking. Important point. And you know, again, I want to just point out that many of the characters that Sanjeev and Amish have just mentioned in the course of this discussion are people we think we know very well, or eras we know very well, and the both of you have already given us a huge amount to think about. Amish, for instance, and Amish, we've spent many sessions on stage together, and each time I've learned something new about the characters you've written about. Shiva is one of your characters that you wrote about. No, he's the god I worship. God, Mahadev that you wrote about, this country knows. This country always thought they knew everything about. And then people read your books and there were these fascinating new layers to it. So I want to ask you that. Even Samudragupta, some would argue, most people may not know very much about. But Shiva, for instance, is something that is central to life in India. And yet it seems like people don't know enough about even these central characters. So there's a case there as well. That even those we know so much about from our civilization, from our heritage, needs a revisit. I think the way our ancestors, particularly if you read the texts, the plays that our ancestors left behind, it's almost like they never got bored of listening and learning from the messages of our gods and goddesses. And perhaps one thing that we can learn from our ancestors, it's not just about bhakti and worship. That is important, don't get me wrong. And I'm a very, very, very devout Shiva worshipper. And I've said that proudly even when it wasn't fashionable to say so. But you shouldn't stop only there. You need to learn from the messages of our gods and goddesses as well. If you're reading the Mahabharata and only seeing the story and enjoying the beauty of the story, and there's a lot of beauty of the story, if that's all that you're seeing, then you're stuck at the surface level. You need to go deeper. What are the messages? What are the philosophies? What can I apply in my life today? Right? When you look at Lord Shiva and you read more of his stories, you worship him, of course, but read more of his stories, hear more of his stories. For example, the story of Ardhanarishwar, right? Where Lord Shiva and Goddess Parvati merged. Right side is Lord Shiva, left side is Goddess Parvati. And long story short, net, there was a priest called Rishi Bhringi who was a very, very devout Lord Shiva worshipper, as I am, and he said, I'll worship only you, no one else, not even your wife. And to teach him a lesson, Lord Shiva merged with Goddess Parvati, that there's no difference between the masculine and the feminine. Isn't that a beautiful lesson to learn? Now, this is how we must go a lot deeper. Don't just worship. Of course you should, but go deeper. Learn a lot more. Apply it in your life as well. You'll lead a much, much richer life. Is there a figure from our heritage that you have on your sort of list to write about and get into? So many, man. I have so many projects running simultaneously. There's a Sanskrit song that we just released, Tandav Stotram, that had been written by Ravan in honor of Lord Shiva. There's a video game coming out by early 28, proper AAA video game, the first AAA video game on an Indian subject. There's a movie that I was associated with, Krishna Avtaram, that just released. 2 books that I've just finished, which will also come out soon. Listen, I mean, we have at least an 8,000-year history, if not more. We have so much knowledge, so much heritage. Sanjeev and I can spend multiple lifetimes and we'll not cover everything that there is to uncover and learn and appreciate in our great culture. The both of you should think of collaborating on a either fiction or non-fiction at some point of time. You really must, the both of you. Done. Okay, great. Fantastic. We also happen to be dear friends. Round of applause. Sanjeev Sanyal and Amish are going to be collaborating on a project very soon. And I can't wait to see that. And it's happened on the NDTV stage, so you'll have to credit us. Sanjeev, you work closely with Prime Minister Modi. And, if one thing can be said about him, peak detailing. He radiates civilizational awareness,
tributes to our ancestors, and just a kind of acknowledgement of what came before us. What is it like working with him? Does he exude that? Does that infuse his decision making, the way he conducts being a prime minister? As part of his team, how does it work? What's it like? So, I'm asking because we see it from outside. Yeah. What's it like? So I've worked with him now for, first in finance ministry and now directly part of his team over 9.5 years. And these 9 years have seen many difficult phases. Let's say, for example, the COVID phase. So I was part of the core team managing the economy through COVID. These are also we are having, because of oil price spike, difficult times. Now, all of this requires two things. One is you have to take tough decisions. Secondly, very often everybody around you is losing their head, whether it's in the financial markets or all the advice you get from NRI economists in American universities. You'll be getting lots of advice. Keeping your calm and still doing the right thing is not easy to do. Now, somebody like me may give good technocratic advice, but in the end, you have to understand and there are many steps, and some of them will almost certainly go wrong, but the fact of the matter is, he is the one who's ultimately going to take the responsibility for it. Yeah. So if and when things go wrong, so it turned out that the COVID management, and later on people said well done and all that. But while we are doing those things, there's lots of self-doubt. And the only reason you're able to do this is because you have somebody like the Honorable Prime Minister backing you to do this. And this is also true of all I've literally done more than 100 process reforms. Each one of them, when I do it, I'm not 100% sure it's going to work out. And sometimes you need to reiterate a few times before it gets going. Now, unless you have absolute confidence that somebody is going to back you, because do remember, it requires sometimes pushing back against bureaucracy, pushing back against interest groups, sometimes pushing back against judiciary, and so on and so forth. It does require you to have to stick your neck out. You would not do it unless you were not certain that the top political leadership is backing you to take those risks. So you need somebody like him to be there. So, many people have these fantasies that, if only the country was run by technocrats, it'd be so wonderful. No, the technocrats cannot do anything unless there is somebody who will back you up. When the Prime Minister goes abroad, Amish, and we're almost out of time, but I'll squeeze this in. One defining feature of the last 10, 12 years has been that confidence aa gaya, a word that Sanjeev also used. The general sense is people feel nice seeing the Prime Minister out there on the front foot, diaspora, and wearing your Indianness on your sleeve. You interact with a lot of young people. Many of your readers are young people as well. Is that a real confidence that you feel about, reveling in Indianness and your heritage and all these ancestral things that we're talking about, that the Prime Minister insists on talking about in all his public interactions? Is that something that has pervaded the public, in your view? Oh, yeah. There's a lot more confidence than there was in my generation. Sanjeev and I are the same generation. I'm 51, he's just a few years older. And certainly more so than our parents' generation. So our generation, for example, would see racism even when there was no racism, or would be unnecessarily servile at times, against, say, Westerners. The younger generation, I find a lot more confident. Maybe that's why Prime Minister Modi is that popular with them as well, because he speaks with confidence, he speaks with rootedness. Confidence is at the heart of success. Excess confidence is ugly. That should not be there. Pride and arrogance should not be there, but confidence is important. If you don't have confidence, you don't take the first step. And that, I think, credit to the messaging that the Prime Minister has given over the last many years. Credit to the people of India that we have become more and more successful economically, because at the heart of everything is artha. As Chanakya had said, Sukhasya moolam dharma, dharmasya moolam artha. If there is no artha, if you are poor, then everything else starts collapsing.
So many things are coming together. But we must realize that this next 10 years is going to be really difficult. And no one is going to make it easy for us. When America was rising as a superpower, the British Empire was trying everything to trip them up, as were many other European powers. When the UK was rising, there was this phase. I remember Sanjeev and I had spoken about, between 1750s and 1770s, when they were fighting battles all over the world. And that's the time they earned the right to become a superpower. It's the same thing all of us Indians have to remember as well. When we say, oh, they're being unfair to us, this power is hurting us, that power is hurting us, why should they make it easy for us? It's never made easy for anyone. You want to be at the big boys' table, you have to fight your way in. No one just pulls the chair up for you and, aao baitho bhai. No one does that. So, we need to be focused over the next 10, 15 years. This confidence is good. But we must be focused as well. We must realize that most other countries in the world will try to trip us up and not get emotional about it. It's what we would do as well 100 years later to stop another superpower. It's the way the world works, right? And we have to earn our right to get to the big boys' table, which makes it even more important. Last point is that we should not be disunited. That is the biggest mistake we have made very often in our past. We can all have our arguments internally, never pick the side of a foreigner against a fellow Indian. Never do that. Kaurav 100, Pandav 5, Tija aaye to 105. That's the attitude we must have. And I'm going to end with that beautiful point that you just made. But I wanted to squeeze in just one final question to you, Sanjeev, because this is an important one. Young people are asking it. The world, and especially India, feels like we are at a jump-off point now. There's AI, there's the Prime Minister's semiconductor mission, all these exciting things that are going to change our lives completely. You are in the war room that is driving India's growth as well. How important, in your view, finally, is remembering the past, remembering heritage, as we get into these big unknowns that are going to define our future? See, progress is a messy thing. As we climb higher and higher, it becomes more scary as well, because you can see how far down you can fall. And as you're climbing up, you're fighting, of course, there are other countries that don't want you to rise. But even the things you're doing, some of it will go wrong. Whether it's businesses will go wrong, technologies will change, there'll be political shocks, you'll have oil prices spiking, some other things spiking. So all kinds of shocks will happen along the way. So it's not easy. So this has to be a multi-generational effort. Our generation is doing something, this will have to be done by the next and so on. Now, to have a sense of purpose over multiple generations, you need to have a sense of civilizational continuity. Otherwise, why am I doing this? For great-grandkids who I will never meet. So, the importance of this is very important. And again, I'll go back. The West used to have it, but it has lost it. And there will be a price they will pay for losing this sense of civilizational continuity. They too had a great civilization. Western civilization with its roots going back to Greece and Rome and so on is incredible. And they rediscovered it in the Renaissance. That's how they came back. They too went through a rediscovery phase. And you get a sense that we may be coming to the end of that cycle. And meanwhile, the rise of China too has a very strong civilizational sense. Be under no illusion that China is not a civilizational nation, very similar to us in many ways. And so their rise too is that sense of destiny that comes from a sense of having a long history. You've given us a great deal to think about, and I, for one, cannot wait for that collaboration between the both of you, Amish Tripathi and Sanjeev Sanyal. Thank you very much for being here at NDTV. Just that pose deserves a round of applause, ladies and gentlemen. Come on, one more round for Sanjeev Sanyal and Amish Tripathi. Thank you so much. शुक्रिया शिव, संजीव और अमीश इस बेहतरीन चर्चा के लिए.
विरासत और विकास की बातों के बाद अब रुख करते हैं आज के हमारे एक और बड़े पॉलिटिकल डिबेट का। पिछले 12 सालों में बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि देश के जन संवाद यानी राजनीति की भाषा और प्राथमिकताओं में भी आया है। सवाल ये है कि क्या इस बदलते विमर्श ने देश को विकास का नया एजेंडा दिया है या यह हमारे बुनियादी मुद्दों को रीडिफाइन कर रहा है। इसी पर बात करने के लिए मंच पर आमंत्रित हैं देश के दो बेहद प्रखर राजनीतिक चेहरे, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री आलोक शर्मा और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। इस डिबेट को मॉडरेट करेंगी मेरी वरिष्ठ सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल। तालियां रुकनी नहीं चाहिए इनके लिए तो। कितने ऐसे लोग हैं सिर्फ उन्हीं को सुनने आए हैं दोनों को। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। आज सवाल इंडिया का ये है कि ममता बनर्जी के साथ हुई बगावत ने कांग्रेस को मौका दे दिया है और सवाल ये भी है कि मन मुताबिक नतीजे नहीं मिलने पर चुनाव कराने वाली संस्था में दोष निकालना कितना जायज है। मुंबई के सियासी गलियारों से उठी एक सुगबुगाहट ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है और उसके बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बयान दिया उसने कांग्रेस की सियासत को ही डिकोड कर दिया। गहलोत साहब कहते हैं कि कांग्रेस से अलग हुई तमाम क्षेत्रीय पार्टियां वापस आएं, कांग्रेस में अपना विलय करें और पूरे दिल से राहुल गांधी को अपना नेता स्वीकार करें। गौरतलब है पूरे दिल से। लेकिन कांग्रेस के विरोधी पूछ रहे हैं क्यों भाई? जो शरद पवार इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक से टकरा गए, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी शर्तों पर राजनीति की, क्या राजनीतिक मजबूरी के इस दौर में वो राहुल गांधी की लीडरशिप के आगे सरेंडर कर दें? क्या ममता बनर्जी जो बंगाल में अकेले अपने बल पर सबसे लोहा लेती रहीं, वो दिल्ली आकर राहुल गांधी के पीछे खड़ी होंगी? सवाल यह है कि कांग्रेस विपक्ष की एकता चाहती है कि विपक्ष का विलय चाहती है? क्या कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर होते देख खुद को इकलौता विकल्प बनाना चाहती है? क्रोनोलॉजी भी समझिए। कुछ दिन पहले विलय की यही अटकलें ममता बनर्जी की टीएमसी को लेकर लगाई जा रही थी। उसके बाद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक जो भी पार्टियां कांग्रेस से निकली हैं उन्हें कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे तले अपनी शुरुआत करनी चाहिए। और अब अशोक गहलोत संजय राउत के बयान को सही ठहरा रहे हैं। लेकिन एक तरफ कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को अपने झंडे के नीचे आने का आमंत्रण दे रही है तो दूसरी तरफ खुद कांग्रेस आज देश की सबसे बड़ी अदालत बनी है। लेकिन ये भी पूछ लेते हैं क्योंकि आज मेरे साथ दो कद्दावर नेता जुड़ रहे हैं। एक और सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। और आलोक शर्मा जी, कांग्रेस से राष्ट्रीय प्रवक्ता। सबसे पहला सवाल आलोक जी आप ही से कर लेते हैं। सब कुछ ठीक है तो फिर दिक्कत क्या है, और अगर दिक्कत है तो फिर कुछ ठीक नहीं है? कहाँ की बात कर रहे हैं आप? मैं पूरी कांग्रेस की बात कर रही हूँ। कांग्रेस की मैं फिलहाल तो कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के उनके संबंधों की बात कर रही हूँ। हाँ नहीं, मैंने सोचा कहीं देश की बात कर रहे हो कि ठीक है, तो मैं फिर चौंक गया थोड़ा सा। देखिए, कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी दल है और 2014 से लेकर जब से ये लूट तंत्र और प्रचार तंत्र की सरकार आई है तब से हम एक विपक्ष के नाते अपना पूरा कर्तव्य जो हो सकता है 2014 के लैंड एक्विजिशन बिल से शुरू करके और नीट की परीक्षा तक हमने पूरी ताकत के साथ एक विपक्ष के रूप में सरकार को घेरने का प्रयास किया है और यही हमारी लोकतांत्रिक भूमिका थी जिसको हम आगे भी निभाएंगे जब तक ये सरकार रहती है। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं तो फिर क्या जरूरत है क्षेत्रीय दलों को कहने की आप खुले मन से अगर स्वीकार कर लें तो हमारे साथ आ जाएं? घर वापसी करानी सबकी। देखिए, मुझे लगता है कि 1989 के बाद से 1989 के बाद से हिंदुस्तान के अंदर कोएलिशन गवर्नमेंट्स रही, गठबंधन की ही सरकारें रही हैं और ये तमाम दल जिनके बारे में आपने अभी विस्तार से बताया, ये सब कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में कांग्रेस से ही अलग होकर गए हैं और उनकी तरफ से भी और मीडिया के माध्यम से तमाम खबरें आ रही हैं। कुछ लीडर्स के अपने व्यक्तिगत बयान भी हैं। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से या किसी भी क्षेत्रीय दल की तरफ से अभी इस तरह की आधिकारिक कोई भी भूमिका या कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से आज ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके सरकारें गिराई गई, सांसदों को विधायकों को तोड़ा गया, जिस तरह से तमाम चीज़ें घटनाक्रम अभी भी दिखाई दे रहा है, तमाम भ्रष्टाचारी भाजपा के अंदर वॉशिंग मशीन से धुलकर चले जाते हैं,
एक तरफ देश ये प्लेटफॉर्म देख रहा है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रचार तंत्र, लूट तंत्र और भ्रष्ट तंत्र की एक सरकार है, उसको हटाने के लिए अगर सब अच्छे लोग आए इकट्ठे होकर, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं उसमें कोई गलत है। ये बताइए सुधांशु जी, जब वो कह रहे हैं अच्छे लोग उनके साथ हैं, तो फिर वॉशिंग मशीन का क्या काम आ जाता है? और बार बार वॉशिंग मशीन का जो आरोप लगता है, क्षेत्रीय दलों को डरा धमकाकर, ईडी एजेंसी दिखाकर, सवाल पुराना है, लेकिन हर समय एक ही सवाल सबसे ज्यादा क्यों किया जाता है? देखिए, देश में एक बदलाव आ रहा है, जनता की सोच में बदलाव है। आज सूचना के विस्फोट का युग है, अब कोई भी इंफॉर्मेशन आप छुपा नहीं सकते। तो हो क्या रहा है कि कुछ पार्टियां परंपरागत पुराने स्टाइल की पॉलिटिक्स में, 20वीं सेंचुरी की पॉलिटिक्स में पड़ी हुई हैं। वो क्या पॉलिटिक्स है? सीएम बनना है तो कास्ट एंड मुस्लिम। अब ना बैठे रहो, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर लो, कुछ कास्ट की बातें कर दो, कुछ इधर उधर के बयान दे दो, फिर अपने आप जो होना होगा वो हो जाएगा। मेहनत नहीं करनी है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में अमित शाह जी 25 दिन रहे। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी कितने दिन रहे जाके बंगाल में? चलो छोड़ो, आप कहेंगे बंगाल में तो हमारा कुछ था ही नहीं। चलिए, असम में मुख्य विपक्षी दल थे, कितने दिन रहे जाके? चलिए, केरल में ऑटोमेटिक सरकार आ गई, कितने दिन रहे जाके? उस समय तो कभी निकोबार में, कहीं वियतनाम में घूमेंगे। अब आप जब धरातल पे काम नहीं करेंगे, और ये चुनौती दोनों के सामने, क्षेत्रीय दलों के सामने भी और कांग्रेस के सामने भी, क्योंकि अब जो युवा है देश का, जो जनता है, वो परफॉर्मेंस देख रही है कि आप धरातल पे कर क्या रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस को क्या लगता है? देखिए, कई राज्यों में ये सत्ता से गए, जैसे उत्तर प्रदेश में 89 के बाद से नहीं आए, गुजरात में 95 के बाद से नहीं आए, पश्चिम बंगाल का अभी चुनाव हुआ है 77 के बाद से नहीं आए, और तमिलनाडु में 67 के बाद से नहीं आए। मतलब एक कहावत होती थी, हम लोग मजाक में कहते थे ना कि वो एक उसका ट्रांसलेशन करो कि वो गया 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 तो ऐसा गया कि लौटा ही नहीं, तो कहीं ही वेंट सो ऐसो वेंट की केमा ही ना आई। तो देयर आर सेवरल स्टेट्स इन इंडिया जहां पर वेंट सो ऐसो वेंट की केमा ही ना आई। तो अब उनको लगता है कि ऑटोमेटिक बैठकर मिल जाए, और ये हो भी सकता है। कारण क्या है? अगर कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बन जाए तो दिक्कत क्या है बीजेपी को? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो तो उनसे पूछना चाहिए जो मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं। आज धीरे धीरे कांग्रेस कमोबेश उसी दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि देखिए, ये लोग सुविधा की राजनीति करते हैं, बट बैठा बैठाया इक्वेशन चाहिए। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी जी के जो मुख्य रणनीतिकार थे, 2021 के चुनाव में प्रशांत किशोर ने ऑन रिकॉर्ड बोला था कि हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है। अब सोचिए, तो सुविधा की राजनीति ना, 30% तो बना बनाया है, फिर थोड़ा ऊपर से लेना। हम -30 से शुरू करके कहां पहुंचते हैं? 2011 में बंगाल में 2% वोट, 2016 10% वोट और 3 सीटें, 2021 38% वोट 77 सीटें, और 2026 में 46% वोट 207 सीटें। ये होता है मेहनत करके। राज्य के चुनाव अधिकारी को उसके बाद अगर आप मुख्य सचिव बना देंगे तो सवाल तो उठेंगे ना। वो यही कह रहे हैं बार बार कि आप चुनाव आयोग को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? दूसरी बात, चलिए मैं आपसे ये बात कहता हूं, जो लोग चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, आप क्या काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं? हमारे यहां अमित शाह जी, नड्डा जी, वर्तमान अध्यक्ष नितिन नवीन जी और राजनाथ सिंह जी के आपने अनेकों सम्मेलन देखे, जो बूथ लेवल कार्यकर्ता सम्मेलन किए, मंडल लेवल के कार्यकर्ता सम्मेलन किए, शक्ति केंद्र स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन किए। बताइए, कांग्रेस में आपने कितनी बार बूथ लेवल कार्यकर्ता सम्मेलन होते देखे? अब मैं उल्टा बताता हूं, एक लाइन और कह दूं फिर। गुजरात में राहुल गांधी जी जाके कहते हैं कि हाँ, 2 प्रकार की कांग्रेस है, एक कांग्रेस जो कांग्रेस के साथ है, एक कांग्रेस जो भाजपा के साथ है। भाई साहब, जो लोग नहीं भी कुछ कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, ऐसा वाक्य आप क्यों बोल रहे हैं, ये समझना चाहिए। इसीलिए एक संस्कृत की कहावत है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात उद्यम करने से, मेहनत करने से कार्य सिद्ध होते हैं। सोते हुए शेर को ख्वाब देखते हुए उसके मुंह में अपने आप हिरन प्रवेश नहीं करते हैं। देखिए, मुझे लगता है सवाल ईडी और सीबीआई पर था। सवाल ये था कि 2021 में, एक मिनट हो गया, काफी बोल लिया आपने। 2021 में सुवेंदु अधिकारी, मोदी जी पानी पी पी के कोस रहे थे, इससे भ्रष्ट कोई आदमी नहीं हो सकता। अब वो मुख्यमंत्री है। हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ सीडी निकाली थी, उससे भ्रष्ट कोई आदमी नहीं हो सकता, वो आज इनका मुख्यमंत्री है। सवाल तो ये था कि ईडी और सीबीआई जाती है, लोग ज्वाइन कर लेते हैं, पार्टियां टूट जाती हैं, इलेक्शन कमीशन जेब में आप लेकर चलते हैं। इलेक्शन कमीशन किसको मान्यता देनी है, किसको नहीं देनी है, कौन से फैसले को रोकना है, कौन से को नहीं रोकना है। आजकल न्यायालयों में भी ये नया खेल शुरू हो गया। हम तो पूछ रहे हैं कि इसी चैनल पर जिस पर हम बैठे हैं, इसके मालिकों पर ईडी सीबीआई की रेड हुई थी कि नहीं हुई थी? फिर वो बिक गया, और उसके बाद क्या हुआ?
फिर सबको क्लीन चिट मिल गई। अरे भाई कहां तक बचोगे? आप तो दाल काली नहीं, दाल में काला नहीं, आपने पूरी दाल काली कर दी है। अभी इन्होंने उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति का पूरा श्लोक सुना दिया। ये उद्यम बहुत कर लिया भाई, 5 गुना देश के ऊपर कर्जा चढ़ गया, हमारे नागरिक वहां पर मर रहे हैं, आप लोगों के मुंह से एक जबान से शब्द नहीं निकलते हैं। विदेश मंत्रालय की बात कर रहे हैं क्या? 3 दिन में 3 जहाज के ऊपर अटैक होता है, देश के प्रधानमंत्री को टेलीप्रॉम्प्टर ही नहीं मिल रहा। अरे भाई टेलीप्रॉम्प्टर ढूंढ लो भाई, कहीं से 2-4 शब्द बोल दो। पहले तो बहुत बोलते थे, लाल आंखें, पीली आंखें, सफेद आंखें, अब चीन को क्लीन चिट देते हो। विदेश नीति हो, अर्थनीति हो, सामाजिक नीति हो, सबका भट्टा बैठा दिया। देश का प्रधानमंत्री मंगलसूत्र भैंस खोल ले जाएंगे 80-20 शमशान कब्रिस्तान पे वोट मांगता है। फिर आप कहते हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। हालत यह है कि देश के ऊपर कर्जा तो चढ़ ही रहा है, पेट्रोल, डीजल, रुपया डॉलर की तुलना में सब 100 के पार जा रहे हैं। देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसके रहते हुए 12 साल में 1 लाख स्कूल बंद हो गए। देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसके रहते हुए इसने इतना उद्यम किया कि नमस्ते मोदी, हाउ डी ट्रंप और पता नहीं क्या क्या कर डाला, और फिर हमारे नागरिक वहां से बेड़ियां और हथकड़ियां लगकर आए और ये पूरे बीजेपी उनका बचाव करती रही। साहब ये तो उनके कानून है, पहले नहीं थे कानून। देवयानी खोबरागड़ी के टाइम पे जब मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो केरल पे 2 नाविकों को हमारे केरल को शूट कर दिया था इटली वालों ने, जब मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते थे। आज सरकार खामोश बैठी है। चलिए सुधांशु जी, ये पहला प्रधानमंत्री है जिसके रहते हुए किसानों की आय घटी है। बहुत हुई किसानों के ऊपर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार हर 1 घंटे में किसान सुसाइड कर रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं, वो मेलोडी खेल रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि आपने विदेश नीति का ऐसा भट्टा बैठाया है कि पाकिस्तान जिससे युद्ध हो रहा था, हमारी सेनाएं चढ़कर मार रही थी, आप ट्रंप से और एप्स्टीन फाइल से और इजराइल से डरकर आपने सरेंडर कर दिया। ये तो आरोप लगा रहे हैं। चीन को क्लीन चिट दे दिया आपने। चीन हमारी जगह पर घुस के बैठा है, देश के प्रधानमंत्री क्लीन चिट देते हैं। विदेश नीति 0 कर दी। जिस तरह से आज तमाम चीजें खड़ी हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था की हो, चाहे विदेश नीति की हो, वो मैक्सिमम मोदी जी की देन है। एक व्यक्ति वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको कोसते हुए नहीं थकते। अभी कंपैरिजन चल रहा था, उस व्यक्ति ने 2 दर्जन, 4 दर्जन, 5 दर्जन संस्थाएं बनाई, और इस व्यक्ति ने वही 5 दर्जन संस्थाएं बेची। उस व्यक्ति ने अपने घर के परिवार के 200 करोड़ रुपए उस जमाने में यहां पर राष्ट्र को समर्पित किए, और इन्होंने तमाम राष्ट्र की संपत्तियां अपने व्यापारी मित्रों को समर्पित। आलोक जी के इन आरोपों का मैं जवाब देना चाहता हूं। ये बताइए, अंग्रेजों के जमाने में 200 करोड़ कमाया कैसे? कैसे कमाया भाई? मैं फिर बता, भारतीय तो गरीबी और भुखमरी में थे, अंग्रेज साहबों के केस लड़ रहे थे ना। मैं बता देता हूं। अब आलोक जी बोले दीजिए। आलोक जी आपको बीच में कोई नहीं बोल रहा था। आलोक जी की तरह नहीं कमाया था। आलोक जी आपके बीच में कोई नहीं बोल। और सुनिए, चाहे नेहरू जी हो या गांधी जी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के घर में रहते थे। चाहे दुखद घटना थी, पर गांधी जी की अंतिम सांस भी एक बड़े औद्योगिक घराने के घर में हुई। हमारे नेता किसी के घर में जाके नहीं रहते थे। इसलिए जब आप बात करें तो बिल्कुल फैक्चुअल बात करें। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप आपकी बात पर। आपने कहा साहब ईडी, सीबीआई और ये वो। मैं पिछले 35 सालों के एक लोकसभा बताइए जब इनके नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोपों में, कोर्ट के द्वारा निर्धारित केसों में, इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया था, जांच एजेंसी और कोर्ट के चक्कर न काटे हों। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज राहुल जी और सोनिया जी जिस नेशनल हेराल्ड केस में मुचलके पे हैं, वो अक्टूबर 2013 में कोर्ट के आदेश पे, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पे इनिशिएट हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। 2011 में कनिमोझी और एराजा जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2010 में सुरेश कालमाड़ी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2008 में शिबू सोरेन जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे 2006 में डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। 2001 में करुणानिधि जेल गए, 1997 में लालू प्रसाद यादव जेल गए, 1996 में जयललिता जेल गई, 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हुआ, 1987 में राजीव गांधी पे आरोप लगा, 1990 में एफआईआर दर्ज हुई। तब कहां थी भाजपा, कहां थे मोदी और शाह? मेरे भाई, इसीलिए मैं कहूंगा, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। अब आता हूं विदेश नीति के ऊपर। मैं बताना चाहता हूं, इनके जमाने में इन्होंने कहा नेहरू जी का बड़ा वो, नेहरू जी किश्तों में प्रधानमंत्री बने। पहले प्रधानमंत्री बने 2 सितंबर 1946 को, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत वेवल के द्वारा शपथ ली,
क्वीन की निष्ठा की शपथ ली यूनियन जैक झंडे के नीचे। दूसरी किस्त 15 अगस्त 1947 माउंटबेटन के द्वारा शपथ ली स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। अब बताइए, जब ये पहली बार प्रधानमंत्री हुए, पहले तो आधा आधा भारत का हिस्सा टूट गया उन्हीं के रिजीम में। अब 47 के बाद जो भारत बचा तो पीओके चला गया और अक्साई चीन चला गया। यानी नेहरू जी की विदेश नीति को यदि एक लाइन में कहें कि आधा आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का वह ऊंचा भाल गया। इसलिए मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही बात है। आज की भी विदेश नीति अगर आप देखें गौर से, तो आज भारत की स्थिति क्या है, मैं इनसे विनम्रता और दृढ़ता से कहता हूं, एक देश बताइए जहां पेट्रोलियम के दाम हमसे कम बढ़े हों। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में एक देश बताइए जहां महंगाई हमसे कम हो। अरे राहुल गांधी कह रहे हैं सुनामी आने वाली, नहीं साहब, उन्हें पता ही नहीं, सुनामी आ चुकी है दुनिया के समुद्रों में, जहाज उलट पलट गए हैं। अमेरिका में 20 से 40% पेट्रोलियम के कॉस्ट बढ़े। आज आप अभी अपना मोबाइल खोलिए और देखिए सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स में कितना है पेट्रोल। यूरोप में 20 से 40%, एशिया और अफ्रीका में 60% तक बढ़े हैं, भारत में अभी तक 10% बढ़े हैं। और इसके बावजूद आज भी मैं आपसे कहता हूं, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है, $680 बिलियन हुआ है। भारत में नेट इनफ्लो बढ़ा है एफडीआई का, $94.5 बिलियन हुआ है। तो स्थिति क्या है, देखिए सुनामी आई है, जहाज पलट गए हैं, इतना हो गया है, हमारे जहाज पे भी झटके लग रहे हैं। हमारा कैप्टन बड़ी कुशलता से लेके जा रहा है, तो क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं, जो झटके लग रहे हैं उसके लिए कैप्टन दोषी है, सुनामी को मत देखो, कितनी बड़ी बड़ी तरंगे उठ रही उसको मत देखो। और फिर ये कहेंगे, तो इसलिए मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा मोदी जी की तरफ से विपक्ष के लिए, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। और दूसरा मैं इनसे ये भी कहेंगे, भाई तो विदेश में क्या हो रहा है, एक लाइन और बोल दूं, विदेश में क्या हो रहा है उससे हमें क्या मतलब, हमें अपने देश में चाहिए। मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं, दूसरी चीज में विदेश में सब देखना है, गाजा में क्या हो रहा है इसके लिए सीडब्ल्यूसी प्रस्ताव पारित करेगी, इसके लिए सोनिया गांधी आर्टिकल लिखेंगी। हमास पे हमें मतलब है, हिजबुल्लाह से मतलब है, ईरान से मतलब है, गाजा से मतलब है, मगर अर्थव्यवस्था में सुनामी आई हुई तो वो मत देखो, सिर्फ यहीं पे देखो। इसीलिए कहता हूं भाई साहब, नजरें बदलिए तो बदला नजर। चश्मा बदलना है कि नजर बदलनी है कि नजरिया, ये आरोप लगा रही है मैं ईरान से शुरू कर लेता हूं। ईरान में मोदी जी गए थे 1 साल 1.5 साल पहले, एक वो कोई कुरान भी लेके गए थे, पुरानी लिखी हुई, और वहाँ कहा था हमारा तो बहुत पुराना संबंध है, और वहाँ का सिविलियन अवार्ड सबसे बड़ा लेकर आए थे। आज ईरान इनका दुश्मन हो गया, क्योंकि एप्स्टीन फाइल के नीचे। अरे भाई आप खमैनी, ये कहाँ कहा गया है? ईरान में आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में आलोक जी दूसरे देश की बात है, ये इस पर ये विदेश बोलना चाहिए, मुझे पूछना पड़ेगा, ईरान पर इस तरह की बात भारत ने कब कही है? मैं फिर कहूंगा, जब उनके शीर्ष नेतृत्व को मारा गया, 5 दिन तक इस सरकार में इजराइल के और अमेरिका के डर से साइन करने की हिम्मत नहीं थी। इससे बुरा दुखद कुछ नहीं हो सकता है। मानवता के लिए अगर देश आवाज नहीं उठा सकता है, तो मैं समझता हूं कि फिर हमारी संप्रभुता के ऊपर जो तमाम हम सवाल उठाते हैं कि जिस तरह से मोदी जी संप्रभुता के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो सही है। इस सवाल का जवाब दे दीजिए सुधांशु जी, उसके बाद आलोक जी। एक मिनट, विदेश की बात है, ईरान की बात है, देश पे आप कुछ भी कहिए, अलाउड है। देखिए भाषण हुआ, मौका तो दीजिए। नहीं, इस पॉइंट पे देखिए, विदेश का मामला है, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, खमनई साहब वहां सुप्रीम लीडर थे और उन पे जाकर हमारे विदेश सचिव ने हस्ताक्षर किए शोक प्रस्ताव पे। मगर मैं एक टेक्निकल बात कहता हूं, यूनाइटेड नेशंस में ईरान का चीफ राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है, सुप्रीम लीडर उनका अंदरूनी मामला है। जैसे सोनिया गांधी जी सुप्रीम लीडर थी यूपीए में, मगर हेड ऑफ द स्टेट का दर्जा डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास था। जब इब्राहिम रईसी फरवरी 2025 में ईरान के राष्ट्रपति मारे गए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, भारत ने बाकायदा शोक व्यक्त किया और एक दिन का राजकीय शोक किया भी। मगर प्रॉब्लम क्या है, ये सुप्रीम लीडर वालों को सुप्रीम लीडर से ज्यादा वो नजर। आलोक जी बोलिए। देखिए, विदेश नीति के ऊपर तमाम चर्चाएं हुई। आज हालत यह है, 5 दिन पहले कहते हैं पाकिस्तान तो मीडिएशन करके दलाली कर रहा है, फिर 5 दिन बाद राजनाथ जी कहते हैं हम भी तैयार हैं। इनकी विदेश नीति हमेशा से ढुलमुल रही है। जिस तरह से, चाहे वो इजराइल का मैटर हो, मोदी जी गए वहां पर युद्ध से 2 दिन पहले, उनको पता नहीं चला युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई तैयारी नहीं की। और अगर नहीं पता था तो आपको कम से कम इजराइल को कहना चाहिए कि भाई हम आके मिले, तो कम से कम उस बात का जवाब दे देते। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज देश के अंदर जिस तरह के हालात हो गए,
सब कुछ बंधक बना लिया गया है। ईडी सीबीआई के पास इनका कोई जवाब नहीं है। इनके पास पीएम केयर फंड का जो प्रधानमंत्री हिसाब नहीं दे सकता हो, जो प्रधानमंत्री देश में 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर सका हो, टेलीप्रॉम्प्टर पे अगर लाइट चली जाए तो सुनाई दे रहा है, हेलो हेलो बोलने लग जाए, उसको हम आज सबसे बड़ा वक्ता मानते हैं। जिसकी अपनी डिग्रियों का पता नहीं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कहाँ से लाए, वो परीक्षा पे चर्चा करता है और नीट के एग्जाम पर सीबीएसई के कांड पर चुप बैठा रहता है। इतना कमजोर प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया। वो दबा रहता है। एप्स्टीन फाइल की डिटेल तमाम मंत्रियों के पास तो नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान से डरता है वो प्रधानमंत्री, वो अपनी सरकार के लोगों से डरता है, और तमाम लोग जो उनके ऊपर सवाल उठाते हैं वो गायब हो जाते हैं मार्केट से। उसका जीता जागता उदाहरण एक जर्नलिस्ट थी, मनोज्ञा जी। आलोक जी आप सवाल उठा रहे हैं, आप तो यही है। मैं फिर बताऊंगा। अरे आलोक जी आप सवाल उठा रहे हैं, आप तो यही है, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि बहुत से लोग जो सवाल उठाते हैं, बहुत से लोग ईडी सीबीआई उनके यहाँ पहुंच जाती हैं। आलोक जी आप सवाल उठा रहे हैं, आप यही है, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं सवाल उठाऊं, आप सवाल उठाएं। आपके चैनल का जीता जागता उदाहरण दिया। नहीं, मैं तो आपकी बात कर रही हूँ, आप जीता जागता उदाहरण है यहाँ पर। एक मिनट, अभी आपने मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लिया, किस तरह से लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू बनकर काम कर रहा है, किस तरह से लोकतंत्र की चोरी हो रही है सरेआम, किस तरह से आप देखिए किसी राज्य में 50 लाख वोट बढ़ रहे हैं, किसी में घट रहे हैं। केरल में किसकी सरकार बनी आलोक जी? चंडीगढ़ मॉडल, ब्राजील मॉडल, किसी से छुपा हुआ है क्या? किस तरह से बंगाल में क्या हुआ, 27 लाख लोग वोट नहीं डाल पाए। ममता जी जीते हारे, हम जीते ये जीते, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं लज्जा आनी चाहिए, जो कहता है इस बार वोट नहीं डालेंगे तो अगली बार डाल लेंगे। जैसे मंगलवार का भंडारा है, इस मंगलवार नहीं खाएंगे, अगली बार खा लेंगे। देश के लोकतंत्र को हम कहां लेकर जा रहे हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है। मोदी जी चाहते हैं 400 पार हो जाए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो जाए, सारी शक्तियां मैं अपने पास ले लूं। 150 सांसदों को आप संसद में जिस तरह से, काफी लंबा हो गया भाषण, आपका बहुत लंबा था, मैं जवाब दे रहा हूं। 150 सांसदों को आप जिस तरह से सस्पेंड करके बिल पास करते हैं, 700 किसान शहीद हो जाते हैं। ये सेम एआई से देख लिया है, वही हर डिबेट में बोलने की जरूरत नहीं। हर डिबेट की बात नहीं कर रहा हूं। देश को काफी लंबा हो गया, आप देखिए टाइम खत्म हो रहा है भैया। अंतिम बात कहना चाहूंगा, अभी टाइम आपका भी खत्म हो रहा है, पार्टी का भी खत्म हो रहा है। बंगाल की बात चल रही थी अभी। बंगाल में इन्होंने गाय के नाम पर वोट मांगा और सरकार आने के बाद कहा कि जो बुजुर्ग 14 साल की गाय है उसको काटने की परमिशन, इजाजत हम देते हैं। शंकराचार्य के ऊपर झूठे केस लादे गए। 5 दिन तक हिंदुस्तान, एक मिनट अंतिम, अरे भाई अंतिम क्या, समय की मुझे इजाजत नहीं है इससे ज्यादा। अंतिम बात, 5 दिन तक हिंदुस्तान के मीडिया ने शंकराचार्य के ऊपर, मैं आपको बोलने नहीं देती सुनिए ना मैम, सुनिए ना, अब भाई ये तो तरीका नहीं हो सकता ना, आप लगातार बोलते रहेंगे। शंकराचार्य के ऊपर, अब सुनिए, रेप के केस हो गए। 5 दिन तक हिंदुस्तान के मीडिया ने तांडव किया, प्रधानमंत्री जी पे, लेकिन 2 दिन से हमने चलाया उन्हें लाइव शंकराचार्य जी को, आप वो कुछ भी रेप का बोलेंगे केस थोड़ी करने चलेगा। वाला यू टर्न ले गया कि मैंने झूठे केस किए थे, लेकिन हिंदुस्तान के मीडिया में हिम्मत नहीं है कि सनातन की आवाज उठा सके। हमने चलाया उनका इंटरव्यू 50 बार। एक डिबेट आलोक जी हमने चलाया उनका इंटरव्यू, कुछ तो आंकड़ों पे बात करिए। नहीं आलोक जी, जी नहीं आलोक जी, हमने कहा उनका इंटरव्यू। आपके जमाने में राम मंदिर का पैसा लूटेंगे, चंदा चोरी करेंगे, चढ़ावा खा जाएंगे। अब आप बात करिए, सुधांशु जी जवाब दीजिए। अब देखिए, इन्होंने अवांछित निरर्थक बयानबाजी बगैर तथ्य की। अब मैं तथ्य से बोलता हूं। इन्होंने कहा मीनाक्षी नटराजन जी का खारिज हुआ। भाई केस रजिस्टर्ड है न्यायालय में, केस का नंबर है 4472/2025। उस पे न्यायालय से सम्मन जारी हुआ 17 सितंबर 2025 और उसका रिप्लाई उन्होंने दिया 24 अक्टूबर 2025। लेकिन सिविल केस है वो, सर अपने मिनट पर एफआईआर नहीं हुई है उसमें। क्या तरीका बीच में बोल रहे हैं? चार्जशीट नहीं हुई। अरे भाई आप क्यों बीच में बोल, अब ये क्या तरीका है? ठीक नहीं है कि आप लगातार बोलेंगे और फिर बीच में चिल्लाएंगे। अब सुनो, तेलंगाना में आपकी सरकार है ना, लिख के भेजो सरकार से कि ऐसा कोई केस नहीं है और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं लिख के भेज रही तेलंगाना सरकार? ये होता है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, राष्ट्रपति में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन में जाएगा। तेलंगाना का सरकार है, तेलंगाना की सरकार क्यों नहीं लिख रही है? क्या बात कर रहे हैं? क्या बीच बीच में चिल्लाना? सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से, ये बात बहुत गलत है। आलोक जी यही बात गलत है, आप लगातार बोल रहे थे। अब फैक्ट, तेलंगाना सरकार एक लाइन का ऑर्डर क्यों नहीं लिख के दे रही है कि ये केस नहीं है, इससे मीनाक्षी नटराजन का कोई संबंध नहीं है, अभी मामला खत्म हो जाएगा।
भाई क्या तरीका है भाई बीच में आप देखिए चलिए, बहुत गलत उस तरीका समय मुझे इतने की ही इजाजत नहीं ये देता तरीका ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होगी डिबेट कि लगातार 20 मिनट बोलेंगे और उसके बाद आलोक जी रुकिए, अब सुनिए और सुनिए आप गाय पे जवाब दीजिए, गाय को काटने की आलोक परमिशन दी जी, कि नहीं आपकी अरे मैं बंगाल से आती हूँ, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। अरे सुनिए अब मैं बताता हूं, जिनको नहीं पता होता है उनको मैं बताना चाहता हूं। अभी ये कह रहे हैं पाकिस्तान ने बीच में गाय की, इनको जानकारी नहीं है। अरे गाय तो आपके तो नेहरू जी गाय खाते थे अरे और ये प्रेसिडेंशियल आर्काइव में लिखा है। छोड़ो, गाय हमारी माता है, नेहरू उसको खाता है। 1952 में पहला राज्य था उत्तर प्रदेश बात कर रहे हैं जिस पर पंडित नेहरू ने बैन लगाया था। ये क्या और पहले प्रधानमंत्री हैं आप आ गए अपने लेवल पे। गाय को बताइए ना भाई, मैं तो कह रहा हूँ गाय के नाम पर वोट मांगते हो और गाय काटने की परमिशन देते हो। आगे की अवधि नहीं देता है आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। 20 मिनट भाषण देंगे और जवाब तक देने को नहीं देंगे, लगातार चिल्लाएंगे, ऐसे नहीं हो सकती डिबेट। सुधांशु जी और नहीं, और ये नहीं होना चाहिए रिकॉर्डिंग। ये कोई बात होती है? 20 मिनट चिल्लाएंगे, फिर बीच में चिल्लाएंगे, फिर आप कहेंगे समय नहीं है। समय नहीं तो रोकना चाहिए था। आप गाय पे क्या आप 20 मिनट लगातार बोलेंगे? मैं चुप बैठूंगा, गाय पे जवाब दो। बिल्कुल मैं गाय पे जवाब देता हूं। और सुनो, यह ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है और रिकॉर्ड को कोट कर रहा हूं। 16 से 18 सितंबर 1978 जो प्रेसिडेंशियल ड्वाइट आइजनहावर के समय जब नेहरू जी दौरे पे गए और उनके फूड प्रेफरेंसेस को डिक्लासिफाइड किया गया तो कहा गया नेहरू जी का प्रेफरेंस क्या था? फिलेट मैगन, एक बीफ एंड स्कॉच। और उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि दुनिया के बिगेस्ट हिंदू देश का जो चीफ है वो गाय का बीफ खाता है और वो खाता है। भाई साहब क्या बात करना है? फिर चिल्लाने लगे, फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, फिर लगातार चिल्लाना शुरू कर रहे हैं। कोई परमिशन नहीं है, कोई बीफ का कोई एक्सपोर्ट नहीं होता भारत से, इलीगल है, लीगली 14 साल की और जिन लोगों ने आज काटने की परमिशन दी, हाँ या ना? तरीका है। अरे केरल में गाय काटी इन्होंने सड़क के ऊपर, अरे भाई इनके युवक कांग्रेस के अध्यक्ष ने, और उसके बाद बहस कर रहे हैं। जवाब दे दो ना, गाय के ऊपर करने की बात कर रहे हैं। काटने की परमिशन आप लोगों ने दी, हाँ या ना? अरे नहीं दी है भाई, कोई परमिशन नहीं है। क्या बात करने का आप दोनों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, समय मुझे इतनी की अवधि देता है, लेकिन अगर मैं आपको आंकड़े अगर दे दूं तो 2014 में 8 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी और 2024 में नेहरू को कोसते रहो, गालियां देते रहो, उसके लिए डिबेट होती रहे। नहीं बोल पाए। और मैं एक पॉइंट जरूर क्लियर करना चाहता हूँ। ये कहते हैं पाकिस्तान की बात, सुनिए एक बात, पंडित नेहरू से आज भी क्या तरीका है यार ये लोग? ये क्या तरीका है भाई? कितना डरते हैं पंडित, क्या बात कर रहे हैं? वो शख्सियत आलोक जी, अरे भैया वो शख्सियत इतनी ऊंची थी कि उसके भैया वायसराय से बड़े मधुर संबंध थे, हंसते हुए फोटो है उसकी। कोई अब मैं इस पे बता रहा हूं, क्या बदतमीजी है भाई, क्या बदतमीजी का काम कर रहे हैं? बोलने नहीं दे रहे हैं। आलोक जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोनों से हद होती है भाई। नहीं, आपका रिकॉर्ड में एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। 70 साल तक पंडित नेहरू को गालियां देते रहो और हाथ धोती है हमारी। आलोक जी प्लीज, क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है भाई? आलोक जी, देश का बदतमीजी की हद है, लगातार नहीं बोलने दे रहे। आप लोग करते हैं बदतमीजी, आप कर रहे हैं। टीवी चैनल्स को कब्जे में लेके बदतमीजियां शुरू। आलोक जी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप कुछ भी बोल रहे हैं। अब सुनिए, लास्ट में टीवी चैनल कब्जे में क्या होते थे? इमरजेंसी के लिए लिखा गया है कि एक एक कागज वेरीफाई कराना पड़ता था। तो एक शेर कहा गया था कि अब तो गालिब ज़ौक़ साहिर मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी, इनके जमाने में। और मैं पाकिस्तान का एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूं, इतने मूर्ख लोग हैं जिनको ये पता नहीं रहता। 79 में जब ईरान में अमेरिकन एम्बेसी को कैप्चर कर लिया गया था और उनके 80 लोग बंधक बनाए, उसके बाद से ईरान में अमेरिका की कोई एम्बेसी नहीं। 91 में सोवियत संघ के विघटन के बाद जब अमेरिका यूनिपोलर सुपर पावर हो गया तो हम ईरान को जरूरत हुई कि कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो 1992 से आज तक हमेशा ईरान में जो ईरान की एम्बेसी पाकिस्तान में है वो अमेरिका के साथ कम्युनिकेट करती है। ये 1992 से चल रहा है। तो और वो है क्या? हकीकत में वो सिर्फ कबूतर है। वो मैंने प्यार किया का कबूतर है, उसको सलमान खान बनाने में पता नहीं काहे लगे हुए रहते हैं। आप समझ में नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट को मुझे यही खत्म करना पड़ेगा। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। इस पे गौर कीजिएगा कि इतने तीखे डिबेट के बाद वो दोनों एक दूसरे को दे आर स्टिल रेफरिंग टू ईच अदर एज फ्रेंड्स। सो चलिए, ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। श्री आलोक शर्मा, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी कि आप आए और आपने हमारे समिट में हिस्सा लिया। ओके, दैट वाज अ वेरी लाइवली डिबेट and conversation.
From the sharp dynamics of that domestic political discourse that will be playing out on your TV screens every evening, we now look outward to map how the rest of the world views our trajectory. Over the course of the day, we've debated our infrastructure growth, our welfare architecture, our internal policy resets. But to truly understand if this momentum is sustainable for the next 50 years, we must look at the hard, cold numbers through a global lens. To give us that crucial macro perspective, joining us via live link from the United Kingdom, a renowned voice in international financial markets, global economic advisor to the Equirus Group, Jim Walker. He will be in conversation with my colleague, Gauri Dwivedi. Gauri, over to you. After that really fiery political debate, we now have someone who's going to talk more about global economics. Well, ladies and gentlemen, we live in an age of permanent disruption, war in the Gulf, oil supply lines that are under tremendous strain, and all certainties of globalization that are almost coming apart, and the world's great powers turning inward. In the middle of all this turbulence, there is one economy that is growing at 7.8%. Yes, that's India. And in fact, my next guest has spent his career calling Asia's turning points, often before the consensus even caught up. He's the chief economist at Alethea Capital and the man behind Asianomics, someone who understands the region very well and often a contra voice as well. Thank you so much, Dr. Walker, for speaking to us on NDTV Ignite. Let's see whether we are able to ignite the screen and really, have that fiery session. But let me start by first asking you, that when you talk about the world that we are in right now, at a time when probably the most defining economic story of our times is India. The world is fractured, and the only economic outlier right now is India. You've spoken about that bold claim that you made that the next decade belongs to India. Your thoughts on how it adds up, most importantly, in the times that we are in right now. Yes, I can't promise to be as entertaining as your last two guests. I'm really sorry that I don't understand Hindi because it sounded pretty amazing, and the audience seemed to be enjoying it as well. But, hopefully the audience is enjoying really a transformation of the Indian economy over the last decade, where nobody now looks at India and worries about economic policy making, fiscal policy or monetary policy, even the exchange rate, which of course tends to be a bit more volatile than most of us would like. But policy generally has been in, I think, flight mode, very calm and unturbulent over the course of the last few years, and continues to be, I think, driving the domestic turnaround in the Indian economy that we've seen right up until the first quarter of this year. Now, of course, there is turbulence ahead, which is very much driven by events offshore India. Nothing much you can do about that. But I'm pretty certain that the foundations that have been laid over the last 10 years will see India through this, will improve the prospects for economic growth going forward. And we have certainly no intentions of recommending a change of view to our clients in anything but to be long the Indian stock market. It's much better value today than it was a year ago. We're almost living in times that feels like end of an era. There's deglobalization, there's complete fracturing of global supply chains, there's decoupling like never before, there's Donald Trump and his massive amount of uncertainty with regard to the global trade order. Your thoughts on, are we looking at a complete reset in the global economy? Or do you think this is cyclical in nature and probably one that we would, I wouldn't say forget, but be able to overcome in about half a decade from now? Well, there's various answers to that question because there's an element of cyclicality in here, but there's also a structural perspective that we need to take into account. The US at the moment, and maybe it's partly down to personalities, but the
the lashing out against anybody who stands in its way, I'm afraid is much more an indication of an end of an era than a cyclical event which might be associated with US domestic politics. And what I really mean by that is that, that there's a change that's taking place in the United States, and it's taking place in Western Europe as well, and indeed in Japan, all of which are what we might call the advanced economies. They're advanced to the point that they've basically bankrupted themselves with their debt levels. The United States is not the worst. Japan is by far the worst in that respect. Europe is following very closely behind in many respects the United States. But what this has done has made politicians in the industrialized countries much more nervous about their prospects for the future. And it's all brought upon them by themselves. The politicians have unfortunately promised the earth to their populations. We're in a stage now where what were contingent liabilities for the future, in other words, pensions and social security benefits, are coming home to roost in these economies. Europe is, in a sense, worse than the United States, but the US is catching up very quickly. Japan, as I say, is worst of all. And what that has done has been to begin to bring to the forefront of the market's mind, and I mean in this instance the bond market's mind, the prospect of significantly higher interest rates going forward. Okay. And with significantly higher interest rates, we're going to have lower growth. And that's where we're at just now, forgetting everything that's going on in the Middle East. Which brings me to ask that you mentioned about some of the serious economic headwinds that lie for a US, for the European economy as well as China. Are these economies now heading towards a structurally slower decade? And does that offer a huge and a newer opportunity for India? Yeah, you know, that they've been slowing already, Gauri, and certainly the case that the United States tends to be the most vibrant of the industrialized economies. But truth be told, its growth rate is around about 2 to 2.5%. Last year it was 2.2%. Cyclically, things will actually slow down going forward, and of course then we've got the Middle East ahead as well. But you know, really the industrialized countries, partly of their own making, as I mentioned earlier, given the debt burden that they've gotten themselves, are in slowdown mode, and there's nothing that can stop that. So yes, this is a golden opportunity for economies outside those regions to take advantage and to move into fast growth mode. China, we've seen over the last 20 to 30 years doing that. Various other countries in Southeast Asia have been ahead of China and then following on from China. And now I think it's India's turn. And I keep saying to my clients, stop thinking about India in Chinese terms, that it's going to be a manufacturing powerhouse for the global economy. That's unnecessary these days. You've mentioned the fact that there's deglobalization, there's decoupling going on. There's going to be much more in the way of unhealthy trade. Dr. Walker, you've got to think India in Indian terms. You've got to think about the Indian economy in Indian terms. You most certainly cannot compare. You're right that Chinese economic model doesn't work anymore. I want to ask you about the Iran war fog that you've written about. You've mentioned that it is now going to have a huge impact on the global economy as well as India as well. Your thoughts on the kind of impact that we should now really be bracing ourselves for, whether for the global economy and even for India? Yes, well, we've been in holding pattern, if you like, for the last 3 or 4 months because of the time that it takes for oil flow and oil product flow from the Middle East to arrive around the world. But over the course of the next 6 months, the effects of the war, even if it ends tomorrow, will still be being felt throughout the world in terms of higher oil prices, much higher fertilizer prices, and indeed product shortages. And that's why in our
models, we're basically saying that the global economy, led by the industrial world, is moving into recession over the course of the next year. Elsewhere, including places like India, we don't really talk about recession as the negative quarterly growth rates, but it's going to be a slowdown for those economies as well, partly driven by higher oil prices and effectively higher inflation generally. We talk a lot about Iran and the Middle East, but we've got to remember that artificial intelligence and the capital expenditure around the world on that is also contributing to very high inflation. And with that, I'm afraid we're heading towards higher interest rates. Dr. Walker, you're a man of numbers. Any numbers that you could share with us that when you talk about conflict, it is essentially a tax on growth, isn't it? So what are these numbers that we should now be really looking at in terms of inflation, in terms of impact on growth? Let's say it goes on for another 3 months, the war. Yes, well, it's really going to be determined by the supply shortages. At the moment, the paper markets around the world are looking at oil prices at between $90 and $100 a barrel. I think when you get to actual physical delivery, the prices are much, much higher at the moment in places like Southeast Asia, and it would be the case in India as well, because there are actual shortages taking place. Now, the big problem for central banks is that as those shortages impact and as oil prices and oil product prices rise, inflation will rise. And in the 1980s, the big lesson from that is that even though economic growth slows alongside it because of the shortages, central banks can't sit back and say everything's okay. Those inflationary numbers begin to get into the system and begin to feed through. And that's actually going to, I think, bring Western central banks. The ECB raised interest rates yesterday for the first time in 3 years. America will start doing it over the course of the next 3 months. Japan will raise this month as well. But this is all to address inflationary consequences that haven't actually appeared yet. Okay, which brings me to ask the case of two central banks, India and the US. Let me start first with the US, the American economy probably going into a stagflation. I ask you this because gas prices there have really risen. And if there is a stagflation-like scenario, do you expect more capital then to come to countries like India? Yeah, let me address the stagflation question first, because just to give you an example, the US inflation rate for May was released yesterday. That was 4.2%. It seems relatively benign. But when you look below that at 6-month annualized 6.5% inflation, 3-month annualized was 8.2% inflation in the United States. So that becomes a real issue very quickly for central bankers, regardless of what's happening with the domestic economy. So the first response from the central bank has to be over the course of the next few months to raise interest rates. Then they might start looking at economic activity. Yeah. But of course, with what's happening with hyperscalers and data centers and capital expenditure from that angle, things will look not too bad at the top of the overall numbers for GDP, the headline. But underneath, you're seeing a very bifurcated US economy where outside the tech sector, investment is actually negative year on year, and the economy is in the doldrums already. But that inflation is going to be the key force driving economic policy decisions. Indeed, and it will be something that they'll have to decide soon, given the fact that there are midterm elections this year. I'm going to leave it there, Dr. Walker. Thank you so much for joining us on NDTV Ignite with that perspective. Pleasure. India being and drawing that long arc as far as the global economy is concerned. Thank you. All yours, Anusuya. Thank you so much, Gauri. Okay, we're waiting for our next guest to arrive, and I believe the Honourable Minister is
here. In fact, I see her entering the hall now. So why don't we have a quick round of applause for Minister of State for Health and Family Welfare, Srimati Anupriya Patel. Okay. So what we just heard was Gauri Dwivedi and Jim Walker for a global perspective. और अब ग्लोबल मार्केट्स के इस बड़े नज़रिए के बाद अब बात करते हैं उस ताकत की जिसके बिना भारत के अगले दशक की कल्पना अधूरी है। जब हम विकसित भारत और आने वाले 50 सालों के रोड मैप की बात करते हैं तो उसकी सबसे मजबूत नींव है नारी शक्ति। इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी अपना दल सोनेलाल की नेता एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को, और उनके साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी सिक्ता देव। एक महिला कब सशक्त यानी एम्पावर्ड होती है? जब वो सुरक्षित, सम्मानित और स्वस्थ रहे। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से दिए अपने पहले भाषण में महिलाओं को आगे रखने की बात कही थी। आज 12 साल बाद देश में महिलाएं सिर्फ लाभार्थी नहीं हैं, देश में विकास का नेतृत्व भी कर रही हैं। नारी शक्ति और सरकार की प्राथमिकताओं पर बात करने के लिए इस वक्त हमारी खास मेहमान मंच पर है। बहुत शुक्रिया आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर और इस मौके के लिए वक्त निकाला है अनुप्रिया जी। अब सरकार का विजन, सीधे आपके मंत्रालय पर आती हूँ, सरकार का विजन रहा सिक केयर से वेलनेस की तरफ जाना, और इन 12 सालों में आपने बहुत कुछ अचीव भी किया है आपके मंत्रालय ने। तो इस पैराडाइम शिफ्ट में जो बीच का फोकल पॉइंट रहा, उसकी रणनीति आपकी क्या रही कि आप लोगों ने इतने कम वक्त में इतना सब कुछ अचीव किया? देखिए, आपने सही कहा, सिक केयर टू वेलनेस। पहले जब देश में स्वास्थ्य की बात होती थी तो हमारी अप्रोच, हमारा फोकस रहता था कि बीमार व्यक्ति को ठीक कर देना है। लेकिन अब हमने अपने इस पर्सपेक्टिव को चेंज किया है और हमारी जब नई स्वास्थ्य नीति आई तो हमने कहा कि हम कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर की बात करेंगे। तो अब हम प्रिवेंटिव की बात भी करते हैं, प्रोमोटिव की बात भी करते हैं, क्यूरेटिव यानी उपचार, और उसके आगे हम रिहैबिलिटेटिव और पैलिएटिव की बात भी करते हैं। तो सिक केयर से वेलनेस की जो ये यात्रा है, इसमें बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो इसलिए जो हमारे प्राथमिक और स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो सेकेंडरी हेल्थ केयर है, जो टर्शरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, जितना भी हमारा स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा है उसको मजबूत भी करना है। जो हमारी जनता जिसे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है वो भी हमने उपलब्ध कराना है। जन औषधि केंद्र या अमृत फार्मेसी जैसे जो हमारे प्रयोग हैं उसके ज़रिए सस्ती दवाएं भी उपलब्ध करानी है। तो कुल मिलाकर सरकार का जो खर्च है स्वास्थ्य के ऊपर वो लगातार बढ़ रहा है और आम आदमी की जेब से होने वाला खर्च घट रहा है। हमारे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जहां अब हम एक 12 सर्विसेज का पैकेज देते हैं। इसके साथ ही जो हमारे पीएम अभीम एक योजना है, उसके तहत हम जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं या जो हमारे बड़े अस्पताल हैं, उनके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं उनको हम ठीक भी कर रहे हैं, ताकि आने वाली किसी भी भविष्य की चुनौती के लिए हम तैयार हों। इसके साथ ही देश के अंदर मेडिकल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने बढ़ाया है और नए एम्स भी बनाए हैं। तो एक ये पूरी व्यवस्था इस तरीके से की गई है कि जो कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर जिसे हम कहते हैं वो हमारे देश के अंदर सुनिश्चित हो और देश के हर नागरिक को हम क्वालिटी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर जो है वो सुनिश्चित कर सकें। तो ऐसे में जब आप लोगों ने इतना कुछ अचीव किया है तो अगले टारगेट की भी बात हो जाए। आयुष्मान भारत अब देशव्यापी है, पश्चिम बंगाल आखिरी वो राज्य था जो अब इससे जुड़ चुका है। तो अगला माइलस्टोन आपके लिए क्या होगा? देखिए, मुझे खुशी है इस बात की कि एक अकेला राज्य देश का बचा था, पश्चिम बंगाल, जहाँ पे इसके दायरे में लगभग 6 करोड़ से अधिक लोग आ सकते थे।
लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं आ पाए थे। पर अब जैसे सरकार का परिवर्तन हुआ तो हमने इस योजना को वहाँ लागू कर दिया। तो अब 6 करोड़ से ज़्यादा लोग जो पश्चिम बंगाल के हैं उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा। और बंगाल में सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स बहुत हैं। वहाँ के कई लोग कई ज़िलों के, मालदा, मुर्शिदाबाद, नाडिया, ऐसे कई ज़िले हैं जहाँ से लोग देश के दूसरे राज्यों में काम के लिए जाते हैं, मुंबई जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि इसमें एक नेशनल पोर्टेबिलिटी फीचर है, तो बंगाल का कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में 36,000 प्लस जो हमारे एम्पैनल्ड अस्पताल है उसमें अगर वो इलाज लेना चाहे तो वो ले सकता है। और इसके साथ ही क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी अब बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं या प्राइवेट अस्पताल हैं जो एम्पैनल होंगे, तो उस पूरे रीजन को अगर हम देखें, जो ईस्टर्न रीजन है, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, हमारे आयुष्मान भारत का जो बेनिफिशियरी बेस है वो आज लगभग 62 करोड़ से अधिक हो गया बंगाल की जनसंख्या जुड़ने के बाद। 15.5 करोड़ लोग उसी क्षेत्र के हैं। तो उनके लिए भी पश्चिम बंगाल में जितने अस्पताल हैं, आसपास के इलाकों के लोगों के लिए भी वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं अब मिल सकती हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है हेल्थ प्रोटेक्शन देने की दृष्टि से, कि लोगों को सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर, जो उनको गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए एक 5 लाख का सुरक्षा कवच चाहिए था, वो आज इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल के लोगों को मिल रहा है। अब मैं आपके मंत्रालय से महिलाओं को जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि हमारे सेशन का नाम नारी शक्ति है। अब 2014 का मैंने जिक्र किया जब अपने इंट्रो में, जब प्रधानमंत्री ने अपना पहला भाषण दिया था, उन्होंने महिलाओं की गरिमा को स्वच्छ मिशन से जोड़ा था और एक तरह से नींव पड़ी। चाहे शौचालय हो, चाहे तमाम योजनाएं हो, जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला का योजना हो, ये तमाम योजनाएं महिलाओं से जुड़ी और एक तरह से महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी प्रेरित किया इन योजनाओं ने। तो ऐसे में एक महिला की उड़ान जो है, जिसके सपनों की उड़ान तभी संभव है जब वो स्वस्थ रहे, और ये आधार बन रही हैं उन महिलाओं के लिए जो तमाम इनिशिएटिव ले रही हैं और नेतृत्व कर रही हैं आर्थिक विकास के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा। हम हमेशा से सुनते आए हैं पहला सुख निरोगी काया, और हमारे सरकार में हमारे मंत्रालय के तहत हमने एक स्लोगन दिया, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। और महिलाओं का स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य, ये हमारे मंत्रालय की और हमारे सरकार की प्राथमिकता है। मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर शौचालय की बात की, स्वच्छता की बात की, और उसे नारी गरिमा और सम्मान से जोड़ा। लेकिन मैं इसके एक कदम आगे जाकर कहूँगी कि करोड़ों शौचालय जो हमने बनाए स्वच्छ भारत मिशन के तहत, गरिमा, सम्मान, सुरक्षा के साथ साथ नारी के बेहतर स्वास्थ्य का ये शौचालय आधार बने हैं। आज आप भी एक महिला हो, मैं भी एक महिला हूँ। हम अगर एक ऐसी यात्रा पे निकल जाएं कि हमें पता है कि बहुत दूर तक हमें कोई शौचालय नहीं मिलना है, तो हम क्या करते हैं, ये पानी हम कम पिएंगे, कोई भी फ्लूइड इनटेक हम कम कर देंगे। ऐसी परिस्थिति में देश की करोड़ों महिलाएं न जाने कितने पीढ़ियों से जी रही थी, उनके पास अपना एक टॉयलेट नहीं है और वो यूरिन के अर्ज को विदहोल्ड करती हैं, बहुत सारा यूरोलॉजिकल रिस्क होता है, या अगर वो ऐसी गंदी सेटिंग्स में गई जहाँ पे उनको अपने आप को रिलीव करना पड़ रहा है, तो बहुत सारे स्वास्थ्य की समस्याएं होती थी। लेकिन अब उनके पास अपना एक टॉयलेट है, अपना शौचालय है, तो अपनी एक रिस्पेक्ट है, अपना एक सम्मान है, अपनी एक प्राइवेसी है। और उसके साथ ये हमारे जल जीवन मिशन के तहत जो हमने हर घर नल पहुँचाया, उससे भी अब ये जो हमारे एफर्ट्स हैं ये बहुत स्ट्रेंथन हुए हैं। और बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए मैं कहूँगी कि इससे जो एक हेल्थ के रिस्क थे, बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ेज हो जाती थी, उनसे भी उनका बचाव हुआ है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मैनेजमेंट बेहतर हुआ है। तो स्वच्छता, टॉयलेट, ये एक बहुत बड़ा बदलाव स्वास्थ्य की दृष्टि से महिलाओं के जीवन में लेकर आया है। जी बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके मंत्रालय से भी जुड़ता है, जो इन दिनों सुर्खियों में है, जो एक महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके मंत्रालय से जुड़ता है, वो ये कि जो हाल में एक रिपोर्ट आई, क्योंकि मैं वक्त कम है, मैं जल्दी जल्दी सारे सवालों का जवाब आपसे चाह रही हूँ। फर्टिलिटी रेट की गिरावट दर्ज हुई है, इसको लेकर तमाम जानकारों ने चिंता भी जताई है। इस वक्त सरकार इस बारे में क्या सोच रही है? इस वक्त सरकार के लिए क्या ये एक चिंता का सबब है जो फर्टिलिटी रेट की रिपोर्ट आई जिसमें गिरावट दर्ज हो रही है? देखिए, TFR को लेकर हमारी सोच स्पष्ट थी कि हमें 2.1 का
जो TFR है वो देश के लिए प्राप्त करना है। तो बहुत सारे राज्यों ने इसको प्राप्त किया, बहुत सारे राज्यों ने जो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हमारे मेजर्स थे उनको अडॉप्ट करके वो इससे थोड़ा कम भी चला गया। अभी भी कुछ ऐसे हमारे क्षेत्र हैं, ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जो हमारा TFR है वो 2.1 से ज़्यादा है। हमारा इस संबंध में यही कहना है कि हमारी जो प्राथमिकता है मंत्रालय में वो एक महिला का बेहतर स्वास्थ्य है। तो मैटरनल हेल्थ की सुविधाएं कैसे मिले, माँ कैसे स्वस्थ हो, बच्चा कैसे स्वस्थ हो, सेफ डिलीवरी कैसे इंश्योर हो, और जो स्पेसिंग है बिटवीन बर्थ ऑफ 2 चिल्ड्रन वो कैसे इंश्योर हो, इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम हमारा मंत्रालय चला रहा है। और फैमिली का साइज ये वॉलंटरी होता है, इसमें सरकार कोई नियम नहीं बना सकती, लेकिन हमारी कोशिश सिर्फ ये रहती है कि हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो स्वस्थ रहें, और उसके लिए एक पूरी लाइफ साइकिल अप्रोच हम अडॉप्ट करते हैं। और बहुत सारे कार्यक्रम हैं, मैं उल्लेख करूंगी तो बहुत समय जाएगा, लेकिन उसके नतीजे ये देखने को मिले कि आज अभी हमारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आती है तो आप देखिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हमारे बढ़ गए हैं, या जो एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं महिलाओं के वो भी बढ़ गए हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जितनी महिलाओं का एंटीनेटल चेकअप होना चाहिए उस प्रतिशत में भी बढ़ोतरी हुई है, और 4 मिनिमम ANCs महिलाओं को मिले वो परसेंटेज भी बढ़ गया है। तो ये जो हमारे तमाम प्रयास चले हैं इसके बहुत सकारात्मक नतीजे देखने को मिले हैं। बिल्कुल, और आप क्योंकि मंच पर हैं और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे ये एहसास है कि सभी जो यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे टीवी के दर्शक हैं वो आपसे भी समझना चाहेंगे कि आप इसके लिए कितनी तैयारी करें। तो इस बार क्या मुकाबला NDA वर्सेस PDA होने वाला है, सीधा मुकाबला? देखिए, मुकाबला तो मैं कहूँ तो है ही नहीं। सही मायने में NDA की सरकार के जो काम रहे हैं, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की योजनाएं जिस तरीके से लोगों के जीवन में बदलाव ला रही हैं, 2 बार 2017 में 2022 में NDA को शानदार जीत मिली है। और मैं आज आपके चैनल पे कह के जा रही हूँ कि जो हमारा 2027 का चुनाव है उसमें भी NDA धमाकेदार ढंग से जीतने जा रहा है और तीसरी बार NDA की हैट्रिक बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह है ही नहीं। मुकाबला शायद आपके टीवी चैनलों पे जरूर दिखाई पड़े, लेकिन जमीन पर मुकाबला नहीं। अनुप्रिया जी, जब अखिलेश यादव कहते हैं कि जिस समाज का आप प्रतिनिधित्व करती हैं वो तो PDA का हिस्सा है, तो क्या जवाब देंगे आप? और उनकी पार्टी ने जब 4 बार सरकार चलाई है तब जिस PDA की उन्हें आज याद आ रही है उस PDA की उतने कितनी चिंता की है? PDA की अगर उन्होंने चिंता की होती तो 17-22 लगातार वो उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर नहीं होते। तो कहीं ना कहीं PDA आपको तब याद आया है जब आपके हाथों से शासन सत्ता छिन गई है। तो PDA का जो समाज भी है, जो हमारे पिछड़ा दलित वर्ग हैं, उन तक भी हमारे सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा है। उन्होंने भी अपने जीवन में एक अंतर महसूस किया है और इसीलिए 17 के बाद 22 और 22 के बाद 27 में NDA तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। ये बताइए कि पिछले बार के चुनाव 2022 के 46% महिलाओं ने NDA को वोट दिया था। अगर ये आंकड़े मैं मानूं तो अगर आप लोग परिसीमन बिल पारित कराने में कामयाब होते, इम्प्लीमेंट हो जाता महिला आरक्षण बिल, तो कुछ और बेहतर नतीजे 46% से पार जाता उत्तर प्रदेश के चुनावों का नतीजा। देखिए, महिलाएं बहुत जागरूक हो गई हैं, अपने हक अधिकार को समझती हैं, और जो बीते 12 वर्ष रहे हमारी सरकार के, आप देखिए, अगर केवल आप महिला केंद्रित योजनाओं को ही देख लीजिए, आज महिलाओं की बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कितना काम किया गया है। जब हम कहते हैं विमेन लेड डेवलपमेंट, तो विमेन लेड डेवलपमेंट ऐसा ये कोई एक अकेली चीज़ नहीं है, ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। सबसे पहले जो उनकी बुनियादी फंडामेंटल ज़रूरतें हैं उसे आप पूरा करिए। इसलिए देखिए, आप देश के अंदर करोड़ों टॉयलेट्स बन गए, करोड़ों घर महिलाओं के नाम पे हैं, बैंक के खाते खुल गए, उनके आयुष्मान कार्ड बन गए, 3 करोड़ से ज़्यादा हमारे यहाँ महिला किसान हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिल रही है। हमारे यहाँ 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। महिलाएं, अब मैंने जो अपने उसका एग्जाम्पल दिया आपको, हमारे अपने ये जो PMSMA का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का, 7.5 करोड़ महिलाओं की ANC जांच इसके तहत हो गई। तो उनकी बुनियादी आवश्यकताओं से आप आते हैं उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे, और उसके लिए ग्रास रूट पे कितना काम किया। ये स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आज ये
ड्रोन दीदी बन रही हैं, लखपति दीदी बन रही हैं, ये एक इनकम अर्जित कर रही हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत इनको सोलर एंटरप्रेन्योर्स बनाया जा रहा है। मुद्रा योजना के तहत, स्टैंड अप इंडिया के तहत, स्टार्टअप इंडिया में इनको मौके दिए जा रहे हैं। उसके बाद आती है इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसका हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत प्रयास किया। और मैं ये मानती हूँ कि अभी वो लागू भले ही ना हो पाया हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास तो मौका है। जो पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि हम तो चाहते हैं कि ज्यादा महिलाएं हमको सदन में दिखें, तो सबके पास मौका है, ज्यादा से ज्यादा टिकट दीजिए, चुनाव आपके सामने है। और महिलाओं के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जब इन 3 चरणों से हम गुजरते हैं तो ये जो विमेन लेड डेवलपमेंट की हमारी अवधारणा है वो पूरी होती है। और मैं आपको यही कहूंगी कि जितना आप महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, महिलाएं बहुत जागरूक हो गई हैं। जिस तरीके से आज उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, वो दिखा रही हैं अपने माइंडसेट को कि हमारे वोट की ताकत क्या है। तो महिलाएं बहुत एस्पिरेशनल हो चुकी हैं और जितना महत्व पॉलिटिकल पार्टीज महिलाओं को देंगे, आप उसको देखेंगे कि देश की डेमोक्रेसी में, देश के लोकतंत्र में और राजनीतिक परिदृश्य में महिलाएं बहुत बड़ा परिवर्तन कोशिश रहेगी मॉनसून सत्र में एक बार फिर इसे लाने की और किसी तरह से इसको मॉनसून सत्र में क्या होगा ये आपके लिए एक सरप्राइज है, लेकिन इतना मैं जरूर आपको तैयारी हो रही है। महिलाओं के लिए एक नया भारत तैयार हो रहा है और महिलाओं की आने वाले समय में लोकतंत्र में बहुत बड़ी भागीदारी होने जा रही है। और भारत के लोकतंत्र में महिलाओं की जो भूमिका होने जा रही है वो दुनिया के लिए उदाहरण बनेगी। 2 छोटे-छोटे सवाल हैं, वक्त मेरा खत्म हो रहा है, मुझे बार-बार बोला जा रहा है रैप अप करने के लिए। कास्ट सेंसस को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ लगी, लेकिन सरकार ने यह फैसला किया, इसे इंप्लीमेंट वो करवा रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी समाज हैं जो अब चाह रहे हैं कि उनकी जो कैटेगरी है, जैसे कि निषाद समाज है यूपी का, वो चाहता है कि उनकी कैटेगरी बदले, अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। तो इस तरह की जो डिमांड्स हैं, इस पर रीलुक किया जाएगा? देखिए, ऐसी बहुत सारी मांग जो है वो समय समय पर उठती रहती हैं। सेंट्रल लिस्ट अलग मेंटेन होती है, स्टेट लिस्ट अलग मेंटेन होती है, और किसी भी समाज का, किसी भी समुदाय का जो भी स्टेटस है वो अगर बदलना है तो उसका प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से ही केंद्र सरकार के पास आता है। ये इसकी एक अपनी प्रक्रिया होती है। तो ऐसी बहुत सारी मांगों का समय समय पर विश्लेषण किया जाता है आवश्यकता अनुरूप। लेकिन कास्ट सेंसस की जो एक्सरसाइज है वो पूरे देश के अंदर जो भी जाति वर्ग समुदाय के लोग मौजूद हैं उनकी जो स्पष्ट संख्या है उसको देश के सामने प्रस्तुत करेगा। एक बहुत बड़ा काम सामाजिक बदलाव का होने जा रहा है, क्योंकि इस देश के अंदर अभी भी ऐसी बहुत सारी जाति समुदाय हैं जिन्हें पहचान का संकट है, जिन्हें लगता है कि हम विकास के साथ साथ पहचान की रेस में भी पीछे छूट गए हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान भी उजागर होगी, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियां क्या हैं वो भी स्पष्ट आएंगी, और सरकारों को एक अवसर मिलेगा कि वो उनके सशक्तिकरण के लिए, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक प्रयास कर सकें। एक आखिरी सवाल पंचायत चुनावों से जुड़ा हुआ, उसमें देरी हो रही है। अब कहा ऐसा जा रहा है, विपक्ष ऐसा कर रहा है, आपके राजनीतिक विरोधी ऐसे कह रहे हैं कि अपने फायदे के लिए इसे टाला जा रहा है। नहीं, देखिए, फायदा तो कोई हमारे विपक्ष के साथियों को भी होने वाला था नहीं, कि तो गांव-गांव में एनडीए की बयार बह रही है। और सही बात तो ये है कि उसमें डिले जरूर हुआ है, लेकिन पंचायत चुनाव हो भी जाते हैं तो आप देखिएगा जो हमारे गांव-गांव में कार्ड तो ज्यादा चार्ज अप रहता है ना, अगर विधानसभा से पहले हो जाए चार्ज अप रहता है, ये बिल्कुल सच बात है। और कार्ड चार्ज अप होने के साथ साथ गांव-गांव में लोगों का रुख भी पता चलता है। लेकिन गांव-गांव में हम दिन रात लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं और हमें पता है कि लोगों का मन तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने का है। तो भले ही विपक्ष को कोई गलतफहमी हो, लेकिन 27 के लिए नतीजे पहले से तय है, इसमें कहीं कोई परिवर्तन, कहीं कोई असर पड़ने वाला नहीं है। चलिए, टाइम अप हो गया है, लेकिन एक छोटा सा रैपिड फायर, बहुत कम मौका मिलेगा मुझे आपके साथ ही रैपिड फायर खेलने के लिए, आइदर और करूंगी। एनडीए या पीडीए, यूपीए का बड़ा नैरेटिव? रैपिड फायर छोड़ देते एक ऑप्शन आप बता दीजिए, या दोनों? नहीं, आप फिर से दोहराइए। यूपी का बड़ा नैरेटिव क्या है, एनडीए या पीडीए? यूपी का नैरेटिव एनडीए है, क्योंकि एनडीए में ही पीडीए समाहित है। एनडीए के लिए बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव या कांग्रेस? एनडीए का कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं। आप देखिएगा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको समझ में आएगा ये एक तरफा चुनाव है। मैंने कहा ना, सारा हो हल्ला आपके चैनल पे हो रहा होगा, जमीन पर कोई हो हल्ला नहीं होगा। जितना हो हल्ला होगा एनडीए के पक्ष में होगा। 2027 का चुनावी फैक्टर, विकास या जाति? विकास और जाति दोनों को साथ लेके हमारा एनडीए चल रहा है। आप जातियों की अनदेखी नहीं कर सकते, हर जाति तक एनडीए का विकास पहुंचा है और हर जाति के साथ जो उसका अधिकार है उसे सुनिश्चित करने का काम ये एनडीए की प्रतिबद्धता है। यूपी का गेम चेंजर, महिलाएं या पिछड़ा वंचित वर्ग?
पिछड़ा, वंचित और महिलाएं सभी हैं वोटर, सबका अपना अपना महत्व है और हमारी सरकार ने चाहे महिला हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, सबकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के काम किया। एक आखिरी सवाल, महिलाओं के लिए ज्यादा जरूरी क्या इस वक्त, आरक्षण या अवसर? महिलाओं को सही मायने में तो आरक्षण के माध्यम से ही अवसर मिलना है, क्योंकि ऐसे तो उन्हें कोई आगे आने देगा नहीं, और इसीलिए हम कहते हैं कि महिला आरक्षण बिल हमको लागू करना है। महिलाओं को मौका दीजिए, उनको राज्यों में आने दीजिए, राज्य के सदन से लेकर देश की संसद तक महिलाएं आएंगी, लोकतंत्र की तस्वीर बदल जाएगी। देखिए, आप खेलना नहीं चाहती थी, वेल प्लेड। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी तैयारियों के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे NDTV इग्नाइट द फ्यूचर इंडिया समिट का हिस्सा बनी। Right. From the grassroots impact of policy, we now pivot back to the master dashboard of the Indian economy. As we look toward the horizon of 2030, India's target isn't just incremental growth, it's about scaling unprecedented multi-trillion-dollar milestones. To understand the exact blueprint for this high-stakes journey, we need to hear from the ultimate custodian of the nation's economic diagnosis. Please welcome on stage someone who is advising the Treasury and mapping out this very fiscal framework, the Chief Economic Advisor to the Government of India, Dr. V. Anantha Nageswaran. He will be in conversation with NDTV's CEO and Editor-in-Chief, Rahul Kanwal. A round of applause, please. When the union budget of this year was presented, right before that, the government spoke of the economy being in a Goldilocks period. Low inflation, high growth. Talk about things going wrong, because 4 weeks after that, the war started, a war which at this moment we seem to have no idea about whether it is ending, has ended, will never end, when will it end, we don't quite know. And therefore, in this massive economic turbulence, navigating the economic ship is amongst the toughest thing one can have to do. What's the diagnosis at this moment? How much of the typhoon has the economy dealt with? How much lies out in the future? And what's the time frame? Do things get worse in days, weeks, months, or do they not get bad at all? To talk about this, I'm joined by the man who's in the unenviable position of having to predict multiple unknowns all at the same time. Can we have a round of applause for Dr. Anant Nageswaran? Thank you very much, sir. Thank you, Rahul. And welcome to NDTV Ignite. Thank you. It's great to have you with us. When people look at the economic situation at this moment, they wonder, is this the worst? Is the worst behind us? Is the worst ahead of us? How far ahead of us is the worst when it comes to the growth trajectory of the Indian economy? So let's kick off from there. Thank you, Rahul. I think in your initial context-setting remarks, you had a very multi-layered statement to make. Why February 1st? In fact, I would even say February 27th evening, together with the Secretary, Ministry of Statistics, we were releasing the new GDP series, and I was saying, look, I'm upgrading my GDP growth projection for FY27 from 6.8 to 7.2 range. I was upgrading it to between 7 and 7.4. It might sound like a trivial change, but I was removing the 6 angle completely. But then next morning, everything changed. So look, we still have large unknowns, especially the El Nino effect on the monsoon, etc. But having said that, I would say now in the last 1 week or so, I'm beginning to breathe a little easier. I can see a glimpse of the possibility of India kind of having seen the worst in terms of potential impact of the ongoing conflict. So I wouldn't have felt this way in April or May, but now I'm beginning to think that with the measures put in place on Friday, the 5th of June, and considering how the oil price has behaved so far and how the fertilizer prices are moving right now, I have a feeling that we may be able to
handle FY27 much better than what we may have feared in April or May. You know, when we spoke after your economic survey, right, I said you were being overly conservative. I now think you're being overly optimistic. Are you trying to talk up spirits? Because you're saying that the worst is behind us. I'm not sure. Try and explain why. And you're saying that we will do well. When so much is going wrong, why do you think we'll do well? No, I think you are right to push me back, Rahul. But I was making a relative statement. I think if I said, I didn't say I am confident of saying, I'm confident of our economy doing better than what I thought on February 27. That's not what I said. I said compared to what I may have feared in April and May, I'm beginning to breathe a little easier. So I was kind of hedging myself still, and you still want to push me back. But I think I still concede the big unknown. No, you'll have to explain this, because you're saying that you're feeling better now than you were in April. So I'll give you Try and explain that, because a lot of the economic writing that's coming out of different think tanks, different banks, economists, they're saying that the actual impact of the turbulence of the past 100 days will be felt in the quarters ahead of us. So what makes you think that the worst is behind us? First of all, let me, there are multiple answers to your point. First, we are going to have a GDP estimate of 7.7 for last year, FY26. And RBI has come up with 6.6, which is a 1.1 percentage point lower than last year, with a downside risk attached to it. I still stand by that. I think that's a fair characterization. And then RBI says 5.1% inflation with an upside risk attached to it. That's also correct. So we are going to see the impact in terms of higher inflation and lower growth compared to last year. It's about the magnitude of the impact. There I am beginning to breathe a little easier, and that reason is, I think oil price has behaved far better than anybody might have anticipated, given this blockade and given the conflict, because A, there is excess supply coming from the strategic petroleum reserve of the US and other countries, and China's demand has been extremely low. China has been buying far less oil than they used to. And then look at the second, besides oil, the second biggest impact on us would have been the fertilizer price, and urea prices today are lower than what they were even before the conflict began. That would have been a huge hole in our fiscal budget, in the cost of cultivation. A lot of things would have had a sort of a chain effect, chain reaction based on that. That is also now seems to be very much under control. And the third reason is, on Friday, the 5th of June, we took some actions on the balance of payments side through bond market withholding tax, capital gains tax exemptions on sovereign bonds, and RBI's FCNRB scheme. And fourthly, I took a very close look at the way our oil import behaved in 22-23 when the Russia-Ukraine war started. That year, our oil import quantity went up by 8 to 9%, and the price also went up, was remaining above 100 for 5 to 6 months, and yet the current account deficit went to only about 2.2% of GDP. Now, if the fertilizer price had not come back all the way below the pre-conflict level, I wouldn't be sounding this much more relaxed than I am. But it is precisely the behavior of the oil price until now, and the urea price decline, and the action we took on June 5th, I think all these things are making me breathe a little easier compared to April. Whether this is true or not, we will know in some time. Of course. But the fact that the economic advisor, who's I've seen clearly very conservative in terms of his forecasting, thinking that the worst is behind us, is a significant point that you're making. Explain what you imagine to be the role of China in stabilizing oil prices and helping urea prices actually come down. Sure. Is this happening because China is trying to play the role of the emergent superpower, or does it reflect deep underlying distress in the Chinese economy, because of which they simply don't have enough urea consumption of their own, which is why they're exporting? No, I think whether they are playing the emergent superpower or not is beyond my pay grade to speculate on. But definitely, I think the domestic economic stagnation that continues in their economy is playing probably a big role in the reduction in their crude oil import. I mean, of course, they did play a stabilizing role in the 97-98 Asian crisis. And then in 2008 global financial crisis as well, they did
play a stabilizing role. So it could very well be possible that they are playing a conscious stabilizing role, which I can't rule out. But that said, I would probably attach greater weight to the possibility that their continued domestic economic stagnation is playing a very big part in bringing their oil price down and also opening up the urea market for export. But be that as it may, regardless of what the underlying cost is, both are helping the Indian economy and our own external situation quite considerably at this point. We've seen about a 7.5 rupee pass-through on petrol and diesel prices from the oil marketing companies to Indian consumers. Dr. Nageshwaran, according to you, how much more of a pass-through is required or likely in the days and weeks ahead? So how much more is required, of course, will depend on the evolution of the oil price going forward. But even now we can say that by raising them by 7.5 rupees, we have covered up to the last year's average price for India was $68.7 per barrel. So these increases have taken us up to, let's say, a price of $85 per barrel. So even now, with the likely evolution of the oil price this year, which is as of now, taking April and May actuals that India actually paid, which is in triple digits, but assuming that the oil prices behave the way the financial markets are discounting now, the full year price may be close to about 88, 89, and we are not too far away from what we have passed through. So what we may need to pass through further may not be that big, provided oil prices conform to what the financial markets are currently discounting. What impact, according to you, has this war had from what you can see? We see the data that's in the public, you're seeing things from more closely on private consumption and potentially on corporate taxation, given that there is a very real concern about companies pulling back on account of contracting demand? Sure. First reaction is, I think it is still early days, given that we only have 1 month of fiscal data for the current financial year to talk about the corporate tax revenue or personal consumption, personal taxation, etc. But having said that, it is encouraging again, one more reason for my relative calmness, so to speak. We have had 2 months of data, March and April, after the conflict began. High frequency indicators have shown that the domestic demand is holding up very well. And that could naturally mean better revenues for the corporates. And you know very well that the fourth quarter of the last financial year, profitability also turned up for the Indian corporates. And then the other good news is that the nominal GDP growth, which we assumed in the budget to be around only 10.1%, is more likely to be 12% this year rather than 10.1, which is 2 percentage points higher. And that also means better revenue compensation than what we may have assumed. So even if the buoyancy were to go down a little because of economic uncertainty, the higher base, the nominal GDP growth, will compensate for a lower buoyancy. So that is why I think we may not have to be unduly pessimistic on the revenue front. Some of the economic forecasts that are coming on the downside are now beginning to talk about whether we could slip potentially even to a 5 point something, 5.9 or whatever. You're still holding out at 6.6. How certain, or with what degree of certainty do you feel that we're likely to be in the upper part of the 6 bracket and not inching towards the lower part of the 6? Below 6 is possible if the conflict continues and if the production shut-in of the oil market continues, and then let's say China's lower import stops at some point, and the United States decides that its strategic petroleum reserve has come down to a level where they have to refill it, etc. And if the oil price starts ruling to the north of 100 in the second half of the Indian financial year, then an outcome of GDP below 6% is possible. But right now, if you ask me, I would say a characterization by the central bank of 6.6 with a downside risk attached to it, which could be somewhere between 20 to 30 basis points on the downside. I think that is more realistic to me as things stand. What impact so far has this war had on the desire of Indian companies to invest? Because you, not just you, the finance minister, the prime minister, everyone in government has been trying to talk up India Inc., asking them, exhorting them to go out and invest more in the Indian economy. Again, given the capacity utilization numbers that we saw, there were some signs that this was beginning to pick up in a realistic way, which could have given us a 5-year virtuous cycle.
given that this war is now upon us and the uncertainty that it creates, are you again fearful that the groundwork that you've done, a brake has been slammed on it? Again, sorry, we can't speculate because we don't have the data. That's one of the important data gaps in this country faces, where we don't get quarterly frequency on how the capital formation in the private sector is happening in the country. But that said, look, if you look at the overall capital formation rate, it's about 32% of GDP in the economy, which compared to many other countries in Asia, it's actually on the high side, given the level of uncertainties in the world. And secondly, the CII keeps sharing bottom-up data on corporate investment, and they say that the listed companies in general are actually beginning to invest a lot more than what they used to do until about FY24 or so. So they are saying that from the second half of FY25, continuing into FY26, listed companies have ramped up their investments. So obviously this war definitely would have made them pause a little bit, but there are compensating factors for us, which is the trade agreement with the UK, trade agreement with the European Union, and the renewed interest in European Union in terms of diversifying from dependence on China, etc. I think there are other compensating factors that are coming into play which might offset the uncertainty caused by the war. Therefore, it is difficult for me to speculate beyond this on what the magnitudes will be because we don't have the data, but there are compensating factors. No, you're speaking of compensating factors. Let me counter argue that these free trade agreements potentially create the prospects of further imports coming into India from these advanced economies with which we are now either signed up or signing free trade agreements without our manufacturing being competitive enough at this moment. So it could actually work in converse as well, because one of the experts who came to Ignite in the morning, the argument that he was making was that a free trade agreement at a time of relative calm and of growth is one thing. Given that these agreements are being signed at this moment, when there is uncertainty, all the products from countries like New Zealand, Canada, elsewhere, United States, once that deal concludes, could start coming into the Indian markets, creating further trouble for Indian corporates. No. If there are going to be imports coming from a region with whom we have signed a free trade agreement, obviously those imports are coming in from there in lieu of where else they might have come from. And that would mean that we are getting them at a lower price, only then our businesses would substitute for them. That still means lower landed cost. So even if those imports pick up from those regions, I am sure it is because in lieu of some other source. And therefore, I wouldn't consider that as a negative, I would consider as a positive. If you are importing equipment from country A, and now country B is your free trade agreement partner, and the duties have dropped to zero, and therefore it has become more competitive, then please tell me that my input costs have gone up. Unfortunately, no. No, what about products coming in for the use of consumers, which potentially may have been buying from Indian companies, then buying from companies from where now you have an FTA? Most of our imports are mainly infrastructure and intermediate goods. So you have to get into the weeds of the imports to be able to make such definitive statements. And secondly, both UK and the EU agreement are giving us a lot of opportunity in terms of labor-intensive manufacturing and services opening up those markets which were closed earlier. And to that extent, those businesses, especially the medium enterprises ones, now have an incentive to ramp up their investment to be able to meet the norms set by those countries. So I think on balance, our imported goods will become less costlier if we are sourcing it from a free FTA agreement country, and the market opening that we have got for labor-intensive goods and services will be incrementally positive. I think it is somewhat, in my opinion, somewhat of stretch of an argument to say that this could be actually negative. You spoke of data which we don't get. Let's speak for a moment for data that we do get. And I want to take unemployment numbers. The headline numbers from the PLFS says that, the periodic labor force says that headline unemployment is 3.2%. When people look at that and just anecdotally and they look around, India having an unemployment headline number of 3.2 just intuitively and instinctively feels to be an underassessment. So I think people have to separate both involuntary and voluntary unemployment, because what the unemployment rate measures, there is a usual status, there is a weekly status. So it depends on the kind of questions people ask. And second, if you are been looking for work and if you are willing to take up whatever work that is offered to you,
and yet you are not employed, then you are counting as unemployed. So it depends on the way the people are choosing to remain unemployed. If there is a lot of involuntary unemployment, then you may see that a lot of people are unemployed, but you don't know whether they are voluntary or involuntary. Okay, involuntary ones will count. But if you are voluntarily unemployed, it won't count. So you may on the streets, if you encounter some 20 people who could have been employed but are not, you have to find out which one is voluntary, which one is involuntary. That is why your anecdotal evidence and what statistical evidence presents you may appear somewhat disconnected. And secondly, I think we are not doing as good a job as we can yet, and it is a question of data improvement. We are not measuring the gig economy work as well as we do. I think a lot of people are taking, not being part of a formal workforce, but still having 2 or 3 jobs because they feel the flexibility suits them. I think we are not doing as good a job of measuring them, etc. And at the end of the day, it is still true that notwithstanding all these question marks in people's heads about employment, household incomes have been growing much better than what people have been expecting, given this kind of anecdotal perception on employment. So I think on balance, given the kind of uncertainties that is there in the world, I think the employment picture as revealed by the PLFS is an accurate one. One of the government's big promises has been that India will become a Viksit Bharat by 2047. Now this fundamentally requires growth to be above 8% for 2 decades and more for us to be able to achieve it. Now we've seen for 2 years growth being less than 8%, and this year somewhere around 6.6%, maybe lower. Does this war just make that much tougher the already very difficult task of India becoming a developed country by 2047? And does it exacerbate the risk of India getting caught in a middle income trap? Look, obviously every year where the growth rate doesn't meet a particular level that you think is required. First of all, I don't think it's necessarily true that you need to grow at 8% in real terms in Indian rupees over the next 25 years for you to get to the Viksit Bharat status. What are your calculations? So in fact, a growth rate of between 6.5% and 7% in real terms in Indian rupee, and that too it cannot continue until 2047, because by definition, as the base becomes larger and larger, the growth rate will taper off. So up to 2035, if you are able to grow on average between 6.5 and 7, and after that if it tapers, ultimately in dollar terms, you also have to take into account the inflation rate that will prevail in the United States. That is what, so basically the way you calculate your dollar GDP is, growth rate in dollar GDP is Indian real growth rate plus the United States inflation rate will give you the Indian GDP in dollar terms. Now, many developed countries are suffering from high public debt, and therefore there is a possibility of inflation tolerance in those countries in the coming years in order to bring down the debt. That is how they brought down their debt, among other things, after the end of World War. 6.5 to 7 for a decade, and then tapers off to below 6, and then tapers off further in 2040s to around 5.5%. If the US inflation rate is averaging between 3 and 4%, then your ability to achieve the figure of between 25 and 30 trillion dollar of GDP is possible. And philosophically, I will also add that at the end of the day, we have to keep doing whatever is in our control in order to get that goal. But exogenous factors can always either aid you or hamper you. That's not in your control. Do you feel sometimes unlucky? Because there are 2 things this government did. One is when corporate taxes were reduced, soon after COVID happened. Now you rationalize GST in a big way. Again, the government implementing the policy maneuver that it could, and soon after the war happens, just when you expect a takeoff. That's a very good question, Rahul. I think in general, we should not rule out the role of luck in outcomes. And I think it's usually human nature is to attribute it to oneself if it succeeds and attribute it to bad luck if it doesn't. So I think, but beyond a point, that's also exogenous. You have to take it as it comes. But we have to keep plugging away. And I'm sure one day the luck also will turn. For example, from 2014-15 onwards, when the government came to office, initially there were deficient monsoons, but then we also enjoyed a very sharp decline in the energy price, in the global crude oil price. So as the government was dealing with the aftermath of the banking NPA crisis and deficient monsoons and trying to fix the fiscal deficit, which was high when they inherited it, the decline in energy prices helped. So that is a good fortune. So similarly, I'm sure... while we've had a run of good monsoons for a few years, we now potentially face
a super El Nino. Right. How worried are you? Does that keep you awake at night? And explain to those watching at this moment the impact you think a super El Nino could have on agriculture production and on the larger economy. No, I mean, when I said I was relatively slightly breathing easier compared to April, May, but still there are two big unknowns. I said one is the energy price going forward, and second is the effect of El Nino becoming a super El Nino. I think the Kharif crop should do well, especially the cereals, pulses and oil seeds. I don't know enough. They may have an impact. But more than the Kharif crop, the real impact could be in the next Rabi crop, because the super El Nino will probably be felt towards the latter half of the calendar year. It may not be felt during the current monsoon season, but yes, to the extent... How is the government preparing for that scenario? I think the government is obviously assessing the reservoir levels, the stock levels of fertilizers, and how much is sowing happening, and whether there is enough. So, like in the previous such situations, it is the management of inventory, management of export and import, ensuring adequate quantities, and domestic inflation not rising, etc., apart from ensuring water resources. And luckily for us, the reservoir levels are we prepared, Dr. Nageshwaran, to deal with the super El Nino, according to you? I don't have the information to say whether we are prepared or not, but I can say reservoir levels are 23% higher than what they were last year. And the sowing by the farmers who are aware of the projections by the IMD, both in April and May, the sowings have been much healthier than last year. So the farmers seem to be assessing that given the stock of fertilizers and given the stock of, given the reservoir levels, they feel that they can handle the impact of the super El Nino on the Kharif crop output. That much confidence we can say. Let's spend a moment on the dollar and where things stand versus the rupee. We've dealt with the politics of it. Different people have come and they've spoken of how weak a government this is, the dollar could be headed to 100 rupees. From an economic lens, how much of forex should the RBI burn to try and protect the level of the dollar versus the rupee, just so that politically it doesn't fall under 100 rupees? I think the central bank Central bank may have expended reserves in moderating the volatility of the currency in the past 2 years, but with the action taken on Friday, both with respect to the bonds and with respect to the inflow of dollars, I don't think the RBI will be required to burn dollars to defend or manage the currency volatility going forward. Foreign investment in India is at a 14-year low, foreign portfolio investment in India. You've made some changes to long-term capital gains on sovereign bonds. What's your view on doing the same to the stock markets? Because on equities, so many of the investors we speak to in Hong Kong, New York, elsewhere, say they just don't find India attractive enough. Look, I mean, India's markets gave 4x appreciation between 2020 and 24. I think part of these conversations are because of the last 1.5 years, the market not going anywhere. So therefore, in order to boost their after-tax return, now either if the returns are not there, then they want the government to tinker with the tax framework. On the sovereign bonds, compared to many other nations of comparable nature and competing with us for capital, on the bond side, we were a bit of an outlier. But I don't think we are an outlier with respect to equities. So you are not advocating for a change in taxation on securities or a change in taxation on long-term capital gains for foreign investors? So that is not for me to say, but at a personal level, I don't... आप जो बोलते हो बाद में होता है. You know, you, for example, at a time when speaking in favor of investment from China wasn't fashionable in policy circles, you advocated it. So it doesn't, you can't just get away by saying मेरे बोलने से कुछ नहीं होता. That's not necessarily true. No, I was going to tell you my answer. I said I'm not the one to decide. Yes. But personally, I feel the case for any change in the capital gains taxation framework for equities is that much weaker compared to the case was there for the bonds. Then why, according to you, are foreign portfolio investors not look? Because that's what I'm even saying. after The case is recent weaker. correction of more than 10,000 rupees from the December highs, price earning multiples are still 21. So from their lens, when they look at different portfolios to invest in, India still looks expensive. See, I think if you look at it philosophically, you know,
between taxing capital and taxing labor, when there is so much happening with respect to AI, and even if there are productivity gains from AI, and those are more likely to accrue to owners of capital, etc., the continued clamor for somehow providing tax relief to capital, and when the balance between capital and labor is still not balanced, I think we have to be a little bit more critical and questioning of the demand for more tax relief for capital owners. One of the reasons the government was able to spend on public infrastructure in the way that it did over the past decade was because crude oil prices were low. You were able to use the taxation that you had to create a corpus to go out and spend on capex. Now that you've had to cut excise duties, how likely is the government to go out and fulfill its commitment on capital expenditure in this budget? Or do you think by the end of the year we'll find that the government, in an attempt to try and meet its fiscal obligations to the extent it could, start cutting back on public spending? Again, as I said earlier, I think we still have only 1 month of data and 11 more months of data to come. And I think it is difficult for us to speculate on the various ways in which the government will be able to meet its capital expenditure target and yet keep the fiscal deficit from slipping away from the target. I'm sure there are ways, and we have faced similar situations in the past. So I don't think we should judge right now that capital expenditure will be a casualty of the current situation. No, but it depends on how you define priorities. What is more important? Going out and spending on capacity expansion, is that more important, or trying to show that you're still being fiscally conservative given the circumstances, that's more important? It is a balancing act. All you can say is the balancing act has become that much more challenging. That much I would concede. But beyond that, it is premature or not necessarily appropriate to speculate on the kind of balancing act that we will be required to perform. What's your outlook on inflation from here on? We're seeming to head towards the upper hinge of the threshold which is deemed acceptable, and things could potentially get a lot worse. I told you at the beginning, RBI's projection of 5.1 with an upside risk attached to it seems to be a fair assessment at this point. And mind you, we were in 25-26 averaging less than 2%. So it is already factoring in a huge sharp increase when they project 5.1. And they also say that the risk is more towards the upside rather than downside to this number. I think that's a fair characterization. No, but the impact this can have is potentially create societal distress. You've got a situation where salaries are not rising because of artificial intelligence. Many people are being laid off. You've spoken against that companies need to be careful, but companies, frankly, in a bid to protect their bottom line, are doing what they need to. And therefore, as an economist, how concerned are you about this cocktail of multiple factors operating at the same time, creating conditions ripe for societal distress? So salaries, I understand that based on the quarterly earnings reports, I understand that salaries in general have grown at double digits in 25-26. So that is not the real issue. The real issue, what you mentioned about AI, is about entry-level jobs. That's a different discussion, and that is something which we need to address regardless of the West Asia conflict or not. No, but how can it be addressed? Given that technology is moving in the way that it is, correct. What can government and people in policy-making positions do to even try and address it? Because companies will do what they need to for their own survival. Absolutely. I think the important thing is, yes, governments and the industry, both of them have an obligation to play, and as well as the youngsters themselves. All three of them have to figure out how do you basically create jobs in the AI-dominated world, is to create more AI-insulated skills and AI-insulated jobs, and that is where the free trade agreements with labor-intensive services and manufacturing come into play. If you look at the budget, we created a huge incentive for the care economy to take off, whether it is allied health professionals, tourism sector, and caregivers and culinary skills. All these areas are the ones where AI will not make an impact, at least for the next few years. And therefore, it is important for us, both union government level and states and the industry, to continue to make the AI-insulated skill areas a priority. And that is the way. Of course, a problem of a technological change is not handled in 1 quarter or 2 quarters. We have to make the effort. There's a lot of argument around whether India has missed the AI bus. Where do you come out on this argument? So suppose you look at whether India missed the internet bus. You could have asked the question in 2000, where India didn't have a Cisco or a Intel or any of those broadband cable companies or any of them. But now today, considering the way we have harnessed internet for digital public infrastructure, for payment system, etc., you wouldn't say that India missed the internet bus. So
I think the precedence is quite encouraging for us. We may not be in the hyperscaler. In fact, I would even say there is a second mover advantage given that we are not frittering away huge capital resources on trying to emulate the hyperscalers. I have many more questions, but I know you have a hard stop. Yeah. So we'll pause here. Asking those questions was the easy part. Trying to answer them in the economic volatility that the world faces is the far tougher part. For taking out time and joining us, thank you very much. It's interesting to see how you've pivoted from being conservative and telling people to be, just not get carried away in February, to now trying to talk up spirits as we reach June. It'll be interesting to see whether it's the conservative avatar or the optimistic avatar of Anand Nageshwaran that comes out on top at the end of the fiscal year. No, at the end of the day, I am data driven. So the data are giving me some hope and glimmer of encouragement, and I shared it with you. Thank you so much for taking out time and joining us, Professor. Thank you very much. Thank you so much to the Chief Economic Advisor, Dr. V. Anantha Nageshwaran and Rahul Kanwal for that fascinating conversation. Ladies and gentlemen, we've covered some incredible distance this afternoon, from the grassroots stories of the People's Padma to the macro realities of a multi-trillion-dollar trajectory. Before we step into our high-powered session for the evening, we're going to take a very short and quick tea break. But the tea is being served to the right of the hall, but please do come right back in 20 minutes, because we have a sporting superstar, a legend, a hero waiting to meet you all and perhaps even take photographs with you. He's won an Olympic medal, he's a Khel Ratna awardee, and he has many, I'll give you a hint, Grand Slam titles to his name. So please don't go anywhere. Do join us for tea. Paramount, India's only wire with 20-year warranty. Since 1955, delivering reliable cabling solutions. Paramount, आपके भरोसे की वाया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सेवा, सुशासन और विकास को
Please request you all to take your seats. Our final session for this evening is going to start in a short while. Ladies and gentlemen who may be in the tea break area, could I please request you all to come in and take your seats, because the evening session is going to start in a short while, and trust me, this is one conversation you do not want to miss. If any of our esteemed audience members are outside and they can hear me, I'm not shouting loud enough, but if you can hear me, please do come inside. Take your seats so that we can start the evening session. We've got a cracker of a guest lined up for you. A Grand Slam champion, an Olympic medalist, a Khel Ratna awardee. It's not every day that you get to meet one of those, and possibly even get a photo taken with him. Vijay.
Olympic medalist, Davis Cup winner, Grand Slam title winner, Khel Ratna awardee, and so much more. Welcome, Leander. Do take a seat here in the audience. Okay, we now shift our focus for this evening session to a different kind of national excellence. Throughout the day, we've spoken about nation building through the lens of policy, politics, economics, but a nation's soft power, its global pride, and its collective inspiration are heavily, heavily anchored in its sporting icons. And it gives me great pleasure to introduce this one. When we look at India's modern sporting DNA, the blueprint of self-belief on the world stage was truly drawn by one man. From winning an individual Olympic medal 44 years after K.D. Jadhav did in 1952 to Grand Slam titles, Davis Cup ties, he has shown an entire generation how to win. But today, his mission has evolved from winning titles on the center court to education, employment, and empowerment at the grassroots. To talk about this inspiring transition, please welcome on stage an absolute legend of Indian sport, a Grand Slam champion, Olympic medalist, International Tennis Hall of Famer, and the founder of Flying Man Ventures, Leander Paes. And he will be in conversation with my colleague, Vishnu Shom. Leander, come. Well, good evening, everybody. It's always special to speak to Leander Paes. I must begin on a personal note. This man is a super inspiration for me. He has defined tenacity, courage, the ability of Indians to do brilliantly in international sport. 18 Grand Slams, a bronze medal in the Olympics, an International Hall of Famer. And just when you thought that Leander should sit quietly and retire and, he's done enough for one lifetime, he decides to be a politician. So, Leander, why did you get into politics? Good afternoon, Vishnu. It's such an honor to be here at NDTV Ignite. And firstly, thank you to everyone. I know that sometimes aviation takes a little time to get here, but I really appreciate you. Passion, the Tiranga, 1.5 billion people. That's always moved me. You've known my career for long. I live with the flag in my heart. I live with the Tiranga in my veins. And yes, after winning those Grand Slams, after playing 7 Olympics for the country, putting India on the global map for sport, I could have very easily have rested. But my late father, who passed away 8 months ago, left me with 2 visions. One, empower 500 million children in India through sports. That's not just playing sport, but that is also the curriculum of sport. Not everyone can be an MS Dhoni or a Virat Kohli or a Roger Federer or so on and so forth. And I mean, in India, you are very much an icon at that level. Why did you feel that you needed to be in politics to achieve that goal of inspiring millions of young people into sport? I feel that to do great governance, you got to go through politics. In that, I'm highly inspired by our Prime Minister Narendra Modi ji. I've always built teams. I've had 186 doubles partners and 26 mixed doubles partners. Teams are what I thrive on. And when I look at Indian politics, the double engine of a state government that is aligned with a national government is how states thrive. For me, sport is a state issue. It's not yet a national issue. Every single state governs its own sporting curriculum. So the physical education classes that we look at are very archaic. My job is to take sports science, take sports training, biomechanics, mental health, physical health, emotional health, to each child out there in the country, firstly through states, then in through villages, and go out and scout the talent, and then bring that talent into training academies to make a healthier, better India. Am I talking to a future sports minister of India? That is not for me to say. I've always earned my stripes. Am I talking to a future MLA or MP? Not for me to say. I play to a captain, and I will follow my captain. I believe tremendously in him.
And the way that Modi ji has supported the Olympic movement, the way he has supported Khelo India, to go out into rural India and select talent to bring them in. So Baba had 60 years of sports science knowledge on human genetics, bone density, muscle density, on how you can scout talent in a very scientific way. We use Western technology, but Eastern philosophy on how we can check if a child is left-handed, they should play an apparatus sport. Why? Because human biomechanics tell us that the left wrist is 0.3 millimeters longer than the right wrist. So any person who's left-handed has a distinct biomechanical advantage of more range of movement. Is that why Ivanisevic had that crazy serve? 100%. The guy who you beat in Davis Cup, right? John McEnroe, Ivanisevic, Martina Navratilova, Brian Lara, Clive Lloyd, the list goes on. Lefties have a distinct advantage with their wrists, 0.3 millimeters longer than the right. I'm going to talk about sport extensively, but let's talk a little bit more about politics. West Bengal has seen an incredible change. The BJP coming into power, many felt that Mamata Banerjee's bastion could never be sort of defeated or taken down, but it has. I do know that in the past, somebody like a Saurav Ganguly was approached not just by the BJP, but by the Trinamool Congress as well at many levels. Were you approached by the Trinamool to be a part politically at any stage? Yes, I've been approached for 20 years to be a part of the Trinamool. I never ever stood for the Trinamool, but at the same time, I wanted to learn whether the public would take to me or whether I was fit for this job. So in Goa, about 6 years ago, I went in and I studied the business of politics. I went to every individual home that I could get to, markets, public places, met with the people, went into grassroots of India to really see how the people received me. I believe just because I'm a professional tennis player and a Grand Slam champion doesn't make me fit for every job. I earn my stripes. I want to earn my stripes just as I did with tennis, so as in politics, so as in governance, so as in developing sport in the country. So I said no for 20 years. And it's not just the Trinamool who approached. It was the Congress as well. It was other different parties as well. But I think it's not just ideology, it's leadership. I'm a doubles player. I build teams. I have not seen a better doubles team than Narendra Modi ji and Amit Shah ji. These two gentlemen share a special connect, a special trust, a special bond. And India today is in the top 5 economies in the world because of our leadership. And I really believe that a team develops success. Leander, what would you do in Bengal beyond sport? There is a lot, there's so much. For example, industrial development has been an area of concern. There have been constant issues, for example, with whether GST revenues are achieving enough. Perhaps now they'll achieve more than they have in the past. Beyond sport, what would you do for the common person in Bengal? Wish we'd need a weekend. To start with law and order, to keep our women, our children safe. That's top priority? Number one priority is law and order. Without law and order, we're leading a jungly state. What was happening in West Bengal before was utter debauchery. When you look at today, the sentiment in Bengal has shifted. Young women are out in the streets, walking around, going to cafes, going to restaurants, in groups, going to enjoy themselves freely with confidence that they could wear a skirt or a pair of clothes that they choose, not be told that they should not step out after 8 p.m. But in Bengal, in Kolkata, it's always been more safe for women. Is that something that's changed over a period of time? Yes, I don't want to state specific situations. We're all very aware of them. But Bengal used to be one of the greatest states in the country, industry-wise, safety-wise, tourism-wise, sporting-wise. We got one of the best sporting cultures, whether it's football or whether it's tennis or whether it's cricket at Eden Gardens or Mohun Bagan, East Bengal, or whether it's the number of champions we've produced in tennis with Jaideep Mukherjee, Premjit Lal, Naresh Kumar, Zishan Ali, Leander Paes, the list goes on.
But what was happening in West Bengal was that we were getting so far left behind. Now what has changed is that people are believing that Bengal is going to rise again. How? To answer your question. First is law and order. Second is education. Third is to encourage that if you come and invest in West Bengal, whether it's the real estate, whether it's business, whether it's a young woman who's just finished college and trying to come to Bombay or Delhi or Bangalore or Hyderabad to make her business, she can also do it in West Bengal. That confidence has to be brought back. That you get a return for your investment. Not just investment in money, Vish, but also in time, in effort, in building India. Viksit Bharat is something that has to thrive in Bengal too. So hence industry. We got to bring in the Tatas back again. We got to bring in the Mahindras back again. We got to bring in the Bengali businessmen who left West Bengal. And I could talk about whether it's the Marwari businessmen or the Bengali businessmen or any community. It's not communal, which is what we've seen in Bengal over the last 50 years. It started becoming a communal state rather than an Indian state that could thrive. Yeah. No, and to your point about safety of women, it is important because so much changed when RG Kaur was reported and that horrific incident which took place, and that's not the only one. But let's talk a little bit about sport as well. For starters, Indian tennis has never quite been what it was since you and Mahesh, retired. It's been a while now. Is that a big problem, a concern? It was a massive problem, Vish. It remains so. Until about 4 weeks ago, the All India Tennis Association was sitting in the Supreme Court because 2 athletes challenged All India Tennis Association on the governance of it. Now for me, in a country that has an sporting governance like the BCCI, other sports need to learn from the BCCI, need to learn how one sport can become an entire movement to move the nation. And this is where Modi ji is a huge difference. Before his governance, sport was a competition. Sport was representation. Chalo Olympics jaake khelte hum. Today, Olympics is how many medals are we going to bring back? One of my favorite sporting sports ministers was Kiran Rijiju. Right. And Kiran sir was given that mandate and that power to build the top scheme, to empower the top Olympic athletes. Khelo India was to go and build the grassroots for sport. So when you look under Modi ji's governance, India has won 7 Olympics at the Olympic medals in Tokyo. Now let's go further beyond that. The passion for the athletes. Modi ji meets and inspires every team of India that goes out to represent India in the sporting field. There were some athletes, no names taken, who had knee injuries. They were looked after, taken care of. Their medicals, their surgeries, their rehab was taken care of by the top scheme. During the COVID pandemic, one of our great athletes needed a COVID vaccination. He was given a COVID vaccination in a corridor of an airport, also looked after by the sports ministry and Kiran Rijiju then. There was one athlete who had a rotator cuff injury. She could not partake at the best of her ability unless she got solid treatment. Personally taken care of, she came on and performed excellently well. But just to push on the point of Indian tennis, just growing up, for me it was always Vijay Amritraj and then Anand Amritraj when they played doubles. It was Ramesh Krishnan, there was Leander Pace, there was Zishan, and then of course down the road there was Sania also who did brilliantly for India. But it's stopped right now. In the past when you all played, finances were a huge, huge problem. It still is, but perhaps not to the same extent. There are advertisers who are aware now, but where is the talent? The talent is out there. We need good governance to recognize the talent, bring it to state academies bring it to the national academies, and then develop them into world champions and Wimbledon champions. Why isn't that happening? Let's not forget that today, India holds the world record in tennis of 7 consecutive Olympics. That's the world record. Today, India holds 50 Grand Slam titles. That's a massive number. In that, in tennis... Which you got 18, right? In that, India also has the distinct honor of saying we were #1 in the world in the field of doubles in tennis.
Wimbledon champions, French Open champions. So to answer your question, give me 18 months. And what would you do in that period? In that, the first step, and thanks to our sports ministry, thanks to good governance, the All India Tennis Association is back out of the Supreme Court. Now we are building. So today I sit as the president of the Bengal Tennis Association. I've built a roadmap to hence bring a professionalism into tennis. A professionalism where you let the lawyers do the legal, the finance guys build the model, the tax guys do the taxes, audit every single state association, audit every national governing body. But in there, in tennis, is to also bring international quality coaching systems. So Baba and my ability to do genetic testing, bone testing, muscle density, you can then use sports science to get into the rural areas, use the Khelo India movement, go state by state recognizing talent, and then empower the state association where their state association tennis academy gets funded, where these young talent in rural areas come to the state association to play. When you were growing up, I think 16, 17, you gained immensely from the Britannia Amrit Raj Trust. You used to slog hours and hours and hours in the sun of what was then Madras. Do we have that sort of system still in the country? Where you've got institutes in India which actually can potentially groom the talent to have another Leander Pace sooner than later? 100%. You see, Vish, your intelligence and your knowledge is beautiful. Today, a lot of kids are sitting on their smart gadgets inside AC rooms and chilling. That's the new word. We need to get Gen Z excited about playing sport. We need to get into their bedrooms that are generally locked, where their parents don't even have access in unless they knock. In the parents' house. The connect between the Gen Z and the parents is where I feel the void is. When we use an ability to educate the parents, to inspire the kids, to make tennis cool again, to make tennis really fun again. The shoes, the clothes, the rackets, the headbands, the guys like McEnroes and the Bogues and the Beckers and the Agassiz. You fought with McEnroe in that match, right? It was, you were playing for Washington, weren't you? I don't like someone going after India. You had a solid fight with him on that, but you keep talking about him. What's your personal equation with him now? Sorted? It's wonderful. I have so much respect for John McEnroe. He's one of the greatest athletes of all time. He's a typical New Yorker. And when New Yorkers push you around, you got to push back. Would I be wrong if I said that your touch game at the net was actually as good, if not better than his? You would never get me to agree to that. I have too much respect for the athletes out there. I think to build India, we need to take examples like this, who are characters who, when they walk into their community, they're recognized for their craft. When they walk into a classroom, they're recognized for who they are. लोग पूछते थे, जब मैं छोटा था, लोग पूछते थे औकात क्या है तेरा? आप कह रहे कि विंबलडन जीतेंगे. In North India, they say औकात क्या है on a daily basis. But go ahead, yeah. I'm having to earn my stripes now in politics too. But in that, it's important to empower the youth. We have 745 million approximate kids under the age of 26. For me, Baba's vision of 500 million over the next 20 years is a very simple target through sport. So today I have the Flying Man Academies. I just come from there. I have an Olympic Academy in Odisha. It's with the Kalinga Institute. On a day-to-day level, Vish, I've got 100,000 children, 1 lakh children living under the roof, eating, sleeping, educating, and playing sport. So 16 Olympic sports over the last 12 years. 1 lakh children are looked after by 20,000 staff. Over the last 12 years at the Kalinga Institute with Dr. Achyutya Samanta, we've developed 24 Olympic athletes, 17 Paralympic athletes, and 2.4 million students who've graduated from there. Now the task is to multiply that. India is such a large geographical landmass. So the way that I envision it is north, south, east, west, central. We need 5 Olympic academies in the country that where the elite athletes go through. Now that is top scheme, that is Olympics, that is Asian Games, that is World Championships.
But where it starts, Vish, is actually at the grassroots. It's about going into rural India. It's about taking the Khelo India movement and the Fit India movement. Again, under our leader Narendra Modi ji's guidance, yoga's become fashionable. Breathing techniques, ujjayi breath, yoga techniques, all these. Was that a part of your routine as well? 100%. In sport, yoga? From a young age? From the age of 11, I learned ujjayi breath. Ujjayi breath is 3 different styles. Right now, while I'm talking to you, someone in front of a camera, in front of an audience with a mic that's echoing, you got to slow your pulse down. So right now I'm breathing a slow breath. In through my nose, out through my mouth, just nice and easy. 2, because we have a great rapport and we have so much love and respect for each other, I'm excited with you. Because now we're talking about how Viksit Bharat can grow through sport. How can Leander use his broad shoulders to help India grow? I feel there is a direct correlation between the countries that perform the best at the Olympics, that their GDPs and their global standing is equivalent. Leander, we're running short on time, but I'm going to ask you a couple of things which because your tennis and your career, it's just something else. Thank you. It broke my heart and certainly the hearts of a lot of your fans when you and Mahesh broke up on the tennis court. It was just awful. I'll say that to you as a friend. Are you guys friends now? Yes, we are. We've always been friends. But has there been is it an edgy sort of equation or I mean? Because Mahesh is not in the room. I am the older partner by a couple weeks. In that, if I had the wisdom back then to sit back and control the team, to not let outsiders come in, I think everything would have been fine. Not many people believed that we were going to be number 1 in the world when we said we would. No one believed me, not even Mahesh, when I said, shall we go win Wimbledon together? He laughed at me. I said, give me 10 years. 10 years, 10,000 hours, 3 million perfect repetitions, we will win Wimbledon. And we did in 1999. So in that, I felt if I had the wisdom back then to play the leader better, I think the team would have been the greatest of all time. Leander, you've had some, just a few, I should say, but incredible wins against top singles players, throughout your career. What is the most memorable one? For me, looking back at Leander, I think it was the match against Ivanisevic, which I found was incredible. But you've beaten Sampras as well, right? 4 times. I've never lost to Sampras. That's incredible. Is that something that is a bit of a regret? When you started out, you were just this extraordinary talent, not just doubles, but singles as well, that somehow your singles game didn't quite end up being where you would have wanted or we would have wanted. I gave up my singles to prove to India we could be Grand Slam champions. To me, that mattered most. For me, the Tiranga always comes before self. When we look at our Fojis, we look at our forces, we rest our heads peacefully on our pillows because they are out there putting their lives on the line for us. I think as a national athlete or as a patriot or as a nationalist for the country, country comes before self. I have 2 parents who played for India. Mum's jersey was number 5, captaining Indian basketball. Dad's jersey was number 10 in the field hockey in the center half. Today I don't have parents, but I have a country. I have people. And that bronze medal meant I have a means leader. The world for you, right? It's that Tiranga which means the world for you. That Olympic, he's got tears in his eyes. When he talks about India, he's always had his nation on his heart sleeve. Always. That's Leander Pace. He does, it happens all the time. But it's important that I should ask you this. People would say, and there are many stars in tennis who have said, no, Grand Slam first, Olympic we'll see later on. For you, it was the flag first, right? That bronze medal means a lot. Yes. To answer the first question, the bronze medal is pride of place at home. My Baba's bronze medal and my bronze medal sit right next to each other. So we're the only father-son combination who've got 2 Olympic medals sitting right next to each other. 1972 Munich Olympics inspired me. I was conceived during the 4 days of the Israeli fiasco in Munich. So I was an Olympic baby. I was born for a reason in the world to prove
that India could be champions in an individual sport, especially in a sport like tennis, where we're never known for winning Grand Slams. We were never known for winning Olympic medals. So now my job is to make sure we bring the Olympics to India. Under our leadership, it would be my greatest honor, my pride of place, even more than my own Olympics, to see Indian boys and girls win an Olympic medal on Indian soil. That is my passion now. Under the leadership of Shri Narendra Modi ji and under the leadership of our BJP team, to make sure that the Olympics comes to Bharat. Are you a cricket fan? I know I shouldn't be asking a tennis player this question because they're like, you guys just keep focusing on cricket. But I have to ask you because there's this thing called IPL now. And I've grown up loving test cricket more than anything else. But it's a new India. There's a new interest level in IPL. It's changing the nature of Indian sport and cricket. Are you a fan of T20 cricket? You were very specific with your question. I wish you not came to that last T20 side. I'm a big fan of Test cricket. I love that. But you also got to admire the governance of cricket. You also got to admire the IPL for being the best sporting league on the planet. Yes. You got to admire the way that it's linked Ranji Trophy cricketers and cricketers who would have never been known, if not for the IPL, to then get into the national squad. I think the IPL is actually responsible for the depth of cricket in our country. Today, India could probably field 3 World Cup teams. Easily. And probably 2 of the 3 would probably be in the finals. A final question to you. It is on tennis. You've got Alcaraz and you've got Sinner now. There's that baseline game which dominates. I was just going through old videos on YouTube, watching you and your style of serve and volley. Edberg, one of my heroes, and the art of the net game and the pace of the game in the 90s, and then things were slowed down with the balls, and it just seems that the tennis of the 90s, which we have forgotten about, was so much more exciting. That's my view. This competitiveness between Sinner and Alcaraz, between Sabalenka and Swiatek and Goff and the rest, now Serena coming back. Yeah. I think every generation has an evolution, and I'm very interested to see the next 5 years of tennis, especially the next 5 years of tennis in India. And I won't be surprised if India then has, in 5 years from now, a representative in the Olympics that can do well. Well, that's a wonderful way of ending this conversation. 5 years from now, an Indian in the Olympics, tennis at the highest standard, and hopefully winning Grand Slams like Leander. But, Leander, you are such an inspiration to young people in this country. And I think your larger mission for sports and your ambition as a politician, and perhaps sports through politics, is noble. And we all over here wish you the very best of luck. Thank you. Thank you so much, Vish. Thanks. What did I say about self-belief, ladies and gentlemen, at the start of this? Leander Paes, 18-time Grand Slam champion, Davis Cup winner, world #1, Khel Ratna awardee, and so much more. Ladies and gentlemen, with that, we have officially reached the end of an incredibly rewarding and high-powered day. An event of this scale is never a solo effort, so I want to take a moment to express our deepest gratitude to all our phenomenal speakers, our brilliant moderators, and our partners who have made this summit possible. NDTV Ignite, the Future India Summit, is co-presented by FDC Electrol, co-powered by JK Tyre, Paramount Wires and Cables, Swasthi India and CoinSwitch. State partners, Government of Haryana, Government of Madhya Pradesh and Government of Uttarakhand. Associate partner, Gujarat Mineral Development Corporation Limited. Impact partners, Adani Green Energy Limited and Adani Ports and Logistics. Special partners, Jaipur International Airport and Guwahati International Airport. और सबसे बड़ा शुक्रिया आप सभी दर्शकों का. Thank you to our wonderful audience, both in the hall and those who are watching us at home. आपकी मौजूदगी और आपके विचारों ने इस मंच
के विमर्श को और भी समृद्ध बनाया है. Thank you so much. Have a wonderful evening ahead. Thank you. Oh.